सब्सक्राइबर्स के लिए 4 चांद लगाए गेमबोजो में आज दूर है दिल में प्रोफेसर सौमिक है सुपर गेमर एपेक्स लेजेंड्स सीओडी मोबाइल GTA 5 को जाने वो है गेमिंग के दुनिया का प्रोफेसर किली में आज तक ना देखे जान तेरे तहा गेम प्रोफेसर सौमिक के सुपरस्टार एपेक्स लेजेंड्स सीडी मोबाइल GTA 5 को जाने वो है गेमिंग के दुनिया का जादूगर गेमबोजो में अपने स्टाइल से दबा के गेम पर पट्टी इंडियन इंस्ट्रूमेंटल्स का मिक्स सब्सक्राइबर्स के लिए 4 चांद लगाए गेमबोजो में आज दूर है दिल में प्रोफेसर सौमिक है सुपर गेमर एपेक्स लेजेंड्स सीओडी मोबाइल GTA 5 को जाने वो है गेमिंग के दुनिया का प्रोफेसर किली में आज तक ना देखे जान तेरे तहा गेम प्रोफेसर सौमिक के सुपरस्टार एपेक्स लेजेंड्स सीडी मोबाइल GTA 5 को जाने वो है गेमिंग के दुनिया का जादूगर गेमबोजो में अपने स्टाइल से दबा के गेम पर पट्टी इंडियन इंस्ट्रूमेंटल्स का मिक्स सब्सक्राइबर्स के लिए 4 चांद लगाए गेमबोजो में आज दूर है दिल में प्रोफेसर सौमिक है सुपर गेमर एपेक्स लेजेंड्स सीओडी मोबाइल GTA 5 को जाने वो है गेमिंग के दुनिया का प्रोफेसर किली में आज तक ना देखे जान तेरे तहा गेम प्रोफेसर सौमिक के सुपरस्टार एपेक्स लेजेंड्स सीडी मोबाइल GTA 5 को जाने वो है गेमिंग के दुनिया का जादूगर गेमबोजो में अपने स्टाइल से दबा के गेम पर पट्टी
हेलो एंड वेलकम टू द स्ट्रीम गाइस, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। कैसे हो सब लोग और कैसे चल रहा है सब लोग का दिन? तो आज हम लोग आ चुके हैं विद सम मोर वैम्पायर गेम प्ले और वैम्पीर गेम प्ले एंड लेट्स सी हाउ इट गोस। आज ही हम लोग ने वैसे स्ट्रीम ख़त्म किया था, कल शुरू किया था, आज ख़त्म किया रात को कुछ 12 साढ़े 12 बजे तक हम लोग खेले थे, 12:30 के ऊपर तक हम लोग खेले थे एंड काफ़ी देर तक मैं बहुत डिटेल में जा जाके बहुत सारे कैरेक्टर्स को मिल मिल के फिर जाके मैंने उसको खेला एंड कंप्लीट किया काफ़ी मिशंस वगैरह को। तो मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, मुझे इन डेप्थ में खेलने में, इसका लोर जानने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। आई होप जो लोग देख रहे हैं उनको भी मज़ा आएगा एंड एटलीस्ट दे विल गेट एनकरेज्ड कि ऐसे टाइप के गेम्स मैं अगर ट्राई करूँ, मुझे भी ट्राई करना चाहिए, शायद मुझे भी अच्छा लगे। स्पेशली जो लोर वगैरह जानने में जिनको ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है ना, कोई भी स्टोरी लोर जो भी है उसको जानने में अगर इंटरेस्ट रहेगा तो डेफिनेटली वो एक मतलब मज़ेदार एस्पेक्ट बन जाता है इस गेम का। 1 मिनट देना। हाँ, अरे मेरा सी ड्राइव तो भरे ही जा रहा है। ऐसी कौन सी चीज़ है सी ड्राइव में भरे ही जा रही है? सी ड्राइव में लिटरली 20 GB के आसपास स्पेस बचा है। देखना पड़ेगा क्या है ऐसा सी ड्राइव में भरने वाला। बाकी ड्राइव्स तो ठीक है। सी ड्राइव में मैं इतना भी मतलब भर के तो रखता नहीं हूँ, शायद कुछ ऐड हुआ है, कोई वीडियो वगैरह मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया है क्या, देखना पड़ेगा। अच्छा हाँ, वो डाउनलोड्स वाला वो हो सकता है। हाँ, डाउनलोड्स जो है वो इधर हो गया है ना, बहुत सारे हो गए, उसमें कुछ वीडियोस वगैरह भी शायद हैं इसकी वजह से। ठीक है, बाद में देख लेता हूँ। सी ड्राइव बहुत ज़्यादा भर गया। एनीवे, गेम शुरू करते हैं। अभी तक तो कोई दिख नहीं रहा है वैसे चैट में, शुरू होते ही शायद आ जाएंगे धीरे धीरे करके। एंड जो बाई चांस अभी तक लिख नहीं पाए हैं बट है स्ट्रीम पे, वेलकम टू द स्ट्रीम गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। जस्ट गिव मी लेस देन 30 seconds. Causes and effects. इफेक्ट देखने तो मिलेगा। हम लोग ने एक भयंकर डिसीजन लिया जिसके चलते इफेक्ट देखने मिलेगा हमें उस चीज का। यू कैन क्राफ्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीरम्स। हाँ ठीक है, तो कल हम लोगों ने ये किया था। The flower's dying. It needs water. कहाँ से मिलेगा वाटर? वाटर ये भर जाती है शायद। मैं हॉस्पिटल से बाहर जाऊंगा तब जाके भरेंगी ये सब चीजें। चलो पहले स्टोरी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। कल हम लोगों ने काफी देर तक स्टोरी ही नहीं किया था। यहाँ पे भरेंगे कुछ नहीं, एक भी खुली हुई है। I cannot enter. I cannot enter. FC2 क्या है ये? FC tell Swansea about the Swan's blood.
पर है किधर ये स्वानसी? यहाँ पे क्या कर रहा है? लेटर ऑफ राकेश छड़ाना। Dear Dr. Swansea, 4th August को लिखा है, I will be glad to manage the temporary morgue as soon as it's opened. As I have already told you, I was a doctor during the war and I will be glad to serve my country again. I know it is not the same being a physician for the dead as it is for the living, but I believe it is important to welcome and take good care of our departed too. Rest assured, I will do my best to fully perform this new duty to the best of my ability. Concerning the question of my qualifications, I'm sorry I can't give you anything more valuable than my parole. I swear to you that my regiment made me a doctor during the war and that I saved many lives. If my word is not enough, you can contact the military administration to verify my experience and skills. They will confirm that even if I never followed any medical studies, the war taught me what a doctor really needs to know. Rakesh Chadana, former doctor, always sincerely, लिखा है. Appointed as a medic by mistake during the war. By mistake. क्या बात है. यहाँ पे कुछ rare species of vampires. क्या है rare species में? As a scholar and exegete of ancestral writings, I would never insist enough about the importance of taking legends and a common mistake is to take what we know for an established truth and use it to discard any contradictory material. For example, we must consider the possibility of undiscovered species of vampires and the necessity to rethink what we see as the established truth about the various types of immortals based on what we know and what we gathered through time. For how many centuries did we consider that vampire was the vernacular term for what we had learned to call icon? Until the day 4 explorers of the Brotherhood found proof in Siberia that Volkods were a lupine type of vampire, were considered these creatures to be linked to the mythological werewolf. Now we know it is not true. What about the rest? What about the Rakshasa from my homeland? What about the Chinese Yangtze or the Pechuan of southern Chile? And without even leaving the beautiful Great Britain, what about the stories about bat-shaped women flying around St. James Church in Louth? I tell you, my brothers, we can never be too sure of what we could find if only we could forget for a few minutes what we are supposed to know. Usher Tall Tree, Primate of St. Paul. राक्षस तो भाई राक्षस जो है होते थे, जितना मुझे पता है, वो अगर खाएंगे इंसान को पूरा खा जाएंगे, हड्डी छोड़ देंगे बस. वो खून वून वाला नहीं है. खून आई थिंक पिशाच वगैरह खाते हैं वो, मतलब पीते हैं वो सब. बहुत उसके अलग अलग क्लासिफिकेशंस है. हमारे इंडियन स्टोरीज वगैरह उसमें पड़ेगा तो पिशाच वगैरह है जो खून पीते हैं. इवन अगर इसमें भी जाओगे, हम लोग बहुत टाइम बोलते हैं असुर, राक्षस, दानव एक ही कैटेगरी में बोल देते हैं, बट वो वैसा नहीं है. राक्षस एक लिनिएज का होता है. असुर यूजुअली देवता को हम लोग बोलते हैं कि वो देवता गण जो हैं उनको सुर बोला जाता है, और जो उनके ऑपोजिट में होता है उनको असुर बोला जाता है. तो कभी कभी हम उनके साथ कंफ्यूज कर जाते हैं और बहुत इंटरचेंजेबली भी यूज होता है. दानव दनु नाम का जो एक व्यक्ति था, उसके लिनिएज के जो लोग होते थे उसको दानव बोलते थे. वो भी विशालकाय वैसे रहते थे. हर एक के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो जब हम लोग पढ़ेंगे तब जाके. मैंने पढ़ा भी था इसके बारे में, वो क्या क्या उसके डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स वैसे हैं, पर अभी भूल गया हूँ. क्योंकि वो अगर रेगुलरली वो सब चीज़ें के बारे में ना पढ़ूँ तो एक बार पढ़ के, बहुत साल पहले पढ़ा था मैंने, 15 साल हो गए रहेंगे, 12 साल 15 साल तो हो ही गए रहेंगे, तो फिर भूल जाते हैं ना. पर वही है, बहुत इंटरचेंजेबली ऐसे यूज़ किया था. राक्षस तो ऐसे ऐसे ही टर्म बोल देते हैं. अब बाहर वाले
लोगों को क्या ही पता है, उनको तो लिमिटेड ही नॉलेज है। और हम भी कभी कभी बाहर वालों से सीख लेते हैं, तो इसलिए हमारी नॉलेज और जो थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए वो भी नहीं रहती। Evening, Edgar. Could I get your professional opinion? Please speak, but I have something important to tell you. This strain of flu, it's very different from the one I saw in Europe. It's downright peculiar. Really? What makes you say that? देखो कितने देर से चैट ही नहीं आया था मुझे मोबाइल पे। अभी मैं सोचा कि ऐसे दो तीन करके मुझे वहाँ पे दिख रहा है लाइव में देखने वाले, पर चैट नहीं आ रहा। मैं एक बार रीस्टार्ट कर देता हूँ ऐप को मोबाइल पे। अभी देख रहा हूँ आर्यन कितने मैसेजेस। बाय द वे आर्यन, वेलकम टू स्ट्रीम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। यो कैसे हो सभी? आ गया मैं। न्यू गेम, हाँ न्यू गेम, मेरे लिए न्यू गेम बट है पुराना गेम, 2018 का गेम है, बिफोर द कोविड, बट कोविड के साथ बहुत मैच करता है यहाँ पे सिचुएशन। स्पेनिश फ्लू पे सेट है। मेरा 6 सेम फर्स्ट लॉट एग्ज़ाम चल रहा है, परसों लास्ट है, आज था एडवर्टाइजमेंट मैनेजमेंट। अच्छा बढ़िया गया। परसों थर्ड सब्जेक्ट है इंटरनेशनल बिजनेस और 3 सब्जेक्ट। ये फर्स्ट लॉट ख़त्म होते ही स्टार्ट होगा पढ़ाई, देन एग्ज़ाम मार्च या अप्रैल को। अच्छा इसमें से यूनिवर्सिटी एग्जाम्स कौन से हैं तुम्हारे? सारे कॉलेज में ही देने हैं या यूनिवर्सिटी के भी कोई एग्जाम्स हैं इसमें से जो अलग से यूनिवर्सिटी के देने हो? I never saw symptoms like this when I was in France. Not at all. I see. Do you have anything more to go on? This disease spreads and looks like the Spanish flu, but its effects differ greatly. The London strain is different from the continental one. This is very interesting. Did you find something else? Yes. Unlike the flu, the infected begin to show an increase in outwardly aggressive behavior. More than simple agitation. Once docile people become violent. You mean like rabies? Is there a chance we could create a vaccine, Jonathan, like Pasteur? By the stove, that would be smashing. There's a lot we're not seeing here, but it is spreading and quickly. If we don't act, the whole city could be lost. But Jonathan, we've a fantastic opportunity sitting right here in front of us. A weapon of choice. Weapon? What on earth do you mean? Why, you, my dear boy. With your expertise and your blood, we could isolate the properties that course through your veins. Think about the possibilities. वेपनाइज करने का बात कर रहा है क्या ये? But the risk of infection using vampire blood could compound the situation. I know, but your blood now carries remarkable regenerative properties. With our minds and your blood, there's nothing we couldn't cure. We'll discuss this more later. Thank you for your time. No, thank you, Jonathan. But as I said, I needed to talk to you. Okay, bolo. I have some rather bad news. Yes? I'm afraid it's your sister. My sister? Mary. She's to be buried this evening at Whitechapel Cemetery. Your mother published the obituary this morning. I see. I'm sorry, Jonathan. Please accept हम my नहीं मारा था, condolences. गलती से मारा था। Mary's funeral, sad life. हम वैम्पायर बने थे तो हमें खून की प्यास आई थी और हम देख नहीं पाए थे, और जो पहला व्यक्ति मिला उसका खून चूस लिया, फिर मालूम पड़ा वो तो अपनी बहन है। बहुत ही ज़्यादा ट्रैजिक हो गया। कल चैंपियनशिप लीग का गेम था, कल एक ही दिन में 18 मैचेस थे। कल संजू सैमसन ज़्यादा ट्रोल हुआ। कल संजू सैमसन के पास बहुत अच्छा मौका था खेलने का,
टाइम मिला था, एक दो थोड़े जीवनदान टाइप्स भी मिल रहे थे, वहाँ पे संजू सैमसन को फ़ायदा उठाना चाहिए था। अब एक लास्ट मैच रह गया है, पता नहीं तिलक वर्मा आएगा तो फिर संजू सैमसन की जगह पे ईशान किशन ही रहना सही है, क्योंकि फॉर्म तो उसका अच्छा चल रहा है। कल भी तो भाग भाग के 12th मैन बन के सबको पानी वानी पिला रहा था, सब कर रहा था। ऊपर से मेरा डिस्प्ले पूरा टूट गया था, तो लास्ट वीक ना ठीक से गेमिंग कर पा रहा हूँ ना स्ट्रीम देखने आ पाया। अच्छा, कैसे हाथ से छूट गया था? Airtel announced partnership with Adobe, under which all 360 million Airtel customers will get free access to Adobe Express Premium। क्या बात कर रहे हो? क्या क्या है Adobe Access Premium में? मेरी मॉम के पास एयरटेल का नंबर है, मेरे पास तो वीआई का है, डैड के पास शायद जियो है। अरे हाँ, डैड के पास जियो है तो मुझे I never thought I would have to attend my murdered sister's funeral. Mary, I can't forgive myself. गूगल का वो I'll find the truth about what happened to us. I swear. AI का 18 महीने का एक्सेस फिर मिल जाएगा। रॉड यहाँ पे और कुछ तो नहीं है जितना मुझे ध्यान है। इसका चाबी रॉन्ग टारगेट इन्वेस्टिगेशन अपडेटेड, प्रिवेंट रुकी। Small bottle survey mission. Okay. Swapnil, welcome to stream. Thank you so much for joining in. Yo sir, how are you? I am fine. अरे एकदम बढ़िया हूँ स्वप्निल। और कल का मैच देखा फिर? बस वही हाईलाइट था, शिवम दुबे। रिंकू सिंह शायद थोड़ा प्रेशर में आ गया था कि इतने सारे विकेट गिर गए और बाद में ज़्यादा बैटिंग बची नहीं है, तो रिंकू सिंह भी अपना एकदम फ्लुएंट बेस्ट पे नहीं देखा, सही बताऊं तो, क्योंकि स्टार्ट ही ज़्यादा मिला नहीं था, तो रिंकू को बहुत सारे ओवर्स खेलने थे। शिवम दुबे ने अपना दिखाया भाई, पूरा मतलब पावर दिखाया, स्पिन बॉलर्स के अगेंस्ट में कितना डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। इस सोडी को तो ख़त्म ही कर दिया था भाई, उसका करियर ही ख़त्म कर दिया। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है, उसका करियर ख़त्म ही कर दिया इस सोडी का। चैट पे गया था, छत पे गया था, देन रिटर्न आते ही मेरे जंप करके आ रहा था तो पॉकेट से निकल गया, वो जो सीढ़ी के बीच वाला नीच तक एरिया पे गिरा 3rd फ्लोर से। अरे बाप रे, 3rd फ्लोर से आजकल के फोन्स तो भाई मुश्किल ही है। वो पहले के होते थे नोकिया वाले, मेरा दोस्त लिटरली उसने मेरे सामने किया था वो चीज़। उसको नया फ़ोन चाहिए था और घर वालों ने बोला था ये जब टूटेगा तब जाके देंगे। तो टॉप फ्लोर में, मतलब 4th फ्लोर में रहता था वो, और उधर से वो फ़ोन नीचे फेंकता था, और नीचे कंक्रीट है, सॉलिड कंक्रीट, ठीक है, कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता था। उसने बोला अरे मैंने ऊपर से गिराया भी है, टूटता ही नहीं है। फिर जब उसके घर से मैं बाहर निकल रहा था, उसने बोला इधर आ, और बैल्कनी से उसने फेंक दिया फ़ोन। बोले क्या कर रहा है, और उसने मेरे सामने फेंक दिया फ़ोन। फिर नीचे गए वो भी आया नीचे और बोला ये देख शौमिक, फ़ोन को कुछ हुआ ही नहीं है। मतलब कितना कोशिश किया, टूटता ही नहीं है ये। नोकिया का फ़ोन ऐसा था, म्योलनिर जैसा,
25th October from Guard of Prevent Command Post. Object: Vampire Activity Hospital Survey Investigate. 3 days ago, one of our new recruits heard a rumor about the presence of a female vampire hiding in the Pembroke Hospital, London East End. All we have is her first name, Thelma. Your mission is to discreetly go there and observe any suspicious activity. अच्छा, Thelma हाउक्राफ्ट या कुछ तो उसका नाम है ना. वो बोल रही है मैं वैम्पायर हूँ करके. Any suspicious activity concerning said leech, then report directly back to us and we will decide what action to be taken. Thelma Howcraft, हाँ. ये इसका अभी भी एक हिंट लॉक्ड है. और कुछ है यहाँ पे लूटने लायक नहीं है शायद. अरे ये बहुत गलत इन्होंने कलर दिया है वहाँ पे. ऐसा लगता है कि वो भी लूटेबल ऑब्जेक्ट है कुछ. सिंस ये लोग आए इसकी वजह से ये दरवाज़ा खुला है, नहीं तो पहले खुला नहीं था. अच्छा, बॉक्सेस ऐसे टूट भी जाते हैं. समर्थ वेलकम टू स्ट्रीम. मैंने BGMI खेला अभी, कैसा लगा? निखिल वेलकम टू स्ट्रीम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन. हेलो हेलो. वैसे सर जी मैंने आपको बताया था ना मेरे डिग्री मिलने के बारे में? नहीं, शायद नहीं बताया था. डिग्री मिलने के बारे में क्या क्या बताया था ऐसा? मुझे अभी फ़िलहाल तो याद नहीं आ रहा है ऐसा कुछ बोला था. अरे अभी तो T20 सीरीज जीत ही गए ना, अभी तो एक्सपेरिमेंट ही चल रहा है. आप बट बहुत ज़्यादा भी एक्सपेरिमेंट ना करें क्योंकि इसके बाद वार्म अप मैच है और देन वर्ल्ड कप ही शुरू होने वाला है. यो तिल के लड्डू खा रहा है. कैरम 3D और क्रिकेट नहीं खेला. नोकिया CRT में तो क्या खेला. मेरे पास नहीं था वो नोकिया वाला फ़ोन. पुराना CRT वाला नहीं था मेरे पास. मेरे कुछ कज़न्स वगैरह के पास था और एक दो दोस्त के पास था. उसमें मैंने थोड़ा बहुत खेला था बट मेरे खुद के पास नहीं था. मेरे घर में फ़ोन मतलब मोबाइल फ़ोन जो पहला आया वो नोकिया 3310C वो वाला आया था. वो कलर था, उसमें वीडियो वगैरह भी मतलब वीडियो कैप्चर भी कर सकते थे, फ़ोटोज़ भी ले सकते थे. कुछ 1.3 मेगापिक्सल का कैमरा था. 1.3 मेगापिक्सल तब तो मतलब बहुत बड़ी बात है. 1.3 मेगापिक्सल कैमरा क्या बात है, एकदम क्रिस्टल क्लियर पिक्चर्स. 1.3 मेगापिक्सल भाई, क्या क्रिस्प पिक्चर्स आ रहे हैं भाई. ऐसा सीन था. फिर वो VGA कैमरा, ये कैमरा, वो कैमरा. अरे भाई फेरोशियस कॉल. आया आया. मारते मारते ये खुल गया.
Concerning the recruitment of new boys in Whitechapel, I think I have found one. Albie. He's as stupid as a stool but tough. I asked him to prove to me he could get some drugs for the black market and delivered quickly and nicely. Next time we meet, I will tell him he's accepted as a wet boot boy and he must now meet the bosses to get his orders. I'm sure Albert would like to know he's been accepted by the wet boot boys. भाई बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन है, इनको ट्रैक कैसे करूंगा? इधर से ट्रैक होता है वो. Quest. कल इन्वेस्टिगेशन इवेंट, एन अननोन इवेंट हैपेंड. अच्छा, न्यू डायलॉग अवेलेबल डॉक्टर स्वानसी. ये फ्यूनरल वाला सीन है. एक काम करता हूँ, इवेंट पे ही चलते हैं, फिर आते हैं. फ्यूनरल पे तो आएंगे ही. ब्रॉलर. भाई वो देख लेंगे तो अलग पंगे हैं. फाइट करना पड़ेगा, बहुत रिपीटेटिव फाइट है. फाइटिंग में ना उतना फन नहीं है, सही बताओ तो. इनको थोड़ा फन ऐड करना चाहिए था. गेम क्योंकि ऑलरेडी सीरियस है, फाइटिंग वाला पार्ट थोड़ा सा फन रहता तो मजा आ जाता. I can't believe I'm doing this. मुझसे बात नहीं करनी क्या? यस. यो तिल के लड्डू, मैंने बीजीएमआई खेला है. ऐसा क्या फैक्टर्स था नोकिया फ़ोन पे? आई थिंक मोटा होने के कारण टूटते ही नहीं है. आई थिंक पहले बनाते भी अच्छे मटेरियल से थे. वैसे ऑस्ट्रेलिया ओपन देख रहे हो? मज़ा आ गया था एल्काट्रास का देख के. नहीं, मैं तो फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ आर्यन, टाइम नहीं मिल पा रहा. अंबुजा सीमेंट. नोकिया के ओल्ड फोन्स तो इंडेस्ट्रक्टेबल थे. सोचो जब तब के समय एआई बनता और एआई आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता तो वो फिर ऐसे नोकिया वाले फ़ोन्स पर कब्जा कर लेते, उसके बाद वो इंडेस्ट्रक्टेबल हो जाते. पहले मटेरियल्स अच्छे बनाते थे, अब आफ्टर सर्विस अपना करवाने के लिए कमज़ोर बनाते हैं. समर्थ किधर है? समर्थ यही तो है, मैट्रिक्स सैम वही है समर्थ. पीकी ब्लाइंडर्स, काफ़ी मस्त आउटफिट आया बीजीएमआई में. अच्छा अच्छा, ओके. कौन समर्थ? तुम हो क्या? नहीं, मैं यूवी हूँ भाई. आर्यन. यूवी रे. सर मैंने अब आईफोन एसई ना लेके आईफोन 7 का मन बना लिया है, देखते हैं आगे क्या होता है. अब ओके यार, ये समर्थ न्यू आईडी पे फिर से आ गया. ओ, उसका चेंज होता रहता है. आईडी फिक्स्ड नहीं है उसका. रिलायंस क्या फ़ोन था जब आया था, तब क्या फीचर्स थे 2006-07 में? डिजिटल स्क्रीन. ऊपर से रिलायंस के फ़ोन्स का वो एक रहता था सिस्टम, वो CDMA टेक्नोलॉजी पे चलता था. यूजुअली तुम्हारा सिम कार्ड वगैरह जो रहता है वो GSM टेक्नोलॉजी उस पर रहती है. रिलायंस वाले उनके जो हैंडसेट है उसमें उनका ही वो चलेगा, नेटवर्क उसका ही, रिलायंस का ही काम करेगा. वो CDMA टेक्नोलॉजी पे काम करते थे. तब पढ़ा भी था इसके बारे में, CDMA GSM वगैरह कैसे डिफ़र करता है डॉल. हा. हेलो आर्यन भैया. मौसा जी जब आते थे उनके फ़ोन में दिन भर खेलता था गेम. रिश्ता वही सोच नहीं. अभी ये आईशो स्पीड बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल रहा है बिकॉज जो अफ्रीका गया था उससे सब चीज़ ट्राई किया, हॉस्पिटैलिटी से लेके टेक, एंड इसके कारण अभी लोग अफ्रीका पे उनका POV था चेंज हुआ है. अफ्रीका तो लोगों का मतलब हॉलीवुड का ही है ऐसा कि वो गरीब वगैरह दिखाते हैं, अनपढ़ जाहिल वैसा टाइप का दिखाते हैं. वैसे बॉलीवुड ने भी किया है ऐसे तो देखा जाएगा तो, बट बॉलीवुड का इंस्पिरेशन हमेशा हॉलीवुड ही रहा है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम. अफ्रीका में भी बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है, ऐसा नहीं है कि अफ्रीका बहुत पिछड़ा है. कुछ एरिया में डेफिनेटली पिछड़ा रहेगा. मतलब वो इथियोपिया, सोमालिया वगैरह, रवांडा वाले कुछ देश है, जिम्बाब्वे, जो थोड़े अभी पिछड़ गए हैं. बट तुम साउथ अफ्रीका में जाओगे तो साउथ अफ्रीका बढ़िया कंट्री है. स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना तगड़ा है उधर साउथ अफ्रीका में, एंड इन जनरल भी डेवलपमेंट अच्छा खासा है.
तुम नाइजीरिया में देखोगे, नाइजीरिया भी एक डेवलपिंग कंट्री में ही आता है, मतलब वो नेक्स्ट उभरता हुआ कंट्रीज में से है नाइजीरिया। उसके आजू बाजू के भी कुछ कुछ कॉन्गो वोंगो वो सब भी है। एंड धीरे धीरे और भी कंट्रीज ओपन अप हो रहे हैं। केनिया भी जैसे नायरोबी वगैरह तो अच्छे खासे डिसेंट लेवल पे डेवलप हो चुके हैं, बट वो भी डेवलपिंग स्टेज पे है। एंड कुछ कुछ मामले में तो मतलब सर्टेन सिटीज़ तो इंडिया के टक्कर में भी है, मैं तो इतना भी बोल सकता हूँ, इंडिया के टक्कर में इंडिया से बेटर भी है। तो ऐसा है कि ओवरऑल में थोड़ा पीछे हो जाते हैं, और वो भी होंगे क्योंकि उनके वहाँ पे भी लूटा गया है, उनके वहाँ से भी रिसोर्सेज बहुत लूटे गए हैं लोगों को लेके। कितने जगह पे तुम्हें अफ्रीकन अमेरिकन, इंग्लिश अमेरिकन ऐसे करके तुम्हें मिल जाएंगे, क्योंकि वहाँ से अफ्रीका के जो ओरिजिनल लोग हैं उनको ले लेके उन्होंने एज अ स्लेव वो लोग लेके गए थे अपने देशों में। तो जैसे बिहार से कितने लोगों को लेके गए थे, हमारे यहाँ से बिहार से बहुत लोगों को ले लेके, वो वेस्ट इंडीज़ में कितने सारे तो बिहार के ही तो हैं, वो वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर्स वगैरह, इसलिए नाम तुम्हें इंडियन भी लगता है। वो एल्विन कालीचरण, फिर ये रवि रामपॉल, शिव नारायण चंद्रपॉल, तो ऐसे करके तुम्हें बहुत सारे इंडियन नाम के उधर मिल जाएंगे। ये बेसिकली बिहार के हैं जो कि 100 साल या उससे पहले से वहाँ पे सेटल हो गए, एंड उधर थोड़ा मतलब उधर के उनके साथ ही रह रहे के थोड़ा सा वेस्ट इंडियन बन चुके हैं। तो शिव नारायण चंद्रपॉल की तो कुछ रिलेटिव्स यहाँ बिहार के हैं, वो आया था, एक शादी अटेंड करने भी आया था, उसका तुम गूगल करोगे तो पिक भी मिल जाएगा, देखा था मैंने। वो प्रॉपर एकदम बिहारी ट्रेडिशंस वगैरह चल रहे थे, वो सब देख रहा था वो। अफ्रीका के भी अच्छे खासे, मतलब नेक्स्ट अगर इंडिया के बाद नेक्स्ट कोई उभरता हुआ जो कॉन्टिनेंट देखा जा रहा है तो अफ्रीका ही है, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज मिला के वो लोग अच्छा कर रहे हैं। मैंने जीवन का सबसे पहला गेम ऑन पीसी GTA वाई सिटी, बचपन में मैं वाई सिटी बोलता था, बाद में पता चला वाई सिटी होता है। डब्लू स्पीड सर जी आप कल से टीवी पे लाइव आया करो, मैं टीवी नहीं देखता, टिपिकल इंस्टाग्राम टोल नाउअडेज। एंड आईशो स्पीड के रिटर्न के बाद ज़्यादा टूरिज्म इंक्रीज हुआ है उधर, अच्छी बात है, होना चाहिए, अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट लाएगा तो रेस्पेक्टेड फिगर भी बन जाता है, बहुत सही चीज़ है। अपना अगर इन्फ्लुएंस को तुम एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पहुंचाने के लिए कर रहे हो तो इससे बढ़िया और क्या ही हो सकता है। रेस्पेक्ट तो है ऐसे बंदों के लिए। अगर नहीं बताया तो कोई बात नहीं, मैं फिर बता देता हूँ, मुझे डिग्री मिल गया है और मैं अभी ग्रेजुएट हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन स्वप्निल वंस अगेन, कॉन्ग्रेचुलेशन स्वैप द, हाँ CDMA वाला था तब। डब्लू स्पीड मुझे आजकल पता चला है कि आईशो स्पीड इज़ ट्रू जेम, ही डिजर्व्स दिस मच फेम। अफ्रीका जॉर्डन साइड वाले रीजन्स और साउथ अफ्रीका कंट्री साइड भी सही माहौल है। हाँ जॉर्डन वार्डन वाले एरिया वो भी बहुत अच्छे हैं, ऊपर के नॉर्थ के कुछ कुछ कंट्रीज़ बहुत सही है वहाँ पे। समर्थ नाम है मेरा, थैंक यू मैट्रिक्स। महात्मा गांधी 1800s में ही अफ्रीका गए थे वकालत, कितना फ्लरिश्ड होगा वो। फ्लरिश्ड इन द सेंस कि वहाँ पे अल्टीमेटली ब्रिटिशर उनका ही राज था, वो ब्रिटिशर्स का ही राज था। महात्मा गांधी का तुम पहले की हिस्ट्री पढ़ोगे तो साउथ अफ्रीका में आई थिंक बोअर्स करके वॉर हुआ था, एंड महात्मा गांधी चाहते थे कि वो एक तो थोड़ा ब्रिटिशर वगैरह टाइप का बने। उनका तुम स्टार्टिंग का जो मतलब बायोग्राफी वगैरह जब वो जानोगे ना, उनका स्टार्टिंग में बहुत इच्छा था ऐसा ब्रिटिशर्स की तरह जेंटलमैन बनना है, वॉर में पार्टिसिपेट करना है, लाइक ही वांटेड टू पार्टिसिपेट इन द वॉर, वो क्वीन को सर्व करना चाहते हो, उनके हैंड रिटन लेटर्स हैं। फिर क्या हुआ ना, जब उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन को फर्स्ट हैंड देखा, जहाँ पे सेकंड क्लास में जाके वो टिकट खरीद के गए थे फिर भी उनको नीचे उतार दिया था, फिर धीरे धीरे वो रियलाइजेशन हिट होने लग गया, एंड देन ही वेंट टू इंडिया एज वेल। एंड अल्टीमेटली देखो वो भी बिहाइंड द सीन्स पॉलिटिशियन ही थे, तो हमें बहुत ऐसा लगता है कि कभी कभी ऐसे पढ़ा ऐसे जाता है जैसे गॉडली फिगर टाइप होता है ना,
बट वो भी अल्टीमेटली इंसान ही थे, अलग अलग उनको भी पता चला हाँ ऐसे ऐसे करके किया जा सकता है, एंड दैट इज़ हाउ ही बिकेम अ लीडर। अब क्या होता है ना, अभी पॉलिटिक्स और भी भयंकर हो गई है, प्लस सोशल मीडिया और ये सब आ गया है, तो अभी बहुत सारी चीज़ें सच भी निकल के आती है, कुछ कुछ रूमर्स या एक्सैजरेशन भी निकल के आता है, बट बहुत ऑथेंटिक सोर्सेस से भी मिल जाएगा जो उन्होंने किया भी है। क्रिश का गाना सुनेगा। आइशो स्पीड जब इंडिया आया उसको वो फैंस मिले ही नहीं जितना बाकी देश के लोग हैं। मोस्ट यूट्यूबर लोगों ने उसको होटल पे ही कंटेंट बना के रख दिए। हाँ, तो उनको पता है कि आइशो स्पीड एक ग्लोबल अभी एक बंदा है, ऑलमोस्ट काफ़ी लोग जानते हैं उसको ग्लोबल स्केल पे, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ वगैरह जानते हैं। यहाँ के यूट्यूबर को जैसे ही बुलाते हैं वो चले जाते फट से, वो मौका छोड़ते नहीं है। मिस्टर बीस्ट हो गया, आइशो स्पीड हो गया, फिर वो लोगन पॉल वगैरह, KSI भी है। जैसे ही मौका मिलता है ये दिख जाएंगे तुम्हें उनके उसके इर्द गिर्द घूमते हुए, छोड़ेंगे ही नहीं उसको दूसरा कुछ करने के लिए। सर जी क्या हाल आपका? अरे बढ़िया हाल है। इंडिया आकर क्या कचरे की IRL करता वो। सुरीनामे में वो 43% बिहार ओरिजिन, सेकेंड मोस्ट स्पोकन भी वहाँ भोजपुरी में। बीच में एक मैं रील देख रहा था जहाँ पे फिजी में भी बहुत इंडियन ओरिजिन के ही लोग रहते हैं, और उधर भी बिहार वगैरह साइड के काफ़ी जन रहते हैं, दूसरे स्टेट्स के भी हैं बट सॉरी बिहार के वहाँ के बहुत सारे हैं। तो वहाँ पे भोजपुरी अभी भी चलती है, लेकिन उनकी भोजपुरी अलग है क्योंकि वहाँ पे वो आइसोलेटेड इसमें भोजपुरी का फॉर्म हुआ है, तो वो एक भोजपुरी उनकी अलग वे में वो लोग बोलते हैं जो एक्चुअल भोजपुरी से अलग है, बट लगता है कि भोजपुरी बोल रहे हैं बट नहीं बोल रहे हैं, ऐसा टाइप का लगता है। हिंदी भी थोड़ा बीच बीच में लगता है बट नहीं भी है, ऐसा लगता है। तो वो बोलते हैं कि हमारी भाषा वो समझ जाते हैं क्योंकि बॉलीवुड वगैरह देखते हैं तो वहाँ पे वो हिंदी सुन सुन के उनको तो आदत हो गई है, बट उनकी भाषा यहाँ पे अलग वे में डेवलप हुई है, बट वो हिंदी भोजपुरी वैसा टाइप का ही बोलते हैं। और दूसरे स्टेट्स के भी वो लोग भी क्योंकि कॉमन हिंदी बन जाता है तो वो भी बोलते हैं, तो उनका भी एक मिश्रण मिला के थोड़ा अलग सा ही हो गया है वो। सॉरी बट क्या महात्मा गांधी जी सच में अच्छे थे? सॉरी, अच्छे बुरे वो तो देखो हर एक का अलग अलग पर्सपेक्टिव है। मैं तो यही बोलूँगा कि खुद पढ़ो, खुद जानो अगर जानना है तो, एंड ऑथेंटिक सोर्सेज अगर मिल सके, उनके हैंड रिटन लेटर्स वगैरह क्या थे वो अगर पढ़ सको कभी, तब तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि वो किस एस्पेक्ट्स में। कोई भी अच्छा बुरा वाला सीन बहुत रेयरली होता है, कुछ एस्पेक्ट्स अच्छे होंगे कुछ एस्पेक्ट्स बुरे होंगे, हर एक के साथ ही वो होता है। तुम किसी को एकदम ही अच्छा करके देखोगे, उसके बुरे एस्पेक्ट्स को नेग्लेक्ट करोगे तो तुम्हें तो देवता आदमी ही लगेगा। वो किसी के साथ भी हो सकता है। अगर जैसे तुम मेरा स्ट्रीम देख रहे हो और मैं कुछ गलती कर रहा हूँ बट उसको इग्नोर कर रहे हो या उस पर ध्यान ही नहीं जा रहा, बट मेरे अच्छे एस्पेक्ट्स ही देखोगे तो तुम्हें लगेगा अरे इससे बढ़िया स्ट्रीमर कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है, कभी कोई कुछ उल्टा भी नहीं, कोई मैं कुछ गलत कर रहा हूँ और उसको अगर उसने हाईलाइट भी किया ना, तुमने इग्नोर किया हो तो तुम्हें लगेगा अरे ये क्या बंदा है, क्या गलत ऐसी चीज़ों के बारे में क्यों बता रहा है। तो हर एक का गुड बैड साइड सब कुछ ही रहता है, वो तुम्हें खुद को जान के खुद ही आई वुड से जज करना होगा कि तुम्हें कितना वो आदमी पसंद आता है नहीं पसंद आता है। आई वोंट से एनीथिंग लाइक दैट कि वो अच्छे थे बुरे थे जो थे। सर्कमस्टेंसेस हर एक के लिए अलग अलग होते हैं, वो पीरियड भी अलग था, एरा पूरा अलग ही था, तो उस केस में कुछ बोल नहीं सकते। वॉज ही रियली पॉलिटिकली श्रूड और वॉज ही रियली लुकिंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, और वॉज ही वेरी टैक्टिकली ब्रिलियंट या स्ट्रेटेजिकली ब्रिलियंट, क्योंकि बहुत सारे आरोप लगे हैं, बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, कुछ एग्जैजरेशन भी हो सकते हैं, कुछ सच भी हो सकते हैं, और कुछ शॉकिंग चीज़ें सच भी हैं जो कि अभी लोगों को पता भी चल रही हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल विंस्टन चर्चिल अगर मैं नाम बोलता हूँ तो कितने जनों के दिमाग में हीरो वाला इमेज आएगा। इंडिया में भी बहुत ऐसे लोग रहेंगे जो विंस्टन चर्चिल को समझ रहे हैं कि हीरो। क्यों? क्योंकि वो US UK वाली जो वो
एलिड फोर्सेस वगैरह जो थी एक्सिस के अगेंस्ट में उन्होंने फाइट किया था, हिटलर को हराया था। तो सबके लिए मतलब विंस्टन चर्चिल एक बहुत बड़ा हीरो फिगर बन जाता है। इंडिया में भी सब, अरे विंस्टन चर्चिल क्या आदमी था, जबकि विंस्टन चर्चिल जैसा मतलब बेकार आदमी हो ही नहीं सकता। वन ऑफ द मोस्ट ईविलेस्ट एंड क्रूएलेस्ट पर्सन्स में से है। इंडियंस को तो मतलब जानवरों के जैसे दिखता था वो, लिटरली उसके स्टेटमेंट्स मिल जाएंगे। और उसकी वजह से इनडायरेक्ट फेमाइन कॉज हुआ है बंगाल में, आई थिंक 2 बार या एक बार तो हुआ ही है वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे। और क्या किया था, एक्स्ट्रा राशन वो लोग वर्ल्ड वॉर 2 के सब सोल्जर्स के लिए उसने रिडायरेक्ट किया हुआ था, जबकि यहाँ पे लोगों को तभी राशन की ज़रूरत थी। 3 मिलियन पीपल डाइड इन बंगाल ड्यूरिंग दैट टाइम। तो मेरे पूर्वज वगैरह वो लोग रहे होंगे, कैसे उन्होंने सरवाइव किया आई डोंट नो। शायद उस टाइम पे उनके पास पैसा हो, कुछ हो, somehow they survived, क्योंकि वो बंगाल में तो रहते ही थे। वो बंगाल में मतलब बांग्लादेश वाला जो अभी हिस्सा है वहाँ पे रहते थे। तो वो पूरा बंगाल रीजन ही हुआ करता था, असम वसम मिला के, बिहार झारखंड उड़ीसा वगैरह सब मिला के बंगाल हुआ करता था। 40s का मुझे एग्जैक्टली अभी ध्यान नहीं आ रहा है कि क्योंकि कुछ ब्रेक भी हो गया था, बट जो फेमाइन वाला पीरियड था उसमें भी शायद ये सब इंक्लूडेड रहे होंगे। 3 मिलियन पीपल मतलब 30 लाख लोग मरे थे उसमें, 30 लाख लोग। तब पॉपुलेशन भी ये 150 करोड़ वाली पॉपुलेशन नहीं थी, तब नियर टू 30 करोड़ वाली पॉपुलेशन थी। तो अगर 30 करोड़ के आसपास की पॉपुलेशन है और 30 लाख लोग मरते हैं भूखमरी से, तो कैन यू इमेजिन कितना परसेंटेज हो गया तुम्हारा 30 करोड़ 1% पॉपुलेशन की मौत हो जानी है। 1% पॉपुलेशन की मौत हो जानी है, हो गई थी एक कंट्री की भूखमरी से सिर्फ, और वो भी अनअवॉइडेबल नहीं था, वो अवॉइडेबल चीज थी। क्या ही बोले। बॉलीवुड से याद आया, अभी कुछ एक न्यू कार्टून मूवी आया है बॉर्डर 2। कार्टून कैसा चल रहा है बॉर्डर 2? लोग देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, क्या सीन है? मैं तो नहीं देखूंगा थिएटर में जाके, जब OTT पे आएगा तब देखूंगा अगर मन हुआ तो। अगर रिव्यू बहुत खराब आए तो फिर तो नहीं देखने वाला, क्योंकि 1 तो आइकॉनिक था भाई, सही में आइकॉनिक था उस टाइम के लिए। अच्छे इन द सेंस कि सिर्फ अहिंसा से थोड़ी देश आज़ाद हुआ, नहीं सिर्फ अहिंसा से देश आज़ाद नहीं हुआ, वो बोल के कोई मतलब नहीं है, बट हाँ इम्पैक्ट डेफिनेटली था, ग्लोबल इम्पैक्ट था। महात्मा गांधी एक ऐसा पर्सन रहा है कि ही हैड क्रिएटेड अ ग्लोबल इम्पैक्ट। लोग जानते हैं, मतलब बहुत जन इंडिया को उतना नहीं जानते जितना महात्मा गांधी के नाम से इंडिया को जानते हैं, ऐसा भी है। वी कैंट डिनाई दोज फैक्ट्स। अगर तुम्हें बुरा भी लगता है वो पर्सन, बट हम लोग डिनाई नहीं कर सकते कि मैनी पीपल नो इंडिया बिकॉज ऑफ महात्मा गांधी। चलो बता दो समर्थ, अभी जो क्वेश्चन पूछा था अभी एक पॉडकास्ट बन जाएगा, मैं भी इंटरेस्ट हूँ तुम्हें सच बताने के लिए। डिबेट हो जाएगा सर जी। वैसे लोग गेम ऑफ थ्रोन्स वेब सीरीज से इतना ऑब्सेस्ड क्यों है? क्योंकि उसके फर्स्ट 5 सीजन्स की राइटिंग टॉप नॉच है, एक से बढ़कर एक कैरेक्टर्स, इतनी बढ़िया उसकी सिनेमाटोग्राफी है, स्टोरी एकदम टाइट, एकदम स्टोरी जो है ना, मतलब इधर उधर की चीज़ें नहीं करता। डायलॉग्स ब्रिलियंट है, ब्रिलियंट मतलब बहुत ही क्लेवर डायलॉग्स है। जो वो लोग एक दूसरे के साथ जब डायलॉग बाजी करते हैं ना, तो वो डायलॉग बाजी फील नहीं होती, और एक एक डायलॉग का वेटेज होता है। मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल ये पेट्रियोटिक मूवीज़ वगैरह में, अरे इंडिया तो पाकिस्तान का बाप है और बाप बेटे को उसकी औकात दिखाएगा और ये करेगा वो करेगा, ये बहुत सुन के ही क्रिंज लगता है। तुम कितना भी पेट्रियोटिक बनने की कोशिश करो, वो पेट्रियोटिज्म तुम्हारे बातों से आनी चाहिए, उसके लिए ये बाप है, ऐसा है वैसा है, वो बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो तुम्हारा गेम ऑफ थ्रोन्स वगैरह का जो भी सीन है ना, वो जैसे जैसे बात करते हैं तो उधर एक एक सीन से तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इन जनरल पॉलिटिक्स कैसे काम करती है उस पर बहुत बढ़िया तरीके से फोकस किया गया है। पावर डायनामिक्स कैसे शिफ्ट होते हैं, कभी कभी सीधा बंदा सबसे पहले कट जाता है, तो हमेशा सीधा रहना भी बहुत अच्छी बात नहीं होती, कभी कभी टेढ़ा भी बनना पड़ता है। देन कुछ कुछ कैरेक्टर्स बहुत मेमोरेबल रहे हैं।
प्लस उसके कुछ कुछ ऐसे ट्विस्ट एंड शॉकिंग सीन्स जो हैं जो मतलब जेन्युइनली शॉकिंग थे, वो सिर्फ नेम ऑफ द शॉक वैसे करके उन्होंने शॉक नहीं किया हुआ था। पहले 5 सीजन्स बहुत अच्छे थे, उसके बाद से उसकी क्वालिटी कम हो गई। रीज़न बीइंग कि जो एक्चुअल राइटर है वो गेम ऑफ थ्रोन्स सीरीज़ का, जिसका एक्चुअल सीरीज़ का नाम है, नॉवेल के सीरीज़ का नाम है सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर, उसमें से आई थिंक एक बुक का नाम शायद गेम ऑफ थ्रोन्स है और उसको उन्होंने सीरीज़ का नाम दे दिया। तो उस बंदे ने अभी तक वो पूरी कहानी ख़त्म ही नहीं की है। वो 3-4-5 आई थिंक नॉवेल्स लिखे हैं, उसके बाद भी उसको 3 नॉवेल्स या 2 नॉवेल कुछ लिखने हैं, तो लिखे ही जा रहा है। 20 साल 21 साल हो चुके हैं या उससे ज़्यादा हो चुके हैं, अभी तो 25 साल शायद हो चुके हैं, उसने अभी तक ख़त्म ही नहीं किया है। जिसकी वजह से राइटर्स को जो क्रिएटिव राइटर्स थे स्टोरी के लिए या सीरीज़ के लिए, उनको एंडिंग तो पता थी, बट कैसे आगे बढ़ाना है उसमें उनको तकलीफ हो रही थी। तो बीच में उन्होंने बहुत मैसअप किया हुआ है, बहुत चीज़ों में कुछ भी करके किया हुआ है। बट फर्स्ट 5 सीजन्स टॉप नॉच है, मतलब एकदम पीक टीवी सीरीज के पीक में आता है फर्स्ट 5 सीजन्स। हाँ, ये आपने सही कहा कि खुद रिसर्च करो। स्टेट लाइब्रेरीज होने चाहिए, पुराने न्यूज़पेपर जैसे रिकॉर्ड मिल जाता था। एज अ विजिटर क्या था, रांची का मस्त डॉक्यूमेंटेड आर्टिकल्स मिले थे। अभी बहुत कुछ डिजिटाइज्ड भी हो गया है, वो ढूंढना थोड़ा झमेला वाला है। एंड हमेशा तो तुम्हारे माइंड में ऐसा रहता नहीं है ना कि मुझे अभी महात्मा गांधी के बारे में सोचना है या जानना है या ऐसे करना है या वैसे करना है, तो मोस्टली गूगल ही सहारा बन जाता है और उसमें बहुत सरफेस लेवल की चीज़ें पहले दिखती हैं। फिर इन डेप्थ जाएंगे तो बहुत सारे, मतलब पर्टिकुलर टॉपिक पे रिसर्च करोगे तब जाके वो आर्टिकल्स या कभी कभी वो न्यूज़पेपर्स कुछ मिल जाते हैं, हैंड रिटन लेटर्स वगैरह मिल जाते हैं। क्या सच इतना गहरा है? सच हमेशा से ही गहरा ही होता है। जीओटी का यूनिवर्स, हर एक कैरेक्टर डेवलपमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, फैमिली एनवायरनमेंट, सब चीज़ रियल वे पे दिखाया गया है। 10 मिलियन डेथ्स ऑन हिज हेड, आई वुड से 10 मिलियन क्या 30 मिलियन कुछ है, और उससे भी ज़्यादा होगा। प्लस वर्ल्ड वॉर 2 में भी कितने डेथ्स उसने इनडायरेक्टली करवाए होंगे उसका ईगो सेटिस्फाई करने के लिए। मेरे दादाजी बताते थे ऑल ही गॉट टू ईट एट दैट टाइम वाज कॉर्न एंड वाटर। मेरे तो सही बताओ दादाजी से मैं जस्ट थोड़ा मतलब और चीज़ों के बारे में बात कर रहा था जो बांग्लादेश वगैरह में पहले जो रहते थे, तो थोड़ी थोड़ी बातें चल ही रही थी, तब तक वो मतलब गुजर गए वो, क्योंकि छुट्टियों में थोड़ा टाइम ही मिलता था। बचपन में ये सब चीज़ें पता नहीं रहती थी, और धीरे धीरे जब ऐसे चीज़ें पता चलनी चालू हुई तो फिर उनसे बात होती थी, तो वो अपने बताते थे किस्से, और बांग्लादेश के कुछ कुछ चीज़ें बताते रहते थे। बट थोड़ा और मतलब अच्छे से और जितना बात कर सकता था वैसे करने वाले स्टेज पे जब तक आया तब तक उन दोनों की, मतलब दादा दादी दोनों की डेथ हो गई थी। मैं वैसे कल साइबरपंक 2077 का 4K अल्ट्रा हाई ग्राफिक्स पाथ रेस गेम प्ले देख रहा था और क्या ज़बरदस्त लग रहा था गेम प्ले। अरे बहुत सुंदर है पाथ ट्रेसिंग, बहुत ज़बरदस्त है वो। पाथ ट्रेसिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट टैक्सिंग थिंग्स दैट कैन बी डन ऑन योर PC। 5090 में बहुत भयंकर है। ही जस्ट एग्जैजरेटेड अहिंसा, आई थिंक नहीं, तुम देखो, अपना रिसर्च करो, पढ़ो, अगर तुम्हें जानना है तो, जेन्युइनली जानना है तो। मेरे लिए अभी इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डू मोर रिसर्च ऑन दोज टॉपिक्स। पहले आई यूज्ड टू बी जेन्युइनली इंटरेस्टेड ऑन दोज टॉपिक्स। कॉलेज टाइम पे तो मुझे मतलब कोई टॉपिक मिल गया, आई यूज्ड टू सर्च लाइक एनीथिंग, और बैठ के करता रहता था। स्पेशली अपने जो मैं अपने एंसेस्ट्री वगैरह के बारे में मैंने बहुत रिसर्च किया था कॉलेज टाइम पे। देन जो हमारी कहानियाँ वगैरह होती थी जैसे महाभारत और रामायण वगैरह में, देन उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स के पूर्व जन्म के वो क्या थे, कैसे मतलब वो श्राप लगा, कुछ लगा, वो सब मैं करता रहता था बहुत इन डेप्थ। जितना मैं अंदर अंदर जा रहा था ना, और कुछ मिलते रहता था, और कुछ मिलते रहता था। उस टाइम पे मेरे पास बहुत टाइम था, तो करता रहता था ये सब चीज़ों पे रिसर्च।
इनफैक्ट मैं शायद पहले भी बोला, मैं वो यहाँ पे रिलेटिव्स आते थे, मतलब मेरी मौसा मौसी वगैरह वो लोग आते थे और उनको मैं बताता था वो कहानी कि ये कैरेक्टर या ये पर्टिकुलर पर्सन पिछले जन्म में ये था, फिर ये था, फिर उसका ऐसा हुआ, फिर उसको श्राप लगा या फिर उसको वरदान मिला जिसकी वजह से ऐसा हुआ, और पूरा मैं उधर बातें चलती रहती थी। मैंने लास्ट टाइम सबसे ज़्यादा डायलॉग मूवी शूट आउट एट वडाला देखा था। व्हाट डू यू थिंक अबाउट स्वतंत्र वीर सावरकर? थिंक अबाउट वीर सावरकर, उनके बारे में पढ़ा था क्योंकि एक बार मैं कुछ फैंसी ड्रेस वगैरह में मुझे वीर सावरकर बनाया था, तो वो टोपी वगैरह किसी दोस्त से कलेक्ट करके लेके आके वीर सावरकर बनाया था, टीचर ने बनाया था। वो फैंसी ड्रेस नहीं था एक्चुअली, कुछ इन फ्रीडम फाइटर्स का प्रोग्राम था। वीर सावरकर का तब मैंने बहुत रिसर्च किया था। उन्होंने बहुत बहुत सहा है, वीर सावरकर ने भी काफ़ी सहा है। कितना भी कुछ भी बोलो, सर्टन चीज़ें जैसे चिट्ठी विट्ठी में वो लिखना पड़ता है, वो मर्सी पिटीशन और ये सब। भाई अंडमान में सेलुलर जेल में जो लोग नहीं गए हैं, अगर अंडमान जब भी जाओगे सेलुलर जेल जाना, और वहाँ पे जो गाइडेड टूर जो रहेगा या लाइट एंड साउंड शो वगैरह रहेगा, उसमें भी बहुत तुम्हें पता चल जाएगा कि किस वे में वो लोग रहते थे। बहुत बहुत ख़राब हालत थी वहाँ पे भाई। और डेली तुमसे फिजिकली टैक्सिंग काम करवाना, वो कितना किलो तेल तो तुमसे निकलवाते थे डेली का, कुछ 40 किलो या समथिंग हर दिन विदाउट फेल। और अगर फेल हुए तो पड़ेंगे तुम्हें, वो हंटर से मार पड़ती थी। वो उन्होंने वहाँ पे पूरा संभाल के, मतलब संभाल के तो नहीं, मतलब सब उन्होंने उसके स्कल्पचर्स वगैरह बना के रखे हैं कि प्रिजनर्स को कैसे कैसे क्या करते थे, और फांसी की सज़ा कहाँ पे दी जाती थी। और एक आइलैंड थी, वहाँ पे भी फांसी की सज़ा दी जाती थी। एंड उधर से जेल से निकल के भी तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि छोटा सा शहर है पोर्ट ब्लेयर, वहाँ से भागोगे तो कहाँ भागोगे, तो पानी ही पानी सब जगह, खारा पानी ऊपर से। जॉर्ज आर मार्टिन अब पूरा किया ही नहीं है, स्टीफन किंग के साथ यही बैंटर चलता है कि तुम हर साल एक बुक कंप्लीट कर लेते हो, मेरा होता ही नहीं। हाँ वो देखा था मैंने। स्टीफन किंग बहुत सारे बुक्स लिखता ही रहता है वो, उसका एक है प्रोसेस कि वो डेली इतना लिखना है ऐसे करके उसका रहता है। और जॉर्ज आर मार्टिन बोलता है नहीं मेरा तो उतना ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, उसका अलग प्रोसेस है। बट हर एक का अलग प्रोसेस है। वो जॉर्ज आर मार्टिन लिखता बहुत तगड़ा है, बट वही है कि प्रोड्यूस होने में सालों साल लग रहे हैं ना। बॉर्डर 2 बैन होना चाहिए बस, पूरा इंडियन आर्मी लोगों को डिसरिस्पेक्ट दिया है। 2 जेट ऊपर बात कर रहे हैं, टैंक के पाइप के नीचे से ऊपर नेड फेंक रहा है, लैंडमाइंस पे भाग रहे। पता नहीं ये सब क्या कर रहे। बट ये तो बॉलीवुड में चलते हुए आ रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। मैं भी हिस्ट्री पे कुछ ना कुछ देखता रहता हूँ। ओए होए सौमिक वीर सावरकर, मैं तो पागल हूँ रिसर्च काम पे, आज भी टेंपल जाके मिस्ट्री बैक स्टोरी जानना, जबकि उधर जेंजी पिक लेते हैं। ये टाइम, कॉलेज वाला टाइम, तो इससे बढ़िया और टाइम नहीं मिल सकता, क्योंकि यही टाइम पे तुम्हें पूरा टाइम मिलता है। कॉलेज वाला जो पीरियड रहता है उसी टाइम पे तुम्हारे पास टाइम रहता है, उसके बाद धीरे धीरे टाइम मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, स्पेशली जॉब वगैरह। प्लस तुम्हें स्किल डेवलपमेंट करना रहेगा, तो उस स्किल में वो फोकस करने में काफ़ी टाइम जाता है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं फाइनेंस का ये सब कर रहा हूँ, तो अभी कंपनी के रिजल्ट्स आते हैं, हर तीन महीने में आते हैं, और बहुत सारे कंपनीज के आ रहे हैं, प्लस इंडिया FTA डील एंड ऑल। तो हर एक के बारे में जानना पड़ा, और इतने सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इतने सारे भर के डॉक्यूमेंट्स। और इवन जब क्वार्टरली रिपोर्ट्स भी आते हैं, कोई 60 पेज का होता है, कोई 100 पेज का होता है, कोई 40 पेज का होता है, कोई 20 पेज के भी होते हैं, बट बहुत सारे कंपनीज के रहते हैं। तो उस केस में पढ़ के वो सब उसका इंटरप्रेट करना, जानना बहुत टाइम जाता है, तो इसलिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है टाइम निकाल के चीज़ें करना, मल्टीपल चीज़ें करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। हाँ,
तो प्रायोरिटाइज करना पड़ता है। काला पानी का किस्सा काफ़ी सुना है, बहुत सब कैदी जो भागे हैं वो सी क्रॉस कर ही नहीं पाए तो छोटे आइलैंड्स में एक दूसरे को खा गए। हाँ, क्योंकि कुछ है नहीं, एक तो क्रॉस करना भी इजी नहीं है, सी वगैरह के बीच में जाओगे टायर्ड हो जाओगे, क्योंकि आजू बाजू में आइलैंड्स दिखने में भी उसमें भी थोड़ा थोड़ा स्पेस है आइलैंड्स में, बहुत मतलब कम ही आइलैंड्स मिलेंगे जहाँ पे डिस्टेंस कम मिलेगा तुम्हें, और छोटे छोटे आइलैंड्स में तो फाइंड आउट करने में कितना टाइम लगता है। जो पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर ही आई थिंक 2 किलोमीटर का तो वो सिटी है, छोटा सा सिटी है, आधे कहीं से कहीं पे जाओ आधे घंटे के अंदर पहुंच जाओगे। उसके बाद तुम अगर दूसरे कोई छोटे मोटे आइलैंड में भी गए क्रॉस करके, बहुत सारे जगहों पे वो ब्रिटिश आउटपोस्ट पहले से ही रहते थे, तो इतना इजी नहीं होता था उनको बचने के लिए। अल्टीमेटली वो एक दूसरे को खा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, मर जाएंगे। और पानी भी अगर उबाल के नहीं पिया, वो खारा पानी पिया, तो ऐसे ही डिहाइड्रेशन से मर जाओगे। आई थिंक उनके पास वो लिखने के अलावा कोई और चारा नहीं था, सो ही रोट इट। उनको क्रिटिसाइज करने वालों को एक दिन अंडमान जेल छोड़ना चाहिए, फिर देखो वो भी गिड़गिड़ाएंगे। काला पानी, ओके, हाँ। आई डोंट इवन हेजिटेट टू से दैट आई एम बिगेस्ट फैन ऑफ सावरकर। मैं तो यही बोलता हूँ, कोई भी कुछ भी किसी भी बंदे के बारे में बोलता है, मैं यही बोलता हूँ खुद एक बार रिसर्च कर लो अगर तुम्हें सही में जानना है तो। बाकी ठीक है, तो मैं अपने आप ही पता चल जाएगा, क्योंकि अगर मैं कुछ बोलूँगा हो सकता है एक कोई गलत निकल जाए और उसी बात को लेके बोलेंगे अरे पूरा एंटायरली मैंने जो बोला गलत है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि खुद रिसर्च करो, खुद जानो, पहचानो, तुम्हें जो लगता है सही है उस हिसाब से यू कैन फॉलो योर आइडियल। ये आइडियल है या वो आइडियल है या सभी आइडियल है या कोई भी आइडियल नहीं है। सिचुएशन भी वैसे अलग होता रहता है। ये एटीएम चार्जेस क्या है? मैंने एसबीआई का योनो ऐप पे देखा, मेरा बैलेंस नेगेटिव पर डाल दिया जबकि अकाउंट पे 100 रुपये था। चेक किया तो एटीएम मेंटेन चार्जेस लग गए हैं 238। किस बात का चार्ज? 238? इतना ज़्यादा? इतना तो नहीं होना चाहिए। एरी, वेलकम टू द स्ट्रीम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन, हाउ आर यू डूइंग? आई ऑल्सो रेड वीर सावरकर्स बायोग्राफी एंड वॉच बायोपिक। ओके। प्राइस ऑफ 1 kg सिल्वर इन इंडिया 2000 में 7,900, 2010 में 27,225, 2020 63,435, 2026 3,50,000। हाँ, बहुत ज़्यादा रैली कर रहा है। गोल्ड भी रैली कर रहा है, सिल्वर उससे ज़्यादा रैली कर रहा है। ये जिसने ये लास्ट नवंबर वगैरह में भी पैसा लगाया ना, आई थिंक नवंबर या नहीं सितंबर, शायद नहीं नवंबर में भी आई थिंक लगाया, तो उनका भी तिगुना हो गया पैसा। मतलब अगर तुमने 1,000 रुपये लगाए तो वो 3,000 हो गए ऑलमोस्ट। ऐसा सीन है। I will study demonology, so please contact me if there is any paranormal activity near you. I don't think so there is going to be any paranormal activity as such. Yo, sorry, I might have missed message. How's it going? I am doing good. What about you? Welcome to the stream once again, if you have not heard it earlier. आप आइडियल हो मेरे। Anyway, चलो गेम में आगे बढ़ते हैं। Let's move ahead with the story. Reach the Stonebridge Cemetery. Cemetery, that is part of the main story. Let's go to one of the side missions. One of the events that they are saying that it has happened. Christina Popa. Christina, how are you doing? Good evening, Christina. Change your mind, Mr. Reed? Change your mind about what? What do you know about Nurse Crane and her dispensary? 2 girls I know went to the dispensary yesterday. Nobody has seen them since. I worry about them, in case bad things happen. Oh, that's sad. Ain't required. Goodbye, miss. 90 meters more.
Okay, 40, 45 meters, 30 meters more. Wait, where do I need to go? 20 meters. So there's a rock skull. Nobody's here. Okay, so that is why. Okay, so all the guys who were getting treated here turned into this skull. I just wanted to change her mind. I didn't know that it will change her mind about treating all these patients. Great to hear. Yeah, good. Thanks. I'm tuning in while taking a walk. Okay, okay. How's the weather there now? जेई मेन का कट ऑफ परसेंटेज आ गया है. देखे क्या? नहीं, क्या क्या आया है? परसेंटाइल होगा. हाँ, परसेंटाइल ही होता है. एंट्रेंसेस में परसेंटाइल ही होता है. परसेंटेजेस यूजुअली तुम्हारे 10, 12th, 11th ऐसे टाइप के एग्जाम्स में होते हैं. ऐसा कैसे है? ऐसा कैसे नहीं? पैरानॉर्मल एक्टिविटी कुछ तो होगा. देखो मेरे धंधा बंद पड़ जाएगा. India's first AI university set to open in Amravati, Andhra Pradesh on February 19. What? That's good. You need such universities. काश हम सब अंडमान रहते होते. क्या नज़ारे होते. रहने में उसमें तकलीफ भी है काफ़ी भाई. Anywhere in India you need to travel either through ship or plane. वैसे तो subsidized मिलता है, but still it can be a nuisance living far away from the mainland India. Oh yeah, it's good. Really mild, just like a t-shirt and a light coat is okay already. Okay, that's great. Wow, the monsters infected sound quite crazy in this game. Yeah, because they are crazy. From what I have gathered from the lore, they are very much crazy.
It feels like somebody's crying. Somebody's crying, but still it feels like somebody's crying and vomiting simultaneously. What the hell? Dorothy Gray? What? No! Shit! Oh my. Oh, that's bad. No! This is wrong. No! What the hell? Dorothy Crane was one of the pillars of the community. She was helping to treat all the people. Sadly, she also got infected because of my decision. This is really sad. Lol, I see. So funny they repeat the same two voice lines. It's like they had two best takes. So they said, let's just loop these. Hello, Harry Didi. Hey, Summer, the most calming sounds to take a walk to. I have to. Something going on in this district. Do I have to fight those guys at the bottom again? Come on, Barrett. She's very. She's at a very high level, 24, whereas I am at 12. She's double my level. But all it took was one shot. That it was some gas or something. What the hell?
I think it will be difficult to fight Dorothy. Like it is very sad. She was one of the good guys. सर तो एक बार और पूछूंगा, गुस्सा ना होना. देखो अगर गुस्सा आएगा तो मैं लग रहा है तो ऐसा क्यों क्वेश्चन पूछना है. मैं सम्मू टम्मू आपका प्यारा और दुलारा हूँ ना. क्या आपको म्यूज पे विश्वास है सर जी? एज यू नो मी वेरी वेल नाउ. आई डोंट नो यू वेरी वेल. मैं इंटरनेट में जानता हूँ, तुम भी मुझे इंटरनेट पे ही जानते हो. Where is a voice coming from that's repeating the same sound? Didi, have you heard about Annabelle? She is the one who is creating these sounds. Dorothy Crane. Let's see if I can fight her off. What the hell? No! He's extremely powerful, extremely powerful. I think I will have to move ahead with the story first before fighting her. Because the combat is a bit annoying. Sometimes if I want to move away, it will take me towards the NPC. And sometimes I want to move towards the NPC, it will move away. So let me do the thing what I was supposed to do earlier. That is go to attend Mary's funeral. But how such a simple mistake created such a blunder? Somebody's coughing here. Is there anyone inside? No, nobody is here. Oh, is that sound Dorothy Crane? I think the movie briefly. चलो मैं अब चला. Okay, bye bye. Oh, okay, I see. Lol. R.I.P. Lol. Bye, Ari Didi. Oh, damn. Okay, so she was just chilling there. Lol. Just kidding. Yes, I also have watched all movies of Annabelle. Oh, that's cool, Samarth. Lol. Bye. Ari Didi, I am interesting. Not I am an interesting person. और I am an interesting person भी नहीं होगा. If you are asking a question, it should be, am I an interesting person? Sure, Samarth, lol. Fair enough, Shivam. Thank you. Is there anyone here? Okay, I don't think I have to go from this side. Who is that?
No, that's a Priven. No. How do I go there? Wait, there is another path. Why am I taking this path? Blackwall Faubourg. Tedious. This is despicable. I have this thirst for blood. So they should have added many more of these areas so that I can do some stealth by avoiding these guys. Okay, do I need to fight this person? I can go now. My dear sister, I don't know if I have the strength. Rogue Skull. How come this is happening? I can't believe I'm doing this. Funeral is happening and there are these rogue skulls roaming about.
67 meters. I am just chilling after stealing some shilling. Is there going to be a boss fight here? It seems so. No. Okay. I thought this is kind of an enclosed space. Huh. Weirdo, अरे hello, welcome to the stream. कैसे हो? Thank you so much for joining in. Lol, my English little break bye sir. Okay, bye bye. सर जी वैसे अभी कौन सा PC या कंसोल गेम है जिसमें सबसे बेस्ट ग्राफिक्स है? Cyberpunk is definitely one among them. Red Dead Redemption 2 है. और कौन सा है बेस्ट ऑफ द बेस्ट ग्राफिक कार्ड? Hellblade 2 is also very good in terms of the graphics. Gameplay wise not that good, at least compared to Hellblade 1. Graphics wise it looks very awesome. Since I can't reveal myself to my mother now, I must find a discreet spot to attend the ceremony. Yeah, I also agree. Where is that discreet spot? My mother would die if she were to see me in this state. This is her mother I or must wait. Or his father? What's that? This is despicable. What's that? I have this thirst for blood. Okay, that is the funeral place. Let me just complete all the chats. सर जी क्या मैं आपका प्यारा और ओके डिलीटेड लोगों को पता नहीं क्या हनी सिंह के गाने का शौक है? उसके गाने सिर्फ वही सुन सकता है जिसको पंजाबी और फालतू इंग्लिश वाले गाने पसंद हो. इंडिया के लिए सबसे बेस्ट रैपर कौन है? नो आइडिया. मैं उतना रैपिंग वगैरह वो सीन हिप हॉप वो सब फॉलो नहीं करता हूँ. मैं गाने पहले जो ज़्यादा फॉलो करता था बाहर के, बीच में मेरे दोस्त लोग वगैरह बाहर के बहुत गाने सुनते थे. बाहर के इन द सेंस US बेस्ड बैंड्स लाइक लिंकिन पार्क. देन धीरे धीरे जैसे गिटार बजाने का शौक हो गया. मेरे दोस्त लोग को पहले था गिटार बजाने का ज़्यादा शौक. कुछ लोग उसमें करियर भी उन्होंने बनाया है वैसे. तो दे यूज्ड टू लिसन टू मेटालिका, आयरन मेडन, AC/DC, गन्स एंड रोजेस. थोड़े पॉपुलर जो बैंड्स होते थे फ्रॉम देयर लिंकिन पार्क हुआ काफ़ी पॉपुलर. देन ग्रीन डे वॉज वेरी पॉपुलर. देन Coldplay also became quite popular. Then there were some individual artists as well. Britney Spears was on her last stages, I would say, of popularity. Before that, like early 2000s, Britney Spears was extremely popular. Enrique Iglesias, ये लोग काफ़ी पॉपुलर हो रहे थे. Then धीरे धीरे I started to listen to these metal based bands जहाँ पे गिटार का ज़्यादा प्रेजेंस होता था. गिटार सोलोज वगैरह भी बहुत तगड़े होते थे. एंड फिर स्लोली आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगिंग. तो फिर वो भजन, गज़ल, राग, ठुमरी, दादरा, सेमी क्लासिकल सॉन्ग्स वगैरह वो सब सुनना चालू किया. हाँ. देन बीच बीच में आई यूज्ड टू लिसन टू जैसे होटल कैलिफोर्निया वगैरह वैसे टाइप के सॉन्ग्स बीच बीच में सुनता रहता था.
क्योंकि गिटार पे वो बजाने के लिए उसका पूरा शीट रहता था. होटल कैलिफोर्निया का शीट ही इतने सारे उसके मतलब वो शीट्स होते थे, बिकॉज एवरी डिफरेंट टाइप ऑफ गिटार हैज डिफरेंट पीस ऑफ म्यूजिक दैट दे प्लेड साइमल्टेनियसली. एंड वो सब फिर मैं भी जब गिटार बजाना सीखा तो आई यूज टू लिसन टू दोज. देन ब्लूज करके एक जॉनरा होता था, वो सुनता था. सो ऐसे करके मैं बहुत अलग अलग डाइवर्सिफाइड सॉन्ग्स मैंने सुने. रैपिंग वॉज समथिंग दैट आई नेवर गॉट यूज टू इट. हिप हॉप और रैपिंग और वॉट एवर यू वॉन्ट टू से, आई नेवर गॉट अट्रैक्टेड टू दैट फॉर्म ऑफ म्यूज़िक. मुझे मतलब प्योर क्लासिकल भी मिलेगा, मुझे बहुत मज़ा आता है, मुझे सुनने में बहुत मज़ा आता है. अर्लियर थोड़े चर्चे में था तो मुझे वो उसका राग ठाट वो सब भी मैं समझ पाता था. अभी वापस काफ़ी टाइम से म्यूज़िक से थोड़ा दूरी हो गया हूँ, इसलिए इतना अच्छे से अभी बता नहीं पाऊँगा कि कौन से राग में हो रहा है, क्योंकि राग वैसे तो बहुत सारे हैं बट उसमें भी एक पर्टिकुलर एक पैटर्न मिल जाता तो एक आइडिया लगता है कि हाँ इससे बहुत सिमिलर है, उस राग से सिमिलर, उस राग से सिमिलर है, अगर मैं एग्जैक्ट राग प्रेडिक्ट नहीं कर पाया तो. फिर ऑफिस में आते आते देन आई हर्ड अबाउट, मतलब मुझे पहले से पता था बट आई हर्ड बीटल्स. सो आई एन्जॉयड लिसनिंग टू बीटल्स. बहुत सारे गाने उनके बीटल्स के सुने मैंने. Then I learned about Queen. So I listened to songs of Queen and I really loved. मतलब Beatles से ज़्यादा I loved Queen. Queen के बहुत सारे गाने मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं, तो मैं बहुत सुनता था Queen के गाने. I really used to replay that playlist of Queen again and again. रफ्तार और कृष्णा. घंटा आई सेड इंडिया में बेस्ट रैप सॉन्ग्स कौन बनाता है, आई मीन इंडिया के कंटेक्स्ट में. ये घंटा कौन है अब मैंने नहीं सुना. अरे ये दोनों जिनका तुमने नाम लिखा मुझे लगा इग्नोर कर दिया. यस, लेट्स कंटिन्यू विद द स्टोरी. I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. We commend unto thy hands of mercy, most merciful Father, the soul of our sister departed, and we commit her body to the ground. Earth to earth, ashes to ashes, dust to dust. इसको आई थिंक Why kill my Mary? Protagonist And stick her here in this cold, god-awful भी place. मर चुका है, उसका भी शायद These मैसेज are the मिला था. legal requirements for the epidemic, madam. Avery, I feel so tired. Please take me home. Yes, madam. मतलब उसको सुनने में मिला होगा कि उसका बेटा भी मर गया एंड बेटी तो मरी गई है, बेटी को तो बॉडी दफना ही रहे. और उसको मारा ही हमारे प्रोटैगनिस्ट ने, अननोइंगली मारा. He was also a victim of his circumstances. Oh, Mary. What have I done? If I could only change one thing. One thing. This is a nightmare. Jonathan, there is nothing you can do but accept it. What brings you here? I thought you could use the company. I am so sorry for your loss, Jonathan. हाँ, क्या चूज कर? She was kindness incarnate.
I wish the tears would come. But I'm empty. And I feel a hypocrite. Let your pain run free, Jonathan. Don't smother it. What you feel is your humanity. Don't be so quick to lose it. She had been scouring the most dangerous parts of London in search of me. And it led to her death. Jonathan, don't. I still hear her last thoughts. They echo in my head. Her mind shattered, and it haunts me. Jonathan, stop. Listen carefully. You must come to terms with this. You must learn to live with what happened. How is it possible? Tell me. Is it so easy to take a life every night, and then just smile and nod at those you spared? Don't you see? You're doing the work of our enemies, feeding your remorse. We are weakest when we grieve, and the guilt blurs our senses. And so this is why you're here. To warn me. You've felt this pain yourself. You too have endured this. I don't want to lose you, Jonathan. I've lost so many friends. Loved ones I cherished. Pray for Mary's forgiveness, if you must. You may be right. Of course. I've stared upon this world for centuries, and time has taught me to deal with guilt, if not erase it. What should I do then? St. Mary's Church is not far from here. Go there and make your peace. Find the solace you need. My lady wants me to confess. No, Jonathan. It's you who wants to confess, I think. GeForce क्लाउड गेमिंग क्या है, इंडिया में लॉन्च होने वाला है क्या? GeForce क्लाउड गेमिंग, हाँ शायद मैंने सुना चल रहा है, बातचीत चल रही है कि इंडिया में लॉन्च करने वाले हैं. जैसे जियो का भी करेंटली क्लाउड गेमिंग चल रहा है. इट इज़ वेरी सिमिलर. कोई भी डिवाइस से यू कैन जस्ट यूज़ दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन. इफ़ योर नेट स्पीड इज़ गुड इनफ यू विल बी एबल टू प्ले एनी गेम. अभी डिपेंड करेगा कि यू नीड टू बाय द गेम इन GeForce नाउ, इट सीम्स. मतलब you need to buy the subscription of GeForce now. You need to own that particular game on your Steam account or Epic account, and then you can play in that cloud वाला setting. उसका time period होगा कुछ, या मतलब मंथली लोगे तो मंथली का कुछ रहेगा. फ्री वाला पीरियड भी पहले था शायद, अभी फ्री पीरियड हट गया रहेगा. By the way, Harry, do you listen to 3 Days Grace songs? Oh, Swapnil, I am not sure, but I can try check it out. Same, I had like a whole year playing Queen almost also, and just started listening again recently because I heard Radio Gaga on GTFI radio again. Yeah, I think so. It is Radio Gaga, yes. I used to listen to that particular album again and again. So Radio Gaga, Hammer to Fall, then what was that song? I Want to Ride My Bicycle. Then I forget the titles. I used to remember all the titles, but I forgot it. Then there was that song. That song called he talks about Lady Godiva and I forgot that song. Don't Stop Me Now, I think the title of the song is.
Then We Are the Champions. We Will Rock You. All those songs. Where do I need to go, by the way? 157 meters. Of pills. Let me see. Migraine treatment for migraine I don't have. Headache also I don't have. New hideout unlocked. I still haven't used it to cure 6. I don't have it. Oh, I got it. Nice. Headache, migraine, neuralgia. Now I will help those two guys. PM neuralgia. I think I have a decent amount of money with me. Yes, 429. That is good. Bohemian Rhapsody is the best song made by Queens. Yes, but it takes time to understand Bohemian Rhapsody because it is not just a single genre. It is a mix of genres. So Bohemian Rhapsody is something that initially many people won't be able to appreciate. It takes a bit of time. At least for me, it took a bit of time to fully understand the scope at which they had created such a song. Okay, nothing here as such. No civilians allowed. And off to church he goes, a newborn seeking divine consent to lick the blood from the soft and pointy crown. Who are you? Make yourself known. Newborn, you reek of guilt and pointless compassion. Shed your skin, forget your old weaker self. What do you want from me? He wants to fight, it seems. Ascalon does not approve of lone wolves who bring unwanted eyes to our pastures. So your name is Ascalon? Ascalon's will is vampire law. Learn them, abide God, he's by like an incredible them, or I shall Hulk. return as your judge and jury. These immortals try my patience with their plans and unsolicited counsel. Solicited counsel. Let me just... I will go through this side. There's one of them. Grenade!
He's dead. Reverend Crane, he's having a cross with him. What the hell? What is he trying to showcase? What the hell? The power of the Lord commands you. Stop! Fire! This man stunned me with his faith. His crucifix. This is not good news. He depleted a lot of my blood reserves. Meters. Okay, this is a place. ये मेरी चैट डिलीट क्यों हो रही भाई ये क्या बवाल है बर्ब I like that band. They made so many popular songs like I Hate Everything, About You, Never Too Late, Painkiller, Pain, Time of Dying, Break, I Am Machine, Riot, etc. किसकी बात कर रहे हो by the way? Yeah, same. Yeah, Hammer to Fall, One Vision, etc. Lol, same. I like Hammer to Fall also. Same, yeah, greatest hits. Yeah, Dobra sir. What is Dobra sir or who is Dobra sir? It's really funny how many people I have seen in pubs or concerts etc. memorize all the Bohemian Rhapsody lyrics. It is easy to memorize the lyrics. The main part is singing it live. Kanye decided to sing it live and it was one of his biggest blunders. Because it is not possible for that song to be sung live. Plus, Freddie Mercury was something else altogether, I would say, in terms of his singing. But yeah, it's quite unique for sure. Lol Samarth, hello. Sir is deep in the game. Prosenjit, welcome to stream. Thank you so much for joining in. हाँ थोड़ा fight
करने के टाइम पे थोड़ा ये चल रहा था. बट ये सर डोबरा सर कौन है? ये डोबरा सर अजीत दोवल की बात कर रहे हो क्या? फाइट थोड़े रेपिटेटिव टाइप के है. लेटन डार्बी हील हो गया. चलो खुशियां मनाओ. लेट्स गो इनसाइड. कैसे हो प्रोसेंजित? थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन. बाय द वे आई डिडंट अंडरस्टैंड डोबरा सर वगैरह क्या चल रहा था. डोबरा मीन नाइस इन पोलिश लैंग्वेज. अच्छा, नो आइडिया. नो आइडिया अबाउट द पोलिश लैंग्वेज. रशियन सीखो. रशिया वालों ने दे रिलीज्ड अ वीडियो वेयर दे sang in not sang, they gave statements about the Republic Day of India, and they gave those statements in at least 10 languages or more, I would say. Marathi, Gujarati, Tamil, Malayalam, Bengali, Assamese, Odia, Punjabi, Sanskrit, Urdu, Hindi. So I listed at least 11 here. So you can try learning one language that they speak, Ruski. Yes, you are right. When I listened to that song for the first time, I felt good, but I moved to another song after the first 5 minutes because I didn't understand afterwards. But when I again listened to that song, I felt so good because this time I liked the presentation and the lyrics, which I listened carefully this time. Privyet. So yes. Yes? What is it that you want? I'm sorry to disturb you at such a late hour. No worries, my son. I'm still quite awake, having just returned from a funeral. Yes, I know. I've forgotten what I wanted. I don't know. This game is very dialogue heavy, very lore driven. May I help you, child? You seem somewhat perturbed. I haven't the strength to cross the threshold. I wish to pray, to cleanse my soul. The church is shut by order of the bishop, but I'm still the vicar of St. Mary's, if that is any use to you, my son. You seem to me a good soul, vicar. But this is a personal matter. There are no secrets from God, my son. If your heart needs comfort, consider me your chapel. For I can be as silent as stone. I've made myself perfectly clear. This is a private matter. Your eyes burn with rage, yet I see the pain that lies beyond. I am here to lighten the burden of all God's creatures. Whatever you tell me is between us and the Lord. Very well, priest, as you seem quite adamant. Open your heart, my son. Tell me what... Because of these dialogues and all, and since it is very dialogue heavy, very narrative driven, very lore heavy, it becomes difficult for me to comment or read chats in between because I want to follow the story. It's really engrossing, I would say, and I want to understand how my decisions or whatever actions I take is going to affect and what kind of consequences will I have to face. For that I have to listen to each and every dialogue very carefully, and the fights or the combat part is really very repetitive. It is not that exciting. So since it is repetitive and you cannot just go around and kill enemies just like that, it
is this game is something which is very difficult to comment about simultaneously. You need to focus a bit. Otherwise, you will get killed very easily, or rather, you will miss out certain plot points of the story. You will not fully grasp it entirely, I would say. Yes, you are right. Okay, Privyat. Oh, in Bengali, I hope white sari not get offended. Pata nahi. But the accent was very heavy in whatever language they were speaking. The accent was extremely heavy in that, but it is a good initiative from the Russians, I would say, where they tried in speaking in different languages, definitely different from Ruski. By the way, what bands did you listen yet? किसको पूछ रहे हो? एरी को पूछ रहे हो? मुझे पूछ रहे हो? मैंने तो अपने बता दिए काफी सारे. Burdens you. With whom do you wish to speak? Just know, I cared for her. You seem so troubled by the loss of this girl. What happened to her? It was an accident. A terrible, terrible accident. I see. And how are you feeling, my son? I wish I could forget all this. I have a final question for you, my son. This is of the utmost importance. Ask your question, Vicar. How can this poor soul hear you when you can't even hear yourself and admit your role in this tragedy? I'm so sorry, Mary. I promise to find who is responsible for all this. I'll put an end to this horror. You have been heard, my son, and your burden will lighten if your words are sincere. Go in peace now and live your life in the way she would have wanted. So since the flu is going on, very similar to the COVID situation, so you can't enter inside the church, but you were able to Whatever happened on unburden this block is yourself. between my sister and I. It does not concern God at all. So here I chose not to reveal my details. Can I talk to the vicar just by myself? No, I can't. At least currently. Dorothy Crane missing. She is dead. I know that. Benjamin Palmer. Yes, I need to find him. Where is Benjamin Palmer? Good evening, Doctor. Have you any news of Nurse Crane and her dispensary? It appears the dispensary is now a major source of contagion in Whitechapel. Someone should do something about it, but no one cares. Goodbye, Mr. Dutt. Christina Popa. The other way this week, Joe. Come on, we can sort it out, right? It's not my call, Barrett. You pay one way or another. Please, Joe. How long have we known each other? We even used to be neighbours, for Christ's sake. I prefer not to give you another beating, Barrett.
This is despicable. I can't believe I'm doing this. This is despicable. Darius Petrescu. I helped him get revived from his disease and he's drinking here. Wasting away his health. Whatever he has left. Good evening, Benjamin. Can I help you? I'm afraid not. You don't seem well, Benjamin. Do you need any help? I always feel ill, sir. It's like I'm never right. I can try to help your body heal, sir. But you must stop destroying it. The war destroyed me, Doctor. Okay. Let's talk to him. By the way, Ari, okay. So I'm sorry if I missed some messages. How was walking outside? Burb. We appreciate Russians for this gesture. It's okay. Lol. Let me ask about Nurse Kirane's dispensary. Have you any news of Not recently. Okay, life in London. Personal questions. Nothing here. Let me tell him to read this. By the way, he's recovering. I have found a very interesting letter. Your son planned to prove his worth to the gang by stealing your medicine. Oh, I see. So the little bugger thought he could use his dad to build a reputation. The gang's recruiter was dead when I found him. Perhaps you should take better care of your son. I love my Albert, sir. Believe me. It's just... Well, I'm an arsehole, I suppose. Anyway, thanks for the letter. This is for your trouble. Swanborough cordial. Ingredients: aqua fontis, illa repetita, idem stellata, hydrogen peroxide, excipient, nil alute, miracle elixir. Nice. The Swanborough miracle elixir is a con. That is a known thing, I would say. Who is this guy? And he's having some kind of issue. Yeah. I love loads of genres. Listen to a lot of rock. I like classic rock, like stuff on GTA radio. Bon Jovi, Anthrax, Metallica, the Eagles, Guns N' Roses, etc. I also really like grunge, like Audioslave, Creed, etc. Then I also love techno, deep house, jazz, country, classical, etc. Love music. Hopefully might answer your question a bit. Thanks for asking also, Somnil. Bon Jovi is something that I have listened to, yes. Bon Jovi songs were also quite popular. I forgot about him. You kind of reminded me by talking about Bon Jovi. Thatcher. Oswald Thatcher is in our hospital. Pembroke Hospital. A gun, alcohol, and a bad temper make a terrible cocktail, sir. Goodbye for now. Is Albert nearby? I would like to talk to Albert about this, and then I will go to the hospital. But after having my dinner. I have just been called for dinner. I think so Albert should be somewhere nearby, if I'm not wrong. No, this isn't the place where Albert should be.
It's locked. What's this place? This is Dorothy's place, right? Yes, this is Dorothy's place. No, I don't want to go there for now. Here is Albert. How are you, boy? I'm not your boy, all right? Now piss off. Yeah, Bon Jovi is fun. I also love Colombian music also. I like Gypsy Kings. I recently discovered really beautiful stuff too. I listened to, I think, one Colombian song, Me Emborracharé. I listened to it on GTA radio. Have you heard anything about Nurse Crane and her Then I dispensary? searched for Never that heard of her. song. I learned about Colombian music a lot from Narcos TV show. Okay. Yeah, I had seen the first 2 seasons of Narcos. Goodbye, young man. Yeah, nothing to talk about. I thought there would be. Need to go back to Pembroke. How do I go? Okay, this is the path, it seems. Amazing soundtrack, lol. Gypsy Kings have some amazing soulful singing and guitar. If I remember their name, I will definitely check them out. It ain't human! Kill it! Over there! There's one of them vermin! Over there! There's one of them vermin! That's got out, Okay, I'm back to my place. And pain are precious when binding you to the earth. You. I remember you. Fear be gone. I would harm no child of my making. This is your doing. You made me. Made me this creature. What are you? I am the land. You are our champion. You selected me. Chose me. As shall my children yet to come. What is it you seek? This age is sickly. An ancient poison, an older rage, brewed in a cauldron newly forged. This has something to do with the epidemic. Seek truth, my champion. Defeat the serpent of knowing with iron spur. Yeah. I've had enough of others making decisions for me.
pretending to know how I should feel or behave. So the vampire who made me is some sort of disembodied entity? Or was he just projecting this vision in my mind? Maybe Edgar can help me with this one. Clay Cox, he's healthy. Oswald Thatcher, he is below. Okay. Newton Blight. Hello again, Mr. Blight. I'm eternally great. I will Goodbye, talk Mr. to Blight. you later, Take Mr. care of Blight. yourself. Let me talk to him. Hello again, Mr. Thatcher. Do you feel any better now? Yes. This neighborhood may stink of dog shit and reek of piss, but to me it smells like... 1 minute, guys, I will read your mountain chat. Do you need medical attention? air. Don't get me wrong, sir. I'm grateful for what you've done, but I've never felt comfortable with doctors. I'm certain you have your reasons. But let me assure you, I'm not like other doctors you may have consulted with. It is true. You risked your life to save me, after all. It would be impolite to refuse your counsel. So I will Goodbye, Mr. Thatcher. talk to Try him to later. take care of yourself. Guys, I will continue after my dinner. So give me some time, 20-25 minutes. I will join in and maybe we will stream till what time? Till 10 p.m. or so. Today it won't be too late of a stream. Let me just read all the chats. Let me read it here so it will be faster. Gypsy Kings. Oh, nice. You watched all Narcos also. Yeah, I watched the first 2 seasons. It was really good. Later on, I lost interest after the killing of that Colombian drug lord. I lost the interest. Yeah, that's one of the few shows I actually finished a season or few lol. Was pretty well made. Yeah, it was well made. Definitely. Haha, nice. CM. Wait a minute. We appreciate. उसके बाद बांग्लादेश एके ब्लैक स्नेक आके 9 डांसर्स आउट ऑफ T20 वर्ल्ड कप रिप्लेस बाय स्कॉटलैंड एके शॉर्ट स्कर्ट ये क्या है बट हाँ दे गॉट रिप्लेस्ड वो तो है इवन मे बी पाकिस्तान में गेट रिप्लेस्ड यू नेवर नो इफ दे से दे मे बॉयकॉट द वर्ल्ड कप सर जी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो देख रहा था जिसमें वो कहते हैं जो लोग गवर्नमेंट एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको बहुत कंपटीशन फेस करना होगा अभी अगर जॉब लेने का कोई ऑप्शन बचा है तो वो है अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना लेकिन साथ ही साथ अपना गवर्नमेंट एग्जाम्स का प्रिपरेशन चालू रखे डिग्री से जॉब नहीं मिलता स्किल से मिलता है प्राइवेट में इट इज़ मेनली बेस्ड ऑन योर स्किल्स गवर्नमेंट में डेफिनेटली कॉम्पिटिशन होता है कहीं कहीं पे करप्शन होता है कहीं कहीं पे कुछ चीज़ें उल्टी सीधे बिगड़ जाती है बिकॉज देयर आर टन्स ऑफ पीपल दैट आर अप्लाइंग तो डेफिनेटली इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू गेट सिलेक्टेड Swapnil, I'm just checking out 3 days Grace, some cool rock stuff. Thanks for mentioning. Sometimes I like jamming out to rock stuff also. Oh, that's great. अभी हम घर शिफ्ट कर रहे हैं इसलिए मेरे पेरेंट्स फ़िलहाल ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते शिफ्टिंग के बाद M.Com करूँगा और कंप्यूटर वाला काम भी तब होगा आई थिंक ओके और मेरा टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट भी है इसलिए आई थिंक ये मेरे लिए बेस्ट स्किल्स है और मे भी ये मेरा मेन करियर बन जाए सो एरी विच सॉन्ग डिड यू हियर गाइज आई विल जॉइन इन मे बी 20-25 minutes so if you want to talk then you can talk here as well but I will join after a while Park should replace this
नहीं, पाक फिलहाल किसको रिप्लेस तो नहीं कर रहा है. पाक तो फिलहाल जैसा है वैसे ही चलेगा unless and until they boycott or something. उसके बहुत consequences भी है. So I don't think they will boycott. And if they boycott, maybe Bangladesh will come again into the picture because then they will be put in the group where Pakistan was. You never know. Whatever happens, it may happen. Anyway, be right back, guys. थोड़ा सा इसको चेंज करना पड़ेगा हल्का. This is better. That is, I remember you and me, and how careless we could be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright. Staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us. Like a good drug, never enough. We hook up in my car, driving so far. Play your guitar, you'd show me your art. Let down our guards, think with our hearts. Stare at the stars, we were never apart. Drinking too young, way too much fun. Out in the sun, hoping when it's gone. Took you to prom, dance to our song. Dance all night long till the lights come on. It's too late now, I remember everything. And how careless we got. It's too late now, I remember you and me. And how careless we got. It's too late now, I remember everything. And how careless we could be. 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 Late nights, long fights, it felt right, we were alive. We would go out, we were so loud, we were so proud, we had no doubts. Weekends and weekdays, we'd spend our own way. We were careless, we were fearless, we were reckless, time was precious. We loved to waste time, whiskey and wine, drinking all night, asleep by your side. Finally alive, we would just drive, never arrive. Our journey was live, staying out late, testing our fate, running away. We live for today, young and so bold, never get old. Screw what we're told, we can't be controlled. It's too late now, I remember everything. And how careless we got. It's too late now, I remember you and me. And how careless we got. It's too late now, I remember everything. And how careless we could be. And how careless we could be. And how careless we could be. And how careless we could be.
it's too late now. I remember you and me, and how careless we could be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright, staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us, like a good drug, never enough. We'd hook up in my car, drive it so far, play your guitar, you'd show me your art, let down our guards, think with our hearts, stare at the stars. We were never apart, drinking too young, way too much fun, out in the sun, or rain when it's gone. Took you to prom, dance to our song, dance all night long till the lights come on. It's too late now, I remember everything, and how careless we got. It's too late now, I remember you and me, and how careless we. It's too late now, I remember everything, and how careless we could be, and how careless we could be, and how careless we could be. And how careless we could be. And how careless we could be. Late nights, long fights, it felt right, we were alive. We would go out, we were so loud, we were so proud, we had no doubts. Weekends and weekdays, we'd spend our own way. We were careless, we were fearless, we were reckless, time was precious. We loved to waste time, whiskey and wine, drinking all night, asleep by your side. Finally alive, we would just drive, never arrive. Our journey was live, staying out late, testing our fate, running away. We live for today, young and so bold, never get old. Screw what we're told, we can't be controlled. It's too late now, I remember everything, and how careless we got. It's too late now, I remember you and me, and how careless we. It's too late now, I remember everything, and how careless we could be, and how careless we could be, and how careless we could be. 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 It's too late now, I remember you and me, and how careless we could be. But it's too late now, I
remember you and me, and how careless we could be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright, staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us, like a good drug, never enough. We'd hook up in my car, driving so far, play your guitar, you'd show me your art, let down our guards, think with our hearts, stare at the stars. We were never apart, drinking too young, way too much fun, out in the sun, orbit when it's gone. Took you to prom, dance to our song, dance all night long till the lights come on. It's too late now, I remember everything, and how careless we got. It's too late now, I remember you and me, and how careless we. It's too late now, I remember everything, and how careless we could be, and how careless we could be, and how careless we could be. And how careless we could be. And how careless we could be. Late nights, long fights, it felt right, we were alive. We would go out, we were so loud, we were so proud, we had no doubts. Weekends and weekdays, we'd spend our own way. We were careless, we were fearless, we were reckless, time was precious. We loved to waste time, whiskey and wine, drinking all night, asleep by your side. Finally alive, we would just drive, never arrive. Our journey was live, staying out late, testing our fate, running away. We live for today, young and so bold, never get old. Screw what we're told, we can't be controlled. It's too late now, I remember everything, and how careless we got. It's too late now, I remember you and me, and how careless we. It's too late now, I remember everything, and how careless we could be, and how careless we could be, and how careless we could be. 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 It's too late now, I remember you and me, and how careless we could be. But it's too late now, I remember you and me.
and how careless we could be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright, staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us, like a good drug, never run off. We hook up in my car, driving so far, play your guitar, you'd show me your art. Let down our guards, think with our hearts, stare at the stars, we were never apart. Drinking too young, way too much fun, out in the sun, open when it's gone. Took you to prom, dance to our song, dance all night long till the lights come on. It's too late now, I remember everything, and how careless we got. It's too late now, I remember you and me, and how careless we got. It's too late now, I remember everything, and how careless we could be, and how careless we could be, and how careless we could be. Nights, long fights, it felt right, we were alive. We would go out, we were so loud, we were so proud, we had no doubts. Weekends and weekdays, we'd spend our own way. We were careless, we were fearless, we were reckless, time was precious. We loved to waste time, whiskey and wine, drinking all night, asleep by your side. Finally alive, we would just drive, never arrive. Our journey was live, staying out late, testing our fate, running away. We live for today, young and so bold, never get old. Screw what we're told, we can't be controlled. It's too late now, I remember everything, and how careless we got. It's too late now, I remember you and me, and how careless we got. It's too late now, I remember everything, and how careless we could be, and how careless we could be, and how careless we could be. It's too late now, I remember you and me, and how careless we
Yeah, all day and all night we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright, staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us, like a good drug, never run off. We hook up in my car, drive it so far, play your guitar, you'd show me your art. Let down our guards, think with our hearts, stare at the stars. We were never apart, drinking too young, way too much fun, out in the sun, open when it's gone. Took you to prom, dance to our song, dance all night long till the lights come on. Late now, I remember everything, and how careless we could be, and how careless we could be, and how careless we could be. Nights, long fights, it felt right, we were alive. We would go out, we were so loud, we were so proud, we had no doubts. Weekends and weekdays, we'd spend our own way. We were careless, we were fearless, we were reckless, time was precious. We loved to waste time, whiskey and wine, drinking all night, asleep by your side. Finally alive, we would just drive, never arrive. Our journey was live, staying out late, testing our fate, running away. We live for today, young and so bold, never get old. Screw what we're told, we can't be controlled. Late now, I remember everything, and how careless we could be, and how careless we could be, and how careless we could be. But it's too late now. I remember you and me, and how careless we could be. All day and
and all night we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright. Staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us. Like a good drug, never enough. We hook up in my car, driving so far. Play you guitar, you'd show me your art. Let down our guards, think with our hearts. Stare at the stars, we were never apart. Drinking too young, way too much fun. Out in the sun, or in when it's Okay, we are back. Let me see. Mercy B. Swapnil, oh, I checked out Animal I Have Become. What will happen to people who have taken membership of Kai Cenat after he quit? आफ्टर ही क्विट मतलब क्या स्ट्रीमिंग वगैरह बंद कर दिया क्या उसने? आई सेनाट वगैरह शायद इंडिया में नहीं आया ना? I don't think he has come to India. I was in the tomb. Hideouts are often located in isolated places. Find them to unlock new safe places to rest. Let's continue. Okay, I wasn't able to talk to these guys. Let me see. Hello again, Mr. Blight. Good evening, Dr. Reed. You doing your rounds as usual? You are always welcome at the Pembroke Hospital. As a former officer, I'll be honored to welcome a fellow veteran. I'm not giving up on bringing Oswald back to the hospital. I just need to convince him that he needs some help. Perhaps he needs to reach that decision by himself. Could you speak to him? He doesn't usually listen to doctors, but perhaps because you've been through it, you can talk him round. Why do you stay here now that Mr. Thatcher's back? It's complicated. Since the war, Oswald's been really nervous with the idea of entering any hospital. And me, I've got my own issues. Can you speak about them? Rats, sir. Even seeing one, they turn me. Just want to run. It's that fear that stopped me from going after Oswald when he left. What can you tell me about the war, Mr. Blight? If you want to speak about it, of course. War was... well, you know, sir. The stench of death everywhere. By the way, who are joining Your in, mates welcome lying back. Bleeding in the mud. Just praying to make it through and get home.
Bloody nightmare. Bloody nightmare. Did you know Oswald Thatcher before the war? No. We met in the battlefield. I think we were in the same boat to France. We've stuck together ever since. I fought in France, too. I served as a field surgeon, but it was not uncommon to repel an assault, especially at night. Yeah. The first time I was wounded, I had to protect the infirmary from hostiles. Twice. What caused your phobia of rats, Newton? It happened last year following an artillery attack. I was trapped for 2 days in a hole under 2 dead soldiers. And there were rats. Go on. They started eating me as soon as I dozed. Gnawing at my ears, my fingers, lips. I couldn't move. Couldn't call for help. I see. No, you don't. You have no idea what it is to wake up buried under bodies. Fucking vermin eating your flesh. Oswald. He found me and saved me. Okay. Goodbye, Mr. Blight. Okay, I need keys to open this. It's locked. Here is Oswald. Hello again, Mr. Thatcher. Do you feel any better now? Yes, this neighborhood may stink of dog shit and reek of piss, but to me it smells like the purest mountain. Do you need... Don't get me wrong, sir. I'm grateful for what you've... I'm certain you have your reason. It is true. Mr. Thatcher, do you have a job? No. Since I came back from the war, I spent most of my time and energy just trying to forget. I understand what you mean. I was a soldier too. No. Nobody can truly understand what I've gone through. Why were you locked in that sewer? What happened? I went by the canal after an argument with a friend. Got chased by these fucking wankers and had to barricade myself in, despite my claustrophobia. Why did you run? What was the reason for your argument? Newton wanted me to go to a hospital, but I can't stand being closed in. Makes me feel like I'm suffocating. Tell me about your claustrophobia. Has anyone given you an official diagnosis? That's what the bloody doctors said. But I don't want to go to a hospital to get checked again. I'll deal with it my own way. New hint available. Good evening. Why were you locked? I went by... Why did you... Newton want... Tell me about your... That's what the bloody doctor... Oswald, why did you not go to the Pembroke Hospital to seek medical help? I don't trust doctors. All they care about was their careers and processes. I won't be locked in any room again. By anyone. Your fear of being trapped is not going to go away by itself. You need professional help. I've seen enough butchers in white coats to last a lifetime. Hospitals reek of chemicals and death. What I need is fresh air. Do you want to talk about why you have this fear of being enclosed, Mr. Thatcher? No, I really don't. An irrational fear like yours is usually rooted in a specific event. Perhaps it would help to talk about it. Well, Doctor, take a guess then, if you're so interested in my case. When I rescued you,
You expressed joy at seeing the sky again. So I'm inclined to believe you were trapped or buried somehow. Maybe during the shelling. Jeez, you're good, Doc. You're really good. Go on, please. Tell me more about it. Newton and I were trapped in a circulation tunnel after an artillery attack. We were buried alive for several days without ever knowing if we'd be found. Newton Blight. Oswald, tell me about what happened when you were buried in that tunnel with Newton. It was more than dark. It was black as pitch. Hours seemed like days, and days like months. Oh, the terror, the shameful thoughts. Lord have mercy. What you endured was terrifying. It would have completely destroyed weaker men. It did not destroy Newton. Shameful thoughts. Tell me about them. At some point, I don't remember which day, but when I thought we'd never be rescued, that this would be our end, I thought about... Say it, Mr. Thatcher. If you ever want to heal, you have to say it. Yeah, I thought about what I could do to survive. Just for a few more days. I thought about killing Newton. Killing and eating him. The man I fucking love. Mason Swanborough. Tell me about your true feelings for Newton. I love him. I'm not ashamed to say it. He's the best thing that ever happened to me. I can't imagine life without him. Why should you be ashamed? I'm not, I said. But Newton sees it differently. I admire your honesty. It takes courage to stand up to society. The world needs people like you to create change. Courage is what we needed in the trenches, looking death in the face every day. I speak plain. I speak my mind. Have you always been this straightforward? All I know is, before you saved me by the sewer, my only regret was I wouldn't be able to hold or kiss Newton again. I love him, that's all. Goodbye, Mr. Goodbye, Mr. Thatcher. Hello again. Good evening, Dr. Reed. You and Oswald were buried alive during the war. Tell me about it. Yeah. It was last summer. A shell hit our trench and we were buried for a week. Oswald seemed far more traumatized than you by the event. It wasn't the first time it happened to me. Surviving it again gave me strength. You believe that? How did you survive for a week? Luckily for us, there were rations and water in the tunnel. It was an outpost, see? Since then, Oswald's not keen on being inside for too long. How do you feel about Oswald, Thatcher? You are more than friends, aren't you? I love him. I love Oswald. We knew we wouldn't survive the war without each other. But I am terrified, Doctor. What frightens you so much? What if people find out? Oswald says I'm ashamed, but it ain't that. It's more, well, you know, I never thought I'd love a man. Hello Jagannath, welcome to stream. Sir, I am there. Then prove that you are not there. क्या समझा नहीं. By the way, Jagannath, thank you so much for joining in. कैसे हो?
Enjoy your love. And enjoy life as long as you can, Mr. Blight. Don't let anyone tell you who you should love or how you should love them. I appreciate your kind words, sir. But it ain't that easy. It's all so new to me. Goodbye, Mr. Blight. ठीक है. ये सब तो ओपन डी है. The patients are not fools. They know we are overwhelmed by this horrifying epidemic. डायरेक्ट इसमें आता. Sir, I am the bad question. Then you must be the bad answer. जल्दी जल्दी लिखो. ऐसा आधा अधूरा लिखते हो तो फिर आधा ही समझ में आता है. पूरा एक बार में ही लिख दो ना आराम से. ब्रेक ब्रेक करके लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा. What I meant to say that I am outside my brain. अरे पूरा कंप्लीट करो ना. आधा आधा सेंटेंस लिखोगे तो फिर समझ में भी नहीं आता किसी को भी. तुम भी बाद में ऐसा 2 दिन के बाद पढ़ोगे तो तुम्हें लगेगा कि ये क्या लिखा था फिर. We are the guardian of justice. No, you and the problem are one. अरे नहीं. Violence breeds more violence. ये कौन God है? protect us. You've got a leech in the hospital. Yes, my hospital. My mission is to heal while you go about warring. You've set the table for a snake. I wonder why there's venom in your food. I'm growing tired of your song. You're a woodsman, McCallum, not a doctor. Return to your hunt. Remember, I've a good nose for machinations. I can flare the scent at a mile. You can't hide from the god. Leave him, Jonathan. This is sacred ground. Neutral territory. And I just had the carpet cleaned. By the sacred stole, this is very bad news. Bad news indeed. चलिए ना डायरेक्टली से बात कर लेते हैं फिर. In conclusion, I want you to do your comedy so that I can learn. वैसे सिचुएशन लेके आओ फिर. ये ऐसे. Only. एक मिनट है गाइस. What happened? The hospital has been attacked. We have injured patients, at least one dead and several missing. This has spiraled out of control. Even the most infirm are asking to be allowed to return home. We cannot have the people lose faith in this institution. This hospital is their only hope. Of course, you're right.
But we cannot afford a public scandal. It would ruin us. We must restore order, and quickly. You mentioned a dead patient. Who is he? She, Jonathan. She was Miss Harriet Jones. I found her room like a slaughterhouse. Blood everywhere. The duty nurse is taking care of the mess. Very well. I'll help you. I know this place means something to you. I have noticed how you suppress your appetite when around the staff and patients. You need to know you can trust me, Edgar. I do, dear fellow, I do. Please then, tell me. Sean Hampton, the man we thought we'd saved at the docks. It seems he was infected after all. So Hampton became more beast than man. Exactly. And now Guard of Prewen suspects the hospital of vampire activity. Do you realize what that could mean for us? Do you really believe they would come for us here? In such a public venue? McCullum is a fanatic. The Guard will stop at nothing. You don't know what they're capable of, Jonathan. Very well. Since I brought Mr. Hampton here, I will put an end to this. ये शॉन हैम्पटन वाला शॉन हैम्पटन कौन है? Wait, let me check. शॉन हैम्पटन, अरे ये वो जो कुछ कम्युनिटी का प्रीस्ट वीस्ट था कुछ. Sean Hampton lives and breathes for the well-being of his flock. There's no other place he would go but the docks. Let's see. Oh, Jonathan, I cannot believe my eyes. Poor woman, butchered by some savage scowl. Yes, and I'm afraid I'm at least partially responsible. The man, the Scowl, I brought him here. Jonathan, how could you say such a thing? Forgive me if I feel despondent, for there seems to be no end to the suffering and death that surrounds us. I'm always here for you, Jonathan. What do you know of Ascalon? I was threatened by a creature, a vampire in Whitechapel, stating I had to obey the law of conduct. What more can you tell me about him? He was bigger than a man. 9:45. The time though 9:45. वाह वाह अद्भुत है एकेबारे কোন আসলে কি হয়ে যেত আমি বুঝতে পারি না. Huge, in fact. He seemed to radiate violence. I thought he was going to tear me apart. Then he vanished. Fergal, the executioner of Ascalon. You were fortunate he was not after you, but rather out doing his master's bidding. What is Ascalon? The Ascalon Club are the most powerful vampires in Britain and exert tremendous influence. Take my advice and stay well away. I have experienced a certain difficulty when faced with holy symbols or trying to enter religious buildings. Have you? Now that's quite a question. I don't know why, but yes, it has happened to me. Is this a sign? The hand of God in action? Are we repellent unto heaven? I don't have the answers, Jonathan. But I believe superstition and magic is just fact awaiting the lens of science. Aren't you frightened? Very little scares me, my dear.
To be compelled to avoid symbols of faith does not concern me. Have you embraced this woman, like the other patient, this Mr. Renfield? Her name was Amelia. And no, I did not kill her. I vowed a very long time ago that I would never take another life, unless they ask. Is there sufficient vitality in the blood of the sick and dying patients? Yes, Jonathan. The hunger gnaws at me every waking hour. Frankly, I'm starving. Temptation surrounds us. Rich, vital. How can you resist? Over the years, any pleasure I once gleaned from feeding is long gone. I drink for sustenance. And though I still thirst for more, I restrain myself. Thank you, my lady. ठीक है, अभी जो सैड लाइफ होने वाला है उसका देखेंगे. What can you tell me about the recent commotion in the hospital? All I know is I ain't letting anyone rip my throat out in my sleep. I found myself a nice blade, Doc. I'm ready. इसका तो सारा हो गया है. I'll leave you. Jesus, I've never seen so many people dying at the same time. इनसे पूछ के देखते हैं, बात करके देखते हैं. Good evening, Doctor. Dr. Reed, any... Can you tell me anything about the recent commotion in the hospital? It's a tragedy, pure and simple. The hospital is meant to be a safe haven to all. We failed the people who trusted us with their care. Do you think I should not have brought Mr. Hampton back here? It's not your fault. You rescued that poor soul. It was the Christian thing to do. But we should have noticed his instability. Sad life. Goodbye, Dr. Tippett. Goodbye, Dr. Tippett. Where exactly is that guy? Docks में जाना पड़ेगा. Okay. ठीक है, चलेंगे. डॉक्स का सेफ रास्ता तो पता है हमें वैसे. नीचे से ही जाता है. इसको भी मारता हूँ. क्या फालतू की रही है.
दूसरा वाला आके पूरा बिगाड़े जाता है। चलो किधर जाना है? हाँ ये ठीक है। ट्रेन वगैरह की साउंड आ रही है। Shilling. Limehouse Dock. कुछ बचा तो है नहीं। बूथ डिग्बी इधर है। ट्रेन की आवाज आ रही है। Dog's fault, they say. Then the gangs, the epidemic. Good evening. Hello again, Doctor. Can I see what you... As long as you have... Good resale value. अरे हाँ, एक मिनट मैडम। Good evening, Miss. Hello again. Hello again. I'm looking for Mr. Sean Hampton. Do you know where I could find him? The sad saint? I heard he was mugged or something. Yes, he was. But he left hospital recently. You don't say. Well, I suppose it's good news for the homeless and the useless. Homeless Ask them, and they the must know useless. something. Goodbye. डिग्बी को भी पूछ के Without देखता the हूँ। wet boots keeping things straight, these parts would be running You again. completely What do you apart. want? Tell me about the man you killed, Booth. What happened? One of us had been killed, so we had to retaliate. That's the whole story. There has to be more to it than that. No, really, one of us got killed, so the killer had to die. That's how things have always been done round here. No one gives a shit. Are you so heartless that you could pull the trigger and kill someone without even blinking? Have you looked around recently? Do you really think one more body will make a difference? Do you know Edwina suspects you to be unfaithful? Edwina's the one who asked to be called Mrs. Cox, even though Clay hadn't touched her for such a long time. You have not answered my question. She's a passionate woman. I've no doubt she'll shoot me down if I ever betray her, but that's not going to happen. I love her as she is. Okay. Do you know where I can find Sean Hampton? I need to talk to him. The sad saint. Why on earth do you want to talk to him? He was one of my patients at the Pembroke Hospital. Oh, yeah. I heard the poor bastard had been abducted by some cunt. You better ask Tom Watts. He knows Sean Hampton well. Goodbye, Mr. Digby. Mark my words, miss. These murders are the work of a vampire. A vampire? Whatever do you mean? I'm a tracker of these creatures. Not a drop of blood left in his body.
This is the work of a vampire. For if the sewer dog is back and hunting all these poor folk, he needs a catching. A sewer dog? What's it look like? It's an old story. A monster with daggers for teeth and icy claws. He comes of a sudden, nighttime, claiming innocence, then vanishes. Teeth, claws, murders by night? Ichabod Your Crane. sewer dog is my business. He's the kind of prey I hunt, milady. Good evening, sir. Have you witnessed any suspicious activity or strange events recently? And what do you define as a strange event? More to the point, who are you? My name is Ichabod Throgmorton, vampire hunter extraordinaire and warden of the East End. A vampire hunter? Really? I know what you're thinking. I'm just another lunatic howling at the moon, but I'm not. The bloodsuckers exist, and they're close. Mr. Throgmorton, I'm Dr. Jonathan Reed. I'd like to hear more about these vampires you're hunting. A man of science? Well, I'll be glad to enlighten you. What can you tell me about... Did you hear about what happened to Jack Gillingham? Poor boy. It's a shame I wasn't around to protect him. It's impossible to protect everyone. The violence seems endemic in this part of town. But it's my duty. I am convinced Jack Gillingham was killed by a vampire. These evil rodents are spreading like a plague. Believes vampires have killed. Okay. So, how exactly are you protecting these people? I'm curious. I patrol late at night, investigating anything unusual. I try and encourage people to stay indoors, but people are careless. Can I help in any way? Actually, yes. I plan to put up posters to alert the population to the vampire threat. Are you asking me Hello, to sir. paste posters about vampires around the docks? If you wouldn't mind. If you did that, then I can focus on my patrols. How do you identify a vampire? It's simple, really. They can't stand daylight. They're afraid of garlic and holy symbols. They also cannot enter a house without being invited. Have you ever killed one of these creatures? Yourself? By the way, welcome back, Of course I Samarth. have. What kind of question is that? It's a dirty business, believe me. Have you heard of the Guard of Priwen? Of course. They're dedicated hunters. A little militant for my taste, but they do let anyone join. क्या बात है? Were you ever tempted to join the Guard yourself? I did think about it, but I'm more of a silent hunter. They're more of a sanitary militia. So you hunt alone? That sounds risky. Risky. Vampires are just like every other predator. They hunt when they're hungry and follow certain patterns. It's just a matter of observation and patience. क्या बात है? क्या बात है? I'm मैं looking for पूछ रहा Sean हूँ क्या Hampton. बात है? Can you help me, Mr. Throgmorton? The sad saint? He should be at his night asylum at this hour. But I cannot tell you how to find it, sorry. Really? Why is that? It's nothing personal, Doctor. I'm sure your intentions are good, but people who sleep there, they have plenty of reasons to hide. I could make you tell me, but I respect your refusal. You really believe Sean is a saint, don't you? All I will say is this. Gossip has it that when he was a child, he was molested. By a priest of all people. Funny thing is, though, it only strengthened his faith. Maybe at least you can tell me who could help me find him. Tell you what, go and chat with Tom Watts. He's a bartender and good judge of character. If he talks to you, then it's fine by me. ठीक है.
अरे सर जी वेलकम शेलकम करके पर या ना करो. यो सर आई एम बैक. वेलकम बैक. थैंक यू वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग इन गाइज. चलो टॉम वॉट से बात करेंगे हम. Goodbye. मिस्टर थ्रॉगमॉर्टन. तो इनसे भी बात करके Good देखते evening, हैं. Mr. What? Oh, you're that doctor. I'm looking for Mr. Sean. I really don't know. I heard he'd been abducted. I don't know. Who could tell me then? About the sad saint. Goodbye. थोड़ा स्किप कर रहा हूँ क्योंकि एक ही डायलॉग है. You still working at this hour? That's what I call dedication. That's why I call dedication. Miss Cavendish, would you be willing to help me locate Sean Hampton? You better ask Tom, sir. Why not answer me directly? We respect the privacy of our customers here, sir. Only Tom can decide who to speak to and what he'll say to them. Goodbye. टॉम से बात करते हैं. सब टॉम 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 ही कर रहे हैं. Welcome back, Doctor. What can I do for you? Tom, I need to find Sean Hampton as quickly as possible. I've been told you could help me. I heard the sad saint was recovering at Pembroke Hospital. Did he leave or something? I believe he returned to his flock. Can you confirm that? Oh, I bet you're right. Sean can't help but worry about the poor and sick. Oh, I guess it has something to do with what happened to him as a baby. Please, tell me. Well, I don't like to gossip, but I heard that the sad saint was abandoned as a baby in front of a Catholic orphanage in Dublin. It would explain his faith and need to help everyone. Sure. You sir, okay, I'm back. The important thing is I find him quickly. Why not try his night asylum? He takes care of those who need a meal or a roof there. Where is it? It's in an old warehouse, northwest of here. Just follow the bank to the west and go north when you reach the end of the pier. ठीक है, धन्यवाद बताने के लिए. Goodbye, Mr. चलते हैं. Follow the banks. फाइट वाइट होगा क्या यहाँ पे? अच्छा इसके अंदर जाना है. Another disgusting call, did it? Don't you think? Don't think so. Wounds are clean. It's methodical. A freaking vampire, then? I can't say, but whatever did this carefully avoided the archers. We'd found ourselves a bloody archers. बट यहाँ पे चूहे हैं क्या? हाँ चूहे हैं. मुझे थोड़ा खून दे दो चूहो. This is despicable. I can't believe I'm doing this. This is despicable. It's locked, all right. I have this thirst for blood. Seems like the guard of Prewen is on Sean Hampton's trail too. Want some of this? That's gonna hurt! Killing's all you deserve! Snap it, monster! I'll send you. Steady, boys, we've got
boys! Want some of this? Die, I'll kill you! I hate leeches! Killing's all you deserve! Oh, that's Come on! I hate leeches! I'll kill it! Burn it, boys! Killing's all you deserve! Put an end to you! Crush the leech, boys! Die, beast! Killing's all you deserve! Burn it, boys! Want some of this? Send you to hell! Die, leech! You leech! You killing! Burn it, boys! Want some of this? Bloody dry! Send you to hell! Die, beast! Want some of this? I'll kill you! Die, beast! Crush the leech, boys! You leeches need killing! Bloody monster! Killing's all you deserve! Burn it, boys! Die! Want some of this? Right. I'll send you to hell! Crush the leech, boys! Killing's all you deserve! Back in the grave! I'll send you to hell! Die, vermin! You leeches are killing! Crush the leech, boys! बहुत बंदे हैं इसके लिए मुश्किल होता है. Let's pin it down! Killing's all you deserve! Leeches are killing! You're mine! Burn it, boys! Want some of that? Kill you! Killing's all you deserve! You leeches need killing! Burn it, boys! Mine! Want some of this? Let's pin it down! Crush the leech,
leech, boys! I'll send you to hell! Die, vermin! I'll put an end to you! Want some of this? Die, beast! Burn it, boys! Die, vermin! You're mine! I hate leeches! Die, beast! Die, vermin! I hate leeches! Burn it, boys! Die, vermin! Mine! I'll send you to hell! Want some of that? Crush the leech, boys! You leech killing! Die, vermin! Bloody monster! Crush the leech, boys! I'll send you to hell! I'll kill you! Burn it, boys! You leeches need killing! Die, vermin! Killing's all you deserve! बड़े वाले को जब तक नहीं मारूंगा कोई फायदा नहीं है. Killing's all you deserve! I'll kill you! I'll send you to hell! Crush the leech, boys! Want some of that? I hate leeches! Killing's all you deserve! Burn it, boys! Die, beast! Bloody monster! Crush the leech, boys! You leech! Let's pin it down! You leeches need killing! Die, beast!
यार कितना डिफ़िकल्ट कर दिया इन्होंने फालतू का। सर जी वैसे मैंने जो कंप्यूटर कोर्स के बारे में बोला कि मुझे सब कुछ सीखना है फ्रॉम लेवल 1 to 10, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैंने बहुत सारे चैट्स लिखे थे। क्या लिखे थे? मुझे आया नहीं वैसे वो वाले चैट्स। कौन सा कंप्यूटर कोर्स कर रहे हो? पहले कुछ लिखे थे शायद, मैं वो भूल गया हूँ। Want some of this? भाग। छी, फालतू फाइट है, फालतू फाइट है। इसका कॉम्बैट बहुत गंदा है, बहुत गंदा है। एक ही चीज रिपीट 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 करते हो। भाग। कोई वैरायटी नहीं, कुछ नहीं। और आग का क्या रेंज दे के रखा है इन्होंने। कहाँ पे है? किधर फाइट हो रही है? He's dead! No! क्या? क्या बदतमीजी है भाई। ये मैं कौन सी जगह पे आ गया हूँ कि यहाँ पे मुझे ये 20 से फाइट करना पड़ रहा है। एक तो लेवल भी इनके हाई हैं बहुत। वो जानबूझ के किया है। लेवल अगर कम चाहिए तो यू नीड टू मेक श्योर दैट यू किल पीपल। एक मिनट। हो गया यहाँ पे। अरे ऊपर देख लो, चैट्स मैंने लिखे हुए हैं। ऊपर किधर हैं? वो तो तुम शिफ्ट कर रहे हो, वो सब लिखा हो। उसके बाद कुछ आया नहीं मुझे। ये जब बिजी है तब घुस जाऊं क्या? हाँ अरे मैं ऐसे गलत फंस गया कि सीधा 2 बार पड़ गई मौत। बहुत पहले टैली का तुमने बोला था, मुझे टैली वाला याद आ रहा है। उसके बाद और कोई कंप्यूटर कोर्स वगैरह का तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। अरे मुझे क्यों मार रहा है भाई?
थोड़ा सा गलत अप्रोच जा रहा है, वहाँ पे मुझे जल्दी डॉज करना चाहिए था। आ गया मैं, नींद लग गया था। तो फिर सो जाओ, फिर क्यों ज़बरदस्ती मत जागो। ये मैं बहुत बड़ी गलती करता था, नींद आ रही है फिर भी जाग के रहना है। वैसे पहले कम होता था, मतलब कॉलेज डेज में कम ही होता था ऐसा, बट एग्ज़ाम टाइम पे बहुत देर तक जाग जाग के पढ़ता रहता था, तो उस केस पे नींद आ रही है फिर भी पढ़े जा रहा हूँ। Christ, he's dead! Filthy piece of shit! नहीं छोड़ो, इसको छोड़ता हूँ, उस बंदे को पकड़ता हूँ जिसके साथ लंबा बॉस फाइट चला था। कोई बात नहीं, दोबारा लिख देता हूँ। मैंने कहा था कि मैं एक कंप्यूटर कोर्स करना चाहता हूँ जिसमें सब कुछ बेसिक्स टू एडवांस सीखना चाहता हूँ। फ्रॉम लेवल 1 to 10 मुझे सब कुछ सीखना है कंप्यूटर का। ऐसा करके कोई कोर्स नहीं होता। कंप्यूटर कोर्स 1 to 10 लेवल क्या होता है? लेवल 1 to 10 तुमने तो वही एक ही चीज़ तो लिख दी सर जी। वैसे मैंने जो कंप्यूटर कोर्स के बारे में बोला कि मुझे सब कुछ सीखना है फ्रॉम लेवल 1 to 10, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैंने बहुत सारे चैट्स लिखे थे, उसके बाद तुमने वही चीज़ लिखी। कोई बात नहीं, दोबारा लिख देता हूँ। मैंने कहा कि मैं एक कंप्यूटर कोर्स करना चाहता हूँ जिसमें सब कुछ बेसिक्स टू एडवांस सीखना चाहता हूँ फ्रॉम लेवल 1 to 10। मुझे सब कुछ सीखना है कंप्यूटर के बारे में। नहीं पॉसिबल है। कंप्यूटर के बारे में तुम्हें क्या सीखना है? मोटा मोटी देखने जाओगे तो 3 भाग में तुम कंप्यूटर के बारे में सीख सकते हो। एक होता है हार्डवेयर एस्पेक्ट अगर तुम्हें सीखना है, दूसरा होता है सॉफ्टवेयर एस्पेक्ट सीखना है, तीसरा होता है नेटवर्किंग एस्पेक्ट सीखना है। हार्डवेयर वाला पूरा उसका एक अलग वे में होता है, उसमें तुम्हें हैंड्स ऑन तुम्हें बहुत कुछ जैसे पीसी बिल्डिंग वगैरह का जो प्रोसेस होता है, तो उसमें हर एक चीज़ में उसके अलग अलग स्पेशलाइजेशंस होते हैं। जैसे मदरबोर्ड वगैरह के ऊपर तुम्हें अगर काम करना है, उसका एक स्पेशलाइजेशन एक अलग होता है। ठीक है, रैम डेवलप करना भी, वो सिलिकॉन चिप और वो सब डिज़ाइनिंग वो सब एक पार्ट होता है। तो हार्डवेयर का एक पार्ट हो गया। सॉफ्टवेयर में तो मतलब हज़ारों सॉफ्टवेयर है। तुम कौन से सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन वगैरह में काम करना चाहते हो? प्रोग्रामिंग करना है, डिज़ाइनिंग करना है, डीबगिंग करना है, तो वो फ्रंट एंड में काम करना है, बैक एंड में काम करना है। तो हज़ारों चीज़ें हैं और नई नई चीज़ें आती जा रही है, नए नए लैंग्वेजेस वगैरह आते जा रहे हैं। और जो तुम अभी सीख रहे हो, ज़रूरत नहीं है कि 1 साल बाद भी उसका कोई ज़रूरत पड़ जाए। हो सकता है तुमने जो अभी सीखा है वो 1 साल के बाद पूरा वर्थलेस वेस्ट हो सकता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर एस्पेक्ट हो गया। तीसरा हो गया तुम्हारा नेटवर्क वाला एस्पेक्ट, जहाँ पे नेटवर्क मेंटेनेंस, नेटवर्क सिक्योरिटी, नेटवर्क डिज़ाइनिंग, नेटवर्क लेआउट, वो सब होता है। तो एक कंप्यूटर कोर्स लेवल 1 to 10 एडवांस ऐसा करके कोई कोर्स ही नहीं होता है, सही बताऊँ तो। ठीक है, तो तुम कंप्यूटर्स में क्या सीखना चाहते हो? कौन सा स्पेसिफिक ऐसा टॉपिक है जिसमें लग रहा है कि हाँ ये टॉपिक सीख के कुछ वर्थ इट लग रहा है, जो मैं अपने काम में उसको अप्लाई कर पाऊंगा? और अगर किसी ने तुम्हें ऐसा बोला है कि मैं तुम्हें कंप्यूटर कोर्स सिखा दूंगा जिसमें लेवल 1 to 10 सिखा दे, एक तो लेवल 1 to 10 होता क्या है डिफाइन करना पड़ेगा सबसे पहले। लेवल 1 क्या है और लेवल 10 क्या है, और बीच में ये जो लेवल्स आएंगे उसमें क्या ऐसा सिखाने वाले हैं, कितने दिनों में सिखाने वाले हैं। लोग 3 साल का 4 साल का डिग्री कोर्स करते हैं, 2 साल का और फर्दर मास्टर्स करते हैं, उसके बाद पीएचडी करते हैं। इतने 8-9 साल 10 साल की पढ़ाई वगैरह कर लेते हैं, जिनको बहुत ही इन डेप्थ में करना है। तुम्हें कितने दिनों में, कितने महीनों में, कितने सालों में क्या क्या सिखाएगा, कितने पैसे चार्ज करेगा, बहुत फैक्टर्स आ जाते हैं भाई। ऐसे ऊपर ऊपर से बोलोगे तो मुझे कुछ नहीं समझ में आएगा। मुझे क्या, किसी को भी नहीं समझ में आएगा।
और कोई अगर बोलता है ना अरे मैं तुम्हें कुछ महीनों में एक महीने में एक लेवल सिखा के पूरा सिखा दूंगा कंप्यूटर का, बेवकूफ़ बना रहा, सीधी सीधी बात बोल रहा हूँ। उसको सिर्फ पैसे से मतलब है, उसको तुम्हें कुछ खास सीखने वाले उसमें है नहीं तो 4-4 साल का डिग्री वगैरह कोर्स क्यों करेंगे, इंजीनियरिंग के कोर्स या बीएससी वगैरह क्यों करेंगे। इतना ही अगर आसान हो तो फिर दूसरे कोर्सेज करके कंप्यूटर्स कर लेंगे साइड बाय साइड। धुरंधर का अनकट सीन्स रहने वाला है, आज पब्लिश हो जाएगा। आई थिंक नेटफ्लिक्स पे 30th लिखा था, नेटफ्लिक्स पे आने वाला है। क्या बात कर रहा हूँ, देखूंगा फिर, कल देखूंगा, कल नहीं परसों देखूंगा धुरंधर। इसको छोड़ते हैं। इसको पकड़ते हैं। Another dis. Watch yourselves! There's one of them! Want some of that? Yeah! You're mine, vermin! Yeah! Die, please! I'll kill you! भाई उसके सामने भी उसके पास डिफेंस है करने के लिए, आग भी इतना दूर दूर का रेंज है, क्या है ये कुछ भी भाई। गलत सीन चल रहा है। Another disgusting ghoul did it, don't you think? Get them weapons ready! We found one! All of you bloody leeches need killing! अरे इसको मार। अरे भाग हट।
what you deserve. Get a taste of this! I'll send you back to the fucking grave! Run for leaks, boys! I'm sending you off! Die, beast! Want some of this? Oh, you bloody leeches! अरे नहीं 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 I hate leeches. नहीं 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 अरे जाने दे Die, vermin! Fuck is lost! Finally, bhai. The wounds on this corpse are deep, the result of rabid rage. If this is Sean's doing, he's become a murderous beast.
हाँ नेटफ्लिक्स पे अभी कमिंग सून लिख दिया है एंड आई थिंक कल से पूरा सोशल मीडिया पे एडिट बनने वाला है 4K में. रॉयल एनफील्ड रिपोर्टेड हिज इट्स हाईएस्ट एवर सेल्स इन 2025 विद ओवर 1 मिलियन बाइक्स सोल्ड. रॉयल एनफील्ड का तो कोई शेयर वेयर है नहीं वैसे. हार्ले डेविडसन वगैरह होता तो फिर उसका देख लेता. ये कैरेक्टर इतना हेल्पलेस जैसा क्यों भाग के मर रहा है? कैरेक्टर हेल्पलेस इसलिए भी है क्योंकि बहुत अंडर लेवल्ड है. इसको लेवल अप करने के लिए मासूम इंसानों को मारना पड़ेगा. मासूम इंसानों को भी मार सकते हैं और गैंगस्टर वो सब भी मिलते हैं और कुछ कुछ ऐसे भी रहते हैं जिन्होंने एक्सीडेंटली कुछ गलत काम किया है. तो बेस्ड ऑन योर चॉइसेस तुम चाहिए तो मार सकते हो लोगों को. जितना मारोगे उतना तुम्हारे पास पावर्स आएंगे, मतलब स्किल्स तुम बहुत जल्दी डेवलप कर पाओगे ऑन द बेसिस ऑफ दैट. और जितना ज़्यादा स्किल्स डेवलप करोगे उतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाओगे, तो फाइट्स बहुत ईजी हो जाएंगे. अगर तुम किसी को नहीं मारोगे, फिलहाल मैंने किसी को नहीं मारा है, तो किसी को भी नहीं मारा है तो मैं थोड़ा अंडर लेवल्ड रहूँगा, जिसके चलते फाइट्स मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो जाएंगे और ये बहुत रेपिटेटिव हो जाता है. वही एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस कॉम्बैट का ये है. इसमें कुछ कुछ और एबिलिटीज़ भी हैं बट उसके लिए वही लेवल अप करना पड़ेगा. अभी फ़िलहाल कुछ मौका नहीं मिला है कि मैं कोई बंदे को मारूं और लेवल अप कुछ कर पाऊं. ऐसा कोई इंसेंटिव भी सही बोलूं तो नहीं मिला है एक्सेप्ट फॉर दीज फाइट्स बीइंग रेपिटेटिव. खाली वही एक चीज़ है. अरे आई मीन लैंग्वेज लर्निंग, एक्सेल, डेटा एनालिसिस, डेटा साइंस और एआई टूल्स के बारे में, क्योंकि इन फ्यूचर एआई लर्निंग बहुत काम में आएगा. ये सब सीखना है मुझे. इवन मेन डिफरेंट कंप्यूटर क्या है, ऑपरेशंस के बारे में जानना है. लैंग्वेज लर्निंग मतलब कौन सा लैंग्वेज लर्निंग? लैंग्वेजेस तो बहुत हैं, सी प्लस प्लस, जावा. फिर अगर तुम वेब पेज डिज़ाइन करोगे तो जावा स्क्रिप्ट, CSS और उसके और भी ऐसे कोडिंग के हैं. ऊपर से कौन से सॉफ्टवेयर में तुम काम करोगे, जैसे VB ये C#.net वगैरह उस पर काम करोगे, या तुम्हें स्क्रैच से जावा स्क्रिप्ट वगैरह वो सब में सीखना है. जावा में भी जावा होता है, एडवांस जावा वो सब आ जाता है. फिर डेटाबेस में जाना है तो डेटाबेस के ओरेकल में जाके उसमें तुम्हें उसका क्या बोलते हैं, वो कौन सा लैंग्वेज उसका सीखना पड़ता है, SQL वगैरह बोलते हैं उसको, क्वेरीज बनाने के लिए. उसका एक और एक रहता है माइक्रोसॉफ्ट में, एक एक्सेस करके रहता है ना, वो डेटाबेस क्रिएशन के लिए रहता है. डेटाबेस क्रिएशन, मेंटेनेंस, वो सब का. डेटा एनालिसिस किस पे कर रहे हो? R प्रोग्रामिंग वगैरह उस पे होगा, SPSS, SAS, कौन सी चीज़ों में? डेटा साइंस का भी कौन से सॉफ्टवेयर्स यूज़ होंगे उसमें? क्योंकि महंगे सॉफ्टवेयर्स रहते हैं. अगर प्रॉपर सीखने जाओगे तो उसके सॉफ्टवेयर मतलब उसके इस कोर्सेज के प्राइस भी होंगे. और AI टूल्स मतलब कौन से AI टूल्स, क्या AI टूल्स के बारे में? देखो जो भी है, मुझे जो बता रहे वो तो अलग बात है, बट खुद जो भी सीखने जाओगे उसको अच्छे से जान लो. ऐसे ही टर्म्स सुन के इम्प्रेस मत हो जाना जहाँ पे भी सीखने जा रहे हो. वो तुम्हें टर्म्स बोल के इम्प्रेस कर देंगे और मोटा पैसा लेंगे और उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा. आगे चल के बहुत पछतावा होगा. ठीक है, टर्म्स को ब्रेक डाउन करने की कोशिश करो कि तुम क्या सीखोगे. एक्सेल में ठीक है, चलो एक्सेल सीखना है, एक्सेल, एडवांस एक्सेल, उसमें भी प्रोग्रामिंग होती है. मतलब तुम्हारा इफ़ देन वो सब भी उसके अंदर होता है. प्लस आजकल जो चल रहा है पावर BI के साथ भी यूज़ कर रहा है. मैंने यूज़ नहीं किया है बट पावर BI विथ एक्सेल भी आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है. उससे भी लोग करते हैं. प्लस आजकल एक्सेल में ऐसा भी हो रहा है कि इंटीग्रेटेड AI आता है, तो तुम मतलब डायरेक्टली उसमें पूछ सकते हो कि मुझे ये ऐसे कोड करना है, उसका मुझे प्रोग्राम दे दो, तो वो पूरा उसका क्वेरी दे देगा. उसको सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है और उसमें डेटा वगैरह जो भी डालना है डाल देना है. कल में भी रिकॉर्ड टूटने वाला है. मोस्ट बॉलीवुड व्यू इन नेटफ्लिक्स अभी तक जवान ही है 31 मिलियन के साथ. थिएट्रिकल रिलीज ओनली. कल क्या होगा देखते हैं.
हाँ अगर धुरंधर आएगा तो फिर तो डेफिनेटली रिकॉर्ड टूटेगा, क्योंकि सभी लोग इंटरेस्टेड हैं और हाइप भी बहुत अच्छा खासा बन गया है ना इसका। जैसे सही बताओ तो मुझे पहले इतना इंटरेस्ट नहीं था, बट जिस हिसाब से लोगों ने बोला अरे धुरंधर बहुत तगड़ा है सही है, फिर थोड़ा मन भी किया कि जाके थिएटर में देख के आता हूँ, बट वैसा टाइम नहीं मिल पाया थिएटर में जाऊँ और देख के आऊँ। अदरवाइज डेफिनेटली देखता, क्योंकि मेजॉरिटी लोगों ने बोला है कि ये थिएटर में जाके देखने वाली ही मूवी है, कुछ नहीं। लूट में भी ज़्यादा कुछ मिला नहीं, इतने लोगों को मारा, कुछ लूट वूट भी मिल जाता ढंग का, कुछ वेपन मिला है। T45 स्टैमिना ज़्यादा लेगा, अटैक स्पीड वही है। फायर रेट भी इसका कम है, स्टन ज़्यादा करेगा, तो इसमें बुलेट्स हैं। तो ठीक है, guard the freedom of us all, join the royal fleet today. Would you like to know more? Ask at your nearest recruiting office. वो एकदम छोटे में लिखा हुआ है। Python. Meanwhile, me being a carnage vampire opposite of Sir Morality playthrough 100% जाना बोला 9 to 11। मुझे कोडिंग सीखना है क्योंकि सही से +1 और +2 में सीख ही नहीं पाया। मुझे स्क्रैच से कोडिंग सीखना है, मुझे पता भी नहीं कोडिंग कैसे करते हैं। AI टूल्स लाइक ChatGPT, बट AI टूल्स लाइक ChatGPT, उसमें कुछ ChatGPT में सीखने लायक कुछ नहीं है। एक जो चीज़ जो मैं भी बोल रहा था सबको सीखने के लिए, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, वो भी यूजलेस हो गया है क्योंकि AI ही इतना पावरफुल हो गया है। तुम ChatGPT यूज़ करते हो कि नहीं करते हो? फ्री वाले वर्जन तो है अभी, तो ChatGPT Go तक तो फ्री ही दिया है उन्होंने, 1 साल के लिए तो फ्री ही है। फेब मिड तक रहेगा थिएटर पे, पर इतना जल्दी नेटफ्लिक्स पे दे दिया। थिएटर पे फेब मिड तक रहेगा। Mumbai's iconic Parle-G factory is set to be demolished, land to make way for commercial buildings. हाँ उधर है ये विले पार्ले करके एक जगह है, वहाँ पे ही था वो पार्ले-जी का, वो पार्ले-जी के उसके नाम पे ही विले पार्ले बना, वो जगह का नाम पड़ गया। हेलो सर जी, हेलो शिवम, वेलकम टू द स्ट्रीम। The current minimum basic pay of 18,000 could rise to 30,000 under 8 pay commission structure. The experts expect the fitment factor to be around 1.8. अरे बट वो एनफोर्स कब होगा? मेरा डैड तो परेशान है कब आएगा वो सब का, सिर्फ बातें ही चलती रहती है। डेटा एंट्री सीखना है प्लस साइबर सिक्योरिटी के बारे में सीखना है बहुत कुछ, बट वो तो शायद मैं अपने बुक से भी सीख लूँगा। स्वप्निल, तुम्हारा डायरेक्शन सही नहीं लग रहा है मुझे जिस हिसाब से। तुम्हें एक जगह पे बैठो, थोड़ा गहरी सांस लो
और एक चीज़ पे फोकस करो। तो साइबर सिक्योरिटी भी सीखना है, डेटा एंट्री सीखना है, 2 अलग अलग फील्ड्स है। और डेटा एंट्री में कुछ खास सीखने लायक होता है नहीं। डेटा बेस सीखना है तो फिर वो एसक्यूएल वगैरह, ओरेकल और वो सब के लिए सीखना है, तो वो अलग एक बात हो गई, वो एक अलग बात है वो उसका। और कोडिंग, देखो कोडिंग सीखना है। कोडिंग तो देखो तुम्हारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के हिसाब से उसके सिंटैक्स एंड सेमेंटिक्स बेसिकली होता है। कोई भी कोड लैंग्वेज जब सीखने जाते हो ना, कोई भी बेसिक तुम्हें कोड लैंग्वेज सीखना है, चाहे वो सी, C++, जावा, पाइथन, आर प्रोग्रामिंग वगैरह, जो भी करना पड़े आगे चल के, उसका सबसे बेसिक चीज़ है कि सिंटैक्स मतलब ढांचा जो होता है। जैसे इंग्लिश, हिंदी वगैरह में ग्रामर, इंग्लिश में ग्रामर होता है, हिंदी में व्याकरण होता है। तो ये तुम्हारा कोई भी लैंग्वेज का एक ढांचा बनता है। और दूसरा होता है सेमेंटिक्स। सेमेंटिक्स मतलब मैं अगर एक लाइन ऑफ कोड लिखता हूँ तो उस लाइन का मतलब क्या है, जो कोड का लाइन जो तुमने लिखा है उसका मतलब क्या है। जैसे मैं कोई स्टेटमेंट बोल रहा हूँ तो वो स्टेटमेंट तो मैंने ग्रामेटिकली सही अगर लिखा है तो उसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो ये जैसे भाषा में हो रहा है वैसे ही कोडिंग में भी सिमिलर टाइप का होता है। कोडिंग स्क्रैच से सीखना, फिर तो असेंबली लैंग्वेज सीखना पड़ेगा एकदम स्क्रैच वाला। उससे भी अगर स्क्रैच में सीखोगे तो 0 और 1 के फॉर्म में सीखना पड़ेगा, बाइनरी कोड में सीखना पड़ेगा, जो कि लोएस्ट फॉर्म ऑफ कोडिंग होती है। जितना हाईएस्ट फॉर्म में जाते हो तो उसमें फिर तुम्हें कंपैरेटिवली इजी पड़ने लगता है। लोएस्ट फॉर्म में जाओगे तो बहुत डिफिकल्टी हो जाती है, क्योंकि कितना 0 कितना 1 देना है, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। माइक्रो प्रोसेसर उस लेवल का प्रोग्रामिंग करने जाओगे एकदम स्क्रैच से करने गए तो तुम बेसिक एल्गोरिदम्स शुरू करो सबसे पहले। तो अगर तुम्हें कोडिंग सीखना है तो कोडिंग एक डेडिकेटेड अलग फील्ड है, ठीक है। जिस भी फील्ड में तुम्हें जाना है एक डेडिकेटेड अलग फील्ड है, उसमें एल्गोरिदम सीखो। एल्गोरिदम में क्या होता है कि एक स्टार्ट होता है, एक प्रोसेस होता है, कैसे क्या करना है। अगर यस है तो उसका एक ब्रांच अलग बनता है, नो है तो उसका एक ब्रांच अलग बनता है। किस केस में वो वापस रिकर्सिव वे में जाएगा, फीडबैक को लेके वापस से वो फर्स्ट स्टेप से करेगा या मिडिल कोई स्टेप पे वापस जाएगा। नो है तो कहाँ पे प्रोग्राम टर्मिनेट होगा, एंड होगा। तो ये एल्गोरिदम से सेट होता है। एल्गोरिदम से तुम्हें एक बार फ्लो पता चल जाएगा, देन उसके ऊपर कोडिंग करने में तुम्हें कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा। कौन से लैंग्वेज में कोड करोगे उसका सिंटैक्स जानने की कोशिश करो, फिर उसका सेमेंटिक्स क्या बनता है, एक एक लाइन लिखते हो तो उसका मीनिंग क्या बनेगा। क्योंकि जब तुम कोई भी कोडिंग एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में करोगे तो पहले कंपाइल करेगा, कंपाइलेशन में तुम्हें कुछ एरर्स आएंगे, फिर कुछ कंपाइलेशन के एरर्स तुमने ठीक कर दिया, वो डीबग हो गया, फिर तुम्हारा जब वो रन होगा तो रन टाइम के दौरान तुम्हें बहुत सारे एरर्स दिखेंगे। तो पता चलेगा अच्छा मैंने यहाँ पे ये मिस्टेक किया, वो मिस्टेक किया, या मैंने सर्टेन सिनेरियोज के बारे में सोचा ही नहीं, तो उसके कुछ मिस्टेक्स आ सकते हैं। तुम बहुत अलग अलग फील्ड्स की बात कर रहे हो। एक फील्ड पकड़ के उसमें तुम्हें क्या करना है। अभी चैट जीपीटी AI टूल कुछ खास ऐसा AI टूल सीखने लायक है नहीं। तुम्हारे क्वेरीज तुम जितने ज़्यादा उसमें डालोगे धीरे धीरे अपने आप रिफाइन हो जाएगा। उसमें सिखाने के लिए कोई बंदा है ही अलग से नहीं चाहिए तुम्हें। और जितना AI का एडवांसमेंट कर रहे हैं, जैसे चैट जीपीटी, तुम्हारा जेमिनी हो गया, क्लॉड हो गया, कोपायलट हो गया, ऐसे जितने भी है, डीप सीक हो गया, वो ऐसे जितने भी हैं, परप्लेक्सिटी हो गया, तो वो भी क्या कर रहे हैं कि तुम्हारे वो प्रॉम्प्ट को भी समझ के इंटरप्रेट अपने आप से करने की कोशिश कर रहे हैं जितना हो सके। तो तुम्हें उतना प्रॉम्प्ट के बारे में सीखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। पहले ऐसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो चल भी रहा था वो जितना जल्दी शुरू हुआ उतने उससे जल्दी ख़त्म भी हो गया, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वाला सीन। अरे मैं हमेशा चैट जीपीटी यूज़ करता हूँ, मेरे फ़ोन में इंस्टॉल्ड है, तो फिर क्या उसमें ऐसा क्या सीखना है तुम्हें। AI टूल्स में चैट जीपीटी ऐसा कुछ खास तो AI टूल है नहीं भाई। मैं जगह कहाँ है, ऑलरेडी जो जगह है उसी को तो डेमोलिश करके वहाँ पे बनाएंगे ना, और क्या करेंगे। कोडिंग मत सीखो, खेती करो। एनफोर्स नेक्स्ट इलेक्शन के टाइम होगा,
साइबर में सब कुछ ऑलमोस्ट है, नीचे चूज़ करना होगा, उसमें भी बेसिक्स ऑफ कंपाइलर डिज़ाइन बता रहे हैं सर। नाइस। साइबर में तो सबसे पहले नेटवर्किंग के फंडामेंटल्स पढ़ना पड़ेगा। लॉजिक बिल्डिंग बोल रहे सर जी। लॉजिक बिल्डिंग के लिए उसको एल्गोरिदम बोला जाता है। एल्गोरिदम ही एक फ्लो चार्ट डिसाइड करता है ना, कि मेरा अगर मैं कोई एप्लीकेशन डिज़ाइन कर रहा हूँ तो वो डिज़ाइन के टाइम पे मैं शुरू कैसे करूँगा, मुझे क्या क्या ब्रांचेस दिखेंगे, मतलब क्योंकि मैं एक क्वेरी प्रेस करूँगा तो उसके अलग अलग ब्रांचेस हो सकते हैं। सबसे बेसिक हो गया येस या नो वाला, जैसे तो येस में और कुछ ब्रांचेस आ जाएंगे, वैसे कर करके। और उसके बाद डिज़ाइन भी रहता है, कहीं पे ट्रायंगल रहता है, कहीं पे ट्रायंगल नहीं सॉरी सर्कल होता है, डायमंड होता है, स्क्वायर रेक्टेंगल शायद होता है, वो एक था सबसे स्टार्ट में वही सिखाते थे। तो ऐसे करके जितना मतलब स्क्रैच बोलने जाओगे तो एकदम स्क्रैच में भी जा सकते हैं, बट दिमाग खराब हो जाएगा और कुछ तुम्हारे काम का भी अभी नहीं रहेगा। डिलीट कर दिया मैनेजर बोल रहा किसने किया? एक दिन कोड रह जाएगा और मैं रन हो जाऊंगा। खेती करो से याद आया कि बिहार फार्मर अर्न्स 25 लाख अ मंथ फ्रॉम 6000 स्क्वायर फीट मशरूम यूनिट, ट्रेन्स अदर्स फॉर फ्री। बढ़िया है, ये तो बढ़िया है। अगर खुद इतना कमा के अगर दूसरों को हेल्प कर रहा है वैसे सिखाने में तो अच्छी बात है। और मशरूम का तो बहुत बहुत कमाई है अगर सही से कर सको तो। अरे सॉरी मेरा मतलब डेटाबेस से ही था। हमारे पास इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस एक सब्जेक्ट था, शायद मैंने आपको बताया भी था पहले, उसमें डेटा हैंडलिंग समझाया था, उसी में डेटाबेसेस था। नमस्ते भाई, नमस्ते काजियोना, वेलकम टू द स्ट्रीम। फ्लो चार्ट बोल रहे सर जी। हाँ, फ्लो चार्ट एल्गोरिदम के बाद आता है। वो तुम्हारा जैसे कोई प्रोजेक्ट तुम्हें बनाना है तो शुरुआत एक बेसिक एल्गोरिदम कुछ बनाओगे, फिर उसका एक यूज केस सिनेरियो बनाते हो, फिर उसका गैंट चार्ट थोड़ा बाद में बनता है। और भी 3-4 चार्ट्स थे उसमें, अभी भूल गया। उसमें वो 3-4 वो बोलोगे तो मुझे याद आएगा। वो यूज केस सिनेरियो सब पूरा सब बनाना पड़ता था उसमें। फ्लो चार्ट एक रहता था उसमें, उसका भी एक फ्लो चार्ट बनाने का भी एक अलग से सॉफ्टवेयर होता था, उस सॉफ्टवेयर में बनाते थे। MBA में भी हम लोग जब एक बिजनेस मॉक बिजनेस डिज़ाइन करने का प्लान कर रहे थे तो मैंने वो फ्लो चार्ट में बनाया था। सब इम्प्रेस हो गए भाई, क्या कंप्यूटर सीख के क्या एकदम तगड़ा फ्लो चार्ट बना दिया है। ER एक चार्ट रहता था, ER डायग्राम रहता था, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, ERD बोलते थे उसको, यूज केस। फिर लास्ट के तरफ में गैंट चार्ट मतलब तुम्हारा कितना टाइम लगता है, एक जैसे एक पूरा प्रोजेक्ट है तो कितना टाइम तुम प्लानिंग में दोगे, कितना टाइम तुम कोडिंग में दोगे, कितना टाइम डीबगिंग वगैरह करने में दोगे, कितना टाइम उसका एप्लीकेशन वगैरह सब चेक करोगे, एनफोर्स करोगे, वो सब ऐसा उसका एक फ्लो रहता था। तो कितने दिन से कितना दिन वो गैंट चार्ट में वो होता था। वो कोडिंग का पार्ट नहीं है, वो टाइमलाइन का पार्ट है कि कितने टाइम में तुम कंप्लीट करोगे। डेडलाइन अगर है तो उस ये स्टार्ट डेट है, ये एंड डेट है, तो उसमें से कितना भाग तुम किस चीज को देने वाले हो। जो फार्मर था उसका नाम अजय यादव है आई थिंक। हाँ, वो अभी बहुत फेमस है। अच्छा, मैनेजरियल रोल्स में होते होंगे ये चार्ट्स? नहीं, मैनेजरियल रोल्स में वैसे तो हाँ, वो एकदम स्टार्ट के लेवल में होता है। वो जब कोई भी प्रोजेक्ट डिज़ाइनिंग के इसमें जाते हैं एकदम स्टार्ट में होता है। अब उसमें से बहुत सारी चीज़ें बहुत एडवांस्ड हो चुकी है। ये तो एकदम हम लोग को बाबा आदम के ज़माने का सिखाते हैं ना, उससे शुरुआत करते हैं। बहुत सारी चीज़ें उसमें से होती ही नहीं है जो हम लोग को सिखाया जाता है। बहुत सारी चीज़ें इसमें स्किप भी हो जाती हैं और बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हो गई हैं, तो उतना ज़रूरत नहीं पड़ता हमें जितना पहले पड़ता था, जब उतने पावरफुल सॉफ्टवेयर्स और ये सब नहीं अवेलेबल। अभी तो सिमुलेशन सॉफ्टवेयर्स ये सब कितने इजीली अवेलेबल हो जाते हैं।
तो इतना सब करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। हमें तो पीसी में प्रोग्राम करने, कोड डालने से पहले पूरा वो बाई हैंड फ्लो बनाओ, ये करो, सब ड्रॉ करो, उसके बाद ही जाके तुम पहला कोड वगैरह डालोगे। इंडियन एजुकेशन सिस्टम ऑन टॉप, बाहर भी होता है बट बाहर क्या है ना, उनका एक सिस्टम है कि क्रेडिट बेस्ड सिस्टम है। तो तुमने थोड़ा बहुत सीख लिया, क्रेडिट्स ले लिए, जल्दी, और सेल्फ पेस्ड भी कर सकते हो, अपने हिसाब से तुम कर सकते हो, क्रेडिट्स वगैरह ले लिए, फिर दूसरे इसमें जाओ, दूसरे इसमें से और जल्दी जल्दी करके सीख सकते हो। और प्लस वहाँ पे बहुत सारे क्लब्स और ये सब भी रहते हैं जहाँ पे यू गेट टू लर्न, जैसे रोबोटिक्स डिपार्टमेंट हो गया, अभी तो यहाँ पे भी शुरू हो गया है रोबोटिक्स डिपार्टमेंट। पहले मतलब बाहर की तरफ में बहुत बढ़िया रोबोटिक्स डिपार्टमेंट पहले से होता था, कंप्यूटर साइंस का एक अलग से डिपार्टमेंट होता था, तो वहाँ जा के वो लोग सीखते रहते थे कंटिन्यूसली, एंड तुम बहुत जल्दी उसमें ग्रास्प कर सकते हो। प्लस जैसे हर कॉलेज फंक्शंस वगैरह होते हैं, टेक फेस्ट वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे जाके जैसे कोडिंग कंपटीशन वगैरह होती है, डीबगिंग की कंपटीशन वगैरह होती है, तो वहाँ पे जाके पार्टिसिपेट करो। हैकाथॉन ऐसे टाइप के चीज़ें होती हैं, वहाँ पे पार्टिसिपेट करके नेटवर्क क्रिएट करते हैं, और फिर साथ में मिलके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स वगैरह करते हैं, इंटर्नशिप वगैरह में अप्लाई करते हैं, बहुत कुछ होता है। अभी यहाँ पे भी वो चीज़ इम्प्रूव तो हुई है, पहले से काफ़ी इम्प्रूव हुई है। आप ही बताओ कि मेरे लिए कौन सा पाथ सही रहेगा। वैसे कोडिंग और लैंग्वेज लर्निंग एक ही कैटेगरी में आता है। यूजुअली लैंग्वेज लर्निंग मैंने ऐसे कोडिंग के इसमें मैंने कभी सुना नहीं है कि लैंग्वेज लर्निंग करना हो। लैंग्वेज लर्निंग यूजुअली जो भाषा सीखने के लिए होती है, मतलब जैसे कोई स्पेनिश सीख रहा है, कोई फ्रेंच सीख रहा है, कोई रशियन सीख रहा है, तो जर्मन सीख रहा है, तो ये हो गया लैंग्वेज लर्निंग, उसका पार्ट होता है। हम लोग कंप्यूटर्स में लैंग्वेज लर्निंग तो नहीं बोलते हैं, प्रोग्रामिंग करना, कोडिंग करना ऐसे बोला जाता है यूजुअली उसमें। पर मैं ऐसे नहीं बता सकता ना, तुम्हारा क्या इंटरेस्ट है, कोई भी एक टॉपिक लो, तुम्हारा क्या इंटरेस्ट है, किस में आगे बढ़ना है, और उस हिसाब से उसमें आगे बढ़ो। जैसे अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम जो फील्ड में काम कर रहे हो वहाँ पे तुम्हें कोडिंग का बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा, तो कोडिंग का ज़रूरत पड़ेगा, तो तुम्हारे वो फील्ड में कौन से लैंग्वेज ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, क्या पाइथन ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, या फिर जावा की रिक्वायरमेंट है क्या, क्योंकि जावा में भी एडवांस जावा वगैरह बहुत खतरनाक हो जाते हैं, तो उसकी रिक्वायरमेंट है क्या तुम्हें, या फिर उसका कोई अभी नया एक कोई कोड आया है क्या जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। क्योंकि रेडिट, गूगल वगैरह ये सब पे तुम्हें कहीं ना कहीं से ये सब इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, तो फिर उसको सीखने के लिए पहले यूट्यूब पे देखो, यूट्यूब पे मिल सकते हैं। देन coursera.org है, वहाँ पे सर्च कर सकते हो। एडेक्स वगैरह में, खान एकेडमी वगैरह में, फिर और कौन सा था, यूडेमी है, ये सब में सर्च करके देखो, चेक करो कि कौन सा ऐसा हो सकता है जो तुम्हारे काम का रहे, एंड सीखने की कोशिश करो। सीखते सीखते तुम्हें लगेगा हाँ ये तो मेरे काम का लग रहा है और इसमें और भी इन डेप्थ जाना चाहिए, तब तक तुम्हें वो नॉलेज भी आ जाएगा कि और इन डेप्थ कैसे जा सकते हैं करके। और भी अगर ऑनलाइन में लोग मिलते हैं वही फील्ड में, जैसे रेडिट वगैरह का सब फोरम्स, सब पेजेस वगैरह रहते हैं, तो वहाँ पे रेडिट फोरम में वो देखो कि कौन कौन ऐसे बंदे हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करो। हर एक बंदा अपने लेवल पे बहुत कंफ्यूज रहता है, बट वो खुद ही डिसाइड करना पड़ता है। मैं अगर आज कुछ डिसाइड करके दूंगा ना, कल को तुम उसमें अगर खुश नहीं रहे तो मुझे कोसोगे फिर कि मुझे कुछ पता नहीं था, मैंने तो सर को पूछा, उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा करना चाहिए, अभी तो मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है, क्या फालतू का उन्होंने राय दिया, मुझे पूरा ज़िंदगी बर्बाद करवा दिया मेरा, मैं कुछ अलग करता उसमें मज़ा आता मुझे। इसके लिए कोई भी ऐसा पर्सन कभी भी अपने एंड से नहीं बताएगा कि तुम्हें यही करना चाहिए,
ऑप्शंस दे सकते हैं कि हाँ ये कर सकते हो, अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है तो ये कर सकते हो. अल्टीमेटली इट इज़ योर ओन चॉइस. तुम्हारा गट इंस्टिंक्ट क्या बोलता है. बहुत सारी चीज़ें एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम नहीं कर सकते. प्लस तुम्हारा तो ये तुम डिग्री में भी नहीं पढ़ रहे हो ना, ये तुम्हारा भी ग्रेजुएशन हो गया है, उसके बाद पढ़ रहे हो. शॉर्ट टाइम में तो इतनी सारी चीज़ें सीखना इम्पॉसिबल हो जाती है. पर कोई भी एक चीज़ को लेके अगर सीखते रहोगे तो कहीं ना कहीं तुम्हारा हो ही जाएगा. वो अभी नहीं होगा, 1 साल 2 साल टाइम लेके करोगे तो भी हो जाएगा, डेडिकेटेडली कर किए तो. स्वप्निल, हाँ भाई क्रेडिट सिस्टम तो यहाँ भी होता है सर जी, पर मुझे तो अभी तक नहीं समझ आया. नहीं, यहाँ का क्रेडिट सिस्टम होता है बट फ्री नहीं हो तुम्हें एक डेडिकेटेड सेमेस्टर वाइज पैटर्न फॉलो करना पड़ता है. बाहर का सिस्टम वैसा नहीं है. बाहर अगर उनको लगा कि तुमने जैसे कोर्सेरा में कोई कोर्स कर रहे हो, ठीक है, और कोर्सेरा का वो पर्टिकुलर ऑनलाइन कोर्स वैलिड है तो उसके क्रेडिट्स काउंट होते हैं उनके यूनिवर्सिटी में. ठीक है, वो उस कोर्स को भी काउंट करेंगे एज पार्ट ऑफ क्रेडिट्स, एज यूनिवर्सिटी क्रेडिट्स में वो काउंट होता है. उसके सर्टिफिकेशंस वगैरह लेके आओगे तो. और ये आज की बात नहीं है, बहुत पहले से था. तब तो फ्री था इनिशियली, तब भी मैंने देखा था कि हाँ ये सर्टेन यूनिवर्सिटीज़ में इसको एज क्रेडिट्स भी काउंट किया जा सकता है, कोर्स के क्रेडिट्स में काउंट किया जा सकता है. तो फ्लेक्सिबिलिटी की मैं बात कर रहा हूँ कि क्रेडिट सिस्टम हमारे यहाँ पे, वो तो मैंने भी MBA क्रेडिट सिस्टम में ही किया है, बट हमारे सही बता दो फिर भी मेरे टाइम पे थोड़े ऑल्टरनेट मैं सब्जेक्ट्स चूज़ कर सकता था बियॉन्ड माई इलेक्टिव्स. जैसे फाइनेंस में हमारे 4 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स रहते थे, उसमें से कोई 2 चूज़ करना पड़ता था. तो 2 मेरे मेन होते थे. उसमें से एक इंटरनेशनल फाइनेंस मैंने अलग से लिया था. बैंकिंग में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था करके मैं बैंकिंग में नहीं गया था. बट और एक लड़की थी जिसने बैंकिंग और कुछ एक लिया था, और जो 2 मैंने मेन लिए थे उसमें उसने एज एन ऑल्टरनेट उसको चूज़ किया हुआ था. तो वैसे करके उसने किया था. चारों कोर्सेज किए थे, मतलब 4 सब्जेक्ट्स किए थे. मैंने 3 सब्जेक्ट्स किए थे. 2 मेरे मेन थे जो मैं चूज़ कर सकता हूँ मेरे एग्ज़ाम्स वगैरह के लिए, वो मेन काउंट होता है. और तीसरा जो मैंने किया था वो कंप्लीट करके उसका सर्टिफिकेशन गैदर किया था इंटरनेशनल फाइनेंस का. तो उस लेवल की फ्रीडम बाकी कॉलेजेस में नहीं मिलती है. इसका इन्होंने सेपरेट किया था क्योंकि उन्होंने बोला था कि अगर किसी को एक्स्ट्रा करना है तो हम उसका सर्टिफिकेशन देंगे अगर वो एग्ज़ाम पास होते हैं तो. और एग्ज़ाम में 60 चाहिए, 100 में से 60 चाहिए पास होने के लिए. MBA में 60 मिल गया था सर्टिफिकेट उस बंदी को. तो उसने तो दोनों कर दिए थे. मुझे बैंकिंग में कभी इंटरेस्ट ही नहीं आया, बट अभी थोड़ा पछता रहा हूँ क्योंकि जैसे अभी बैंक्स वगैरह का वो सब रिपोर्ट्स पढ़ता हूँ, तो मैं सोच रहा था कि तभी अगर बैंकिंग का पढ़ लेता तो और इजी हो जाता मुझे रिपोर्ट्स पढ़ने के लिए, समझने के लिए. गवर्नमेंट जॉब पगलू है यहाँ तो. हाँ वो तो हमेशा ही रहेंगे. पटाते तो बाहर भी सेम ही है, इम्प्लीमेंटेशन और रिसर्च वहाँ बेटर है, अपना थोड़ा पैकेज चलता है. गवर्नमेंट जॉब पब्लू है यहाँ पे. जस्ट इन चाइनाज गोल्ड रिजर्व्स हिट अ record 74.1 million ounces as US Treasury holdings fall to an 18-year low of $682.6 billion. That is good for them actually. अभी क्या कर रहे हो भाई? कोडिंग का बहुत सारा फ्री कंटेंट है यूट्यूब में, यूडेमी और कोर्सेरा में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. कोर्सेरा में भी तुम फ्री में बहुत सारे कोर्सेज कर सकते हो, सिर्फ ऑडिट द कोर्स करना है. ऑडिट द कोर्स करोगे तो तुम फ्री में उसको एक्सेस कर पाओगे. हाँ वो बोलेगा कि तुम्हें एग्ज़ाम वगैरह, जो उसका एक एग्ज़ाम का वो पैटर्न वगैरह रहता है, वो अगर तुम्हें देना है तो फिर तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे. यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो. कोर्सेरा यूडेमी में सेल में अच्छा मिल जाएगा. एडेक्स में भी हार्वर्ड लेक्चर्स कुछ मिल जाएंगे फ्री में. NPTEL है जो अपने खुद का IIT का है, बट वो बोरिंग होता है, सही बताओ वो काफ़ी बोरिंग होता है. बट उसमें भी बहुत सीखने लायक चीज़ें मिल जाती हैं. बाहर क्या है कि वो लोग अपने प्रोडक्शन वगैरह पे थोड़ा काम करते हैं, थोड़ा अट्रैक्टिव दिखाने के लायक वो बनाते हैं कम से कम. इधर वाले उतना नहीं करते हैं. और उनका एक कैमरा सेटअप कर दिया, बोलना चालू कर दिया बस.
राम राम सर, राम राम शिंजो, वेलकम टू स्ट्रीम। सो जाओ सर, व्हाट्सएप देखे सर स्टेटस? नहीं अभी तक नहीं देखा मैं वैसे भी आजकल क्या काफ़ी साल से अभी कुछ देखता ही नहीं हूँ मैं स्टेटस वेटस। रुक जाओ देखता हूँ अभी। स्टेटस कहाँ देखते हैं? अपडेट्स है ना। अरे क्या बात है, क्या बात 7 days भाई, 1 हफ्ता हो गया, 1 हफ्ता बाकी है। चलो बढ़िया। भाई अभी तो गवर्नमेंट जॉब्स का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन के साथ कोडिंग, ऐसा कुछ सीखना जिसका इन फ्यूचर बहुत स्कोप है। आई मीन मैं कुछ हफ्ते बाद एमकॉम भी करने वाला हूँ और मे बी पीएचडी आफ्टर दैट। मेरे यहाँ भी अगर सर्टिफिकेशन कर लिया तो 10 क्रेडिट मिल जाता था। अच्छा हाँ, तो ये तो अच्छी बात है अगर ऐसे अलाउ करते हैं तो। जैसे हमारी मैडम, जैसे उन इंटरनल्स का जो स्ट्रक्चर, मार्क्स का स्ट्रक्चर है वो हमारे टीचर्स के हाथ में रहता था। तो मेरी जो फाइनेंस की मैडम थी उन्होंने बोला एनआईएसएम का एक सर्टिफिकेशन करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हें उसके वो इंटरनल्स का 40 मार्क उनके हाथ में रहता था। तो उसमें से 10 मार्क्स वो बोली उन्होंने कि दूंगी अगर तुमने एनआईएसएम का सर्टिफिकेशन कंप्लीट किया तो, मतलब पास किया तो। पास नहीं किया तो जितने मार्क्स है उस हिसाब से वो एक दे देंगी, मतलब 4-5 ऐसे करके। बट जिन लोगों ने क्लियर किया उसको पास करने पे 10 मार्क्स मिलेंगे। तो किया था मैंने उसका, लेकिन एनआईएसएम का वही है, वैलिडिटी रहता है 3 साल 5 साल, फिर रीसर्टिफिकेशन वगैरह करो। और वो आई थिंक इंट्रोडक्शन या समथिंग ऐसा कुछ बेसिस पे था। 2 दिन पढ़ा था मैंने मुश्किल से, शायद 200 पेज समथिंग का था। 120-130 पेज पढ़ के गया था, कंफर्टेबली पास हो गया था मैं। और एक बंदे को उसको कुछ नहीं आ रहा था, उसने मुझसे हेल्प ले लेके वो भी पास हो गया। मैं बहुत सरप्राइज था कि वो पास हो गया करके। फिर बाद में मालूम पड़ा उसने फिर मतलब बहुत सीरियसली पढ़ाई किया। फिर सीए बोल रहा हूँ, सीएफए का फर्स्ट लेवल भी उसने कंप्लीट कर दिया था। यस सर चलो भाई चलता हूँ। गुड नाइट शिंजो, बाय बाय। कैसे सर्टिफिकेशन निखिल? CS50 हार्वर्ड। जैसे पाइथन विथ ML का सर्टिफिकेशन कर लिया था तो एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता था, उसका क्रेडिट मिल गया 10। अच्छा, पाइथन विथ मशीन लर्निंग वाला ना। जेई मेन कट ऑफ परसेंटाइल एंड एलिमिनेट मार्क फ्रॉम 300, जनरल 93.5 to 95, 100 to 110, then EWS 81.5, 89.5, 80, 85, OBC 80, 82, 75, 82, Schedule C 62, 65, Schedule T 48, 51, PWD 0.001, या -0.010। वो एक कोई तो केस मैंने सुना, एक बंदे ने PWD वो फिजिकल हैंडीकैप्ड कैटेगरी में करने के लिए अपना पैर ही काट दिया। कहीं पे तो कुछ आर्टिकल का हाईलाइट आया था कि उसने अपना पैर काट दिया करके। जस्ट वो हेडलाइन ही पढ़ा मैंने, डिटेल में नहीं पढ़ा। PTSD दे दिया। PWD तो भाई खतरनाक ही है। नाम लिख के आ जाओ बस, सिलेक्शन हो जाएगा तुम्हारा। मेरी सिलेक्शन हो गई है ऐसा फील होगा। हाँ नीट वाला था वो। हाँ नीट वाला, हाँ यस। क्लिंकर स्काल। अभी भी 111 मीटर जाना है भाई साहब। चल क्या रहा है? मैं उल्टा क्यों जा रहा हूँ?
कैसे जा सकते हैं? एक तो इतना बड़ा बड़ा लिख के आता है। बचा हुआ है भाई। अरे मार दिया भाई, जानवर ने मार दिया मुझे। पीडब्ल्यूडी का फ्री है ट्यूशन फीस मेरे कॉलेज में। वो तो आई थिंक SC/ST का भी फ्री रहता है। नहीं, SC/ST फ्री नहीं रहेगा, फीस कम रहेगा, बट बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स उनके फ्री रहते हैं। नहीं 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 नहीं, क्या मुझे वापस फाइट करना पड़ेगा? आ जाओ चूहा, आ जाओ। I can't believe I'm doing this. I have this thirst for blood. I can't believe I'm doing this. But I can believe, क्योंकि तुमने बहुत बार कर लिया। इधर से जाने की कोशिश करता, चलो। से जा सकता हूँ? नहीं दिखा रहा है यहाँ से जाने का। 1 शिलिंग शी, क्या स्काल है? ये स्काल है। दो जन है, आगे भी है तो 11 मीटर। अच्छा, ये बहुत धीरे धीरे, ये लकड़ी बहुत धीरे धीरे मारता है, इसके लिए टाइम लेता है। बट पड़ जाती है तो फिर स्टन बहुत जल्दी होते हैं, इनको खून पी पी के मार सकते हैं जल्दी। This poor man has just been slaughtered by a vampire. The body's still warm. अच्छा, ऐसे ही जाना है लगता है। Better go home, sir. Best be on your way home. Over there! There's one of them vermin! 80 meters, 60 meters.
30 मीटर्स ये पगला मिलेगा हमें भी। अननोन। ये लेडी यहाँ पे क्या कर रही है? It's locked. It's locked, all right. तो ठीक है, बाजू वाला तो ओपन कर रहा था मैं। चलो इनसे बात करते हैं फिर। निखिल भाई अभी आप कहाँ काम कर रहे हो? मेरे तो बिजनेस है। ओ कैसा बिजनेस? मैं तो अभी चेक किया, अपना इंडियन रुपी अप्रिशिएट हो गया, अभी हाईएस्ट पे है आई थिंक। अप्रिशिएट हुआ डिप्रिशिएट हुआ है? डिप्रिशिएट हो रहा है। अप्रिशिएट तो अगर होता भी है 10 पैसे का अप्रिसिएशन होता है तो 20 से 25 पैसा डिप्रिशिएट हो जाता है इंट्राडे में ही। टेम्स नदी के बगल में घूम रहे हो लंदन की गंगा। हाँ इवेंट प्लानर त्रिनेरा इवेंट नाम से है। एडिट डेप्रिशिएट था, ऑटो करेक्ट हो गया अप्रिशिएट। हाँ मैं वही सोच रहा हूँ नहीं ये ऐसे अचानक से सुबह सुबह इतना डेप्रिसिएशन और अभी अचानक से अप्रिशिएट हो गया। क्लोज टू 92 हो गया। लेट्स गो। 92 पार हो गया ना, या पार होके वापस आया था 91 पे। 92 इस बार सेंचुरी देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट देखते हैं थोड़ा, वैसे अभी डिप्रिसिएशन से हेल्प भी मिलता है स्पेशली एक्सपोर्टर्स वगैरह को, बट प्रॉब्लम ये हो रहा है ना, तो हमारे FIIs इतने आउटफ्लो हो रहे हैं, उनका पैसा सब निकल गया है। अभी जो करंट रिपोर्ट आया है कि DIIs मतलब जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे कि तुम्हारे म्यूचुअल फंड्स वगैरह जो SIP जिनसे जो कलेक्ट कर रहे हैं, बेसिकली वो लोग फॉरेन इन्वेस्टर्स से ज़्यादा होल्डिंग्स उनकी हो गई है। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने मतलब लास्ट 3-4 सालों में इतना बेचा है ना, और लास्ट ईयर तो बहुत बेचा है, क्योंकि 2024 से ही हमारा मार्केट थोड़ा बेरिश इसमें था, बेरिश टू सेम लेवल पे आया, तो उसकी वजह से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स सब बेच रहे धड़ल्ले से बेच रहे, और रुपी कमज़ोर हो रहा है। तो अगर सपोज वो लोग 100 रुपये हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर 5 से 10% अगर मेरा पैसा सिर्फ रखने से ही कम हो जाता है, कि मुझे पता है कि 100 रुपये रखूँगा तो वो 90 तो होने हैं, अब उसके बाद उस पर रिटर्न्स जनरेट होंगे, तो 10% से ज़्यादा का रिटर्न जनरेट होगा तभी मेरे बराबर का आएगा। वो मैंने जितना इन्वेस्ट किया था, जिस पैसे में इन्वेस्ट किया था, उतने के बराबर का आएगा, और उससे ज़्यादा जब रिटर्न्स मिलेंगे तब जाके उसको एक्चुअल रिटर्न्स बनने मिलेगा। उसके ऊपर भी झमेले हैं कि तुम्हारा LTCG और STCG देना पड़ रहा है। LTCG मतलब लॉन्ग टर्म्स कैपिटल गेन्स टैक्स, और STCG शॉर्ट टर्म। तो अगर 1 साल के अंदर तुम वो पैसा निकाल रहे हो और उसमें गेन भी है, तो 20% का टैक्स लगेगा उस पर, गेन्स के ऊपर। और लॉन्ग टर्म में कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म में एक तो तुम्हारा रुपी डिप्रिसिएशन भी ज़्यादा होता है, जितना ज़्यादा रखोगे उतना रुपी डिप्रिसिएशन भी होगा, प्लस रिटर्न अगर उतने नहीं हुए तो वो भी तुम्हारा एक टाइम मतलब जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो भी गया, प्लस जो थोड़ा बहुत अगर तुमने प्रॉफिट किया भी है उसमें भी तुम्हें 12.5% देना पड़ेगा लॉन्ग टर्म्स कैपिटल गेन्स टैक्स। इससे अच्छा बोलते हैं कि US के ट्रेजरी बॉन्ड्स में डाल दो, या जापान में भी अभी बोलते हैं बहुत अच्छा ट्रेजरी पे वो लोग 4-5% का रिटर्न्स दे रहे हैं। पहले तो कुछ देते ही नहीं थे, अभी उस पर भी रिटर्न्स मिल रहा है, तो बोलता है उधर ही बेटर है, उधर एटलीस्ट मेरा पैसा डिप्रिशिएट नहीं होगा, ठीक ही स्टेबल रहेगा एटलीस्ट। रुपी का स्टेबिलिटी अभी देखते हैं, ये संडे आने दो, संडे को ऐसे स्टॉक मार्केट खुला है, बजट भी होगा और स्टॉक मार्केट भी खुला रहेगा, NSE BSE दोनों खुला रहने वाला है। 1 मिनट मैं पानी का बोतल लेके आता हूँ।
सर जी एक्सेल के अलावा टैली भी क्या डेटा एनालिसिस का ज़रूरी होता है? नहीं, टैली में डेटा एनालिसिस वाला पार्ट तो नहीं है, टैली अकाउंटिंग का हिस्सा है। जो अकाउंट मेंटेनेंस लेजर जर्नल क्रिएट करने के लिए टैली यूज़ किया जाता है। उसमें अकाउंट्स का मेंटेन करना, बिल जनरेशन वगैरह वो सब उसका पार्ट है। मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है। अभी तो तुम चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हो, चैट जीपीटी में देखो ना टैली का क्या यूटिलाइजेशन है। यही सब के लिए तो चैट जीपीटी यूज़ करना है। तुम्हारे जो बेसिक से बेसिक क्वेरीज है चैट जीपीटी वगैरह में पूछो। चैट जीपीटी का अगर तुम्हारा नंबर ऑफ क्वेरीज ख़त्म दिखा रहा है, जेमिनी में जाओ, जेमिनी में पूछो। जेमिनी में ख़त्म हो जाता है ग्रॉक पे पूछो, ग्रॉक ख़त्म हो जाता है क्लॉड पे पूछो, क्लॉड ख़त्म हो जाता है कोपायलट पे पूछो, कोपायलट ख़त्म हो जाता है परप्लेक्सिटी पे पूछो। एयरटेल का रहेगा तो परप्लेक्सिटी प्रो भी रहेगा तुम्हारे पास। तो अगर वो ख़त्म हो जाता है तो डीप सीक पे पूछो। और कुछ कुछ घंटे में वैसे भी तुम्हारे क्रेडिट्स मिल जाते हैं, फ्री वाले भी रहेंगे जो। तो मुझे नहीं लगता इतने क्वेरीज तुम्हारे एक साथ आएंगे। अगर आते तो कुछ कुछ टाइम का वो स्पेस मेंटेन करो, थोड़े थोड़े देर के बाद पूछ लेना। चाहिए तो अलार्म सेट कर देना कि इतने घंटे के बाद पूछूंगा मैं। वो आंसर को पढ़ो, एनालाइज करो। नॉर्मल गूगल क्वेरी वो सब, गूगल सर्च वगैरह वो तो चल ही रहा है, उसमें तो कोई लिमिट नहीं है, उसमें सर्च कर सकते हो। तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज तो बहुत है। हेलो जेम्स, वेलकम टू स्ट्रीम। हेलो हेलो, इतना लंबा हेलो। टैली करने में मज़ा आता है। मुझे मेरा सबसे खास दोस्त जिसने मुझे कॉलेज में पढ़ाई और मोटिवेशन में बहुत हेल्प किया है, उसने कहा कि मुझे स्किल्स चाहिए तो एचआर मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, जीएसटी, इनकम टैक्स, एक्सेल और टैली। भाई इनकम टैक्स बाय इटसेल्फ ही बहुत बड़ा एक फील्ड है। इनकम टैक्स में तुम्हें कौन सा सीखना है? डायरेक्ट टैक्स सीखना है, इनडायरेक्ट टैक्स सीखना है, कंपनी टैक्स अलग होता है, इंडिविजुअल का टैक्स वैसे अलग होता है, बिजनेस टैक्स वो अलग होता है। 4-5 तो अलग अलग फॉर्म्स है। अभी उसको अगर और सिंप्लीफाई करे तो अलग बात है। फिर वो ओल्ड फॉर्म ऑफ टैक्सेशन जो होता है, अभी करंट एक नया फॉर्म ऑफ टैक्सेशन चल रहा है। टैक्सेस तो सीए वाले, इसके लिए वो सीए करना पड़ेगा तब जाके तुम्हें उसका बेनिफिट मिलेगा। और बाकी नॉर्मल बेसिक लेवल ऑफ टैक्सेशन सीखोगे तो तुम खुद का अपना टैक्स भर सकते हो, इनकम टैक्स। स्पेशली अगर सैलरीड हो तो बहुत ही सिंपल रहता है, खुद का टैक्स भरना बहुत ही सिंपल हो जाता है। सीखना चाहिए। प्लस मैं एमकॉम कर ही रहा हूँ तो इससे भी सुना है जॉब्स मिलने का चांसेस होता है। इंडिया में एक खास बात है, इंडिया में खास बात यह है कि तुम जितना ज़्यादा पढ़ाई करोगे ना, जितना हायर तुम्हारा क्वालिफिकेशन होगा, उतने तुम्हारे जॉब के चांसेस कम हो जाते हैं। और ये मैं हवा में नहीं बोल रहा, तुम सर्च कर लेना उसको। उसका एक प्रॉपर उन्होंने स्टडी दिया था जहाँ पे वो बता रहे थे, क्योंकि यहाँ पे हायर पोजीशंस पे जॉब बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि तुम एमकॉम करके तुम्हारा क्वालिफिकेशन एक बीकॉम वाले से ज़्यादा होता है, बट तुम्हारे पास एक्सपीरियंस उसके बराबर ही है, वो है 0 है। ठीक है, तो इसका मतलब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इंटर्नशिप्स वगैरह अभी से ये एक काम कर सकते हो, इंटर्नशिप्स ढूंढने की कोशिश करो, तुम्हारे कंपनीज में अप्लाई करने की कोशिश करो। अभी पेड इंटर्नशिप्स मिलना बहुत मुश्किल है, फ्री इंटर्नशिप्स ट्राई कर सकते हो। फ्री इंटर्नशिप्स में देखो कि कहाँ पे अच्छा नॉलेज गेन कर सकते हो और वहाँ पे जाके नेटवर्किंग करने का कोशिश करो। पर फिर गवर्नमेंट की पढ़ाई में हैम्पर होगा, वो एक चीज़ है। गवर्नमेंट की पढ़ाई भी बहुत डिफ़िकल्ट होती है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। 1000 पोस्ट के लिए कितने 3-4 लाख लोग अप्लाई कर देंगे, तो यू कैन अंडरस्टैंड किस इंटेंस लेवल का कंपटीशन फेस होता है। और उसमें से कई जन ऐसे रहते हैं 5-5, 6-6 साल लगे पड़े रहते हैं, ऐसे भी होते हैं। जहाँ पे वो एज अलाउ करता है उसके ऊपर भी है। यूपीएससी वगैरह में तो 6 अटेम्प्ट या कुछ है ना, 4 अटेम्प्ट या 6 अटेम्प्ट, अभी आई थिंक 6 कर दिया उन्होंने। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज फाइनलाइजिंग प्लान्स टू ऑफर इंसेंटिव्स फॉर लिथियम एंड निकल प्रोसेसिंग प्लांट्स, रॉयटर्स। युवराज भैया को बुलाओ, वो देंगे लाला कंपनी का ज्ञान।
Damn Shivam, the Indian government is considering introducing an optional joint income tax filing system for married couples in the Union Budget 2026. हाँ देखते क्या क्या लेके आते हैं, उस हिसाब से फिर समझ आएगा। फर्स्ट फरवरी को सब लोग तो ये सोच रहे हैं कि शायद LTCG और STCG, मतलब जो शॉर्ट टर्म्स कैपिटल गेन्स है और लॉन्ग टर्म्स कैपिटल गेन टैक्स है, ये इसको रेड्यूस या हटा सकते हैं, क्योंकि हाँ स्टॉक मार्केट की हालत उसकी वजह से भी बहुत ख़राब हो रही है। अगर ये हटा दिया तो FIIs के आने के चांसेस काफ़ी बढ़ सकते हैं, क्योंकि रूपी काफ़ी हद तक स्टेबलाइज फिर हो जाएगा एंड आउटफ्लो भी नहीं होगा। क्योंकि आउटफ्लो, जैसे आउटफ्लो होता है ना, आउटफ्लो मतलब क्या होगा, रूपी से उसको डॉलर में कन्वर्ट करेंगे, रूपी से डॉलर में कन्वर्ट करेंगे, तो वो भी एक वन ऑफ द कारण होता है कि रूपी डिप्रिसिएशन हो रहा है। हर दिन अगर FIIs बेचते रहेंगे तो रूपी में रहता है वो इन्वेस्टमेंट, उसको डॉलर में कन्वर्ट करके देना पड़ता है, जिसकी वजह से डॉलर अप्रिशिएट हो जाता है विथ रेस्पेक्ट टू रूपी। ओवरऑल डॉलर इज़ परफॉर्मिंग वन ऑफ द वर्स्ट ईयर्स। लास्ट 1-2 साल से डॉलर अपने वर्स्ट परफॉर्मेंस पे है कंपेयर टू अदर करेंसीज। इंडिया के अगेंस्ट में ही पूरा कांड हो रहा है। इंडिया को यहाँ पे फ़ायदा उठाना चाहिए था थोड़ा। अगर रुपया अप्रिशिएट होता ना तो अलग ही लेवल पे जाता, लेकिन एक्सपोर्ट मार खा जाता, वो एक प्रॉब्लम होता। कहीं भी जाओ नेटवर्किंग और रेफरल बहुत ज़रूरी है। यस तो सर जी फिर से मेरा चैट फ्लैग कर दिया। आई एम टेलिंग यू, आप पर नज़र रखी जा रही है अनलेस यू आर फ्रॉम टायर 1 इंस्टीट्यूट। हाँ इंटर्नशिप के लिए। यस AIC को उल्टा पढ़िए इसके ऊपर लिखा था कुछ वैरे। अच्छा लोग कह रहे हैं कि इन फ्यूचर AI सबका जॉब खा जाएगा, बट डोंट यू थिंक AI उतना एक्यूरेट नहीं है जितना कि ह्यूमन बीइंग्स। AI बहुत गलतियां करता है जिससे इन फ्यूचर बिजनेस में लॉस भी हो सकता है। हाँ तो वो रिडंडेंट देखो ये चीज़ समझो, AI गलतियां करता है, AI हमेशा गलतियां करेगा ज़रूरी नहीं है। अगर एक इंसान जब पैदा होता है, एक बच्चा जब पैदा होता है, तो वो क्या स्टार्टिंग से एकदम परफेक्ट होता है क्या? क्योंकि वो इंसान है। तुम ये KG के बच्चे को ABCD पहली बार सिखाओगे तो वो क्या इंसान, अरे मैं तो इंसान हूँ, मैं पहली बार भी परफेक्ट ABCD बोल के दिखाऊंगा। ऐसा होता है क्या? गलतियों से ही सीखते हैं ना। तो AI भी वैसे ही ट्रेन किया जाता है, जितनी बार मिस्टेक्स करेगा उतनी बार उसको वो फीडबैक, वो एक कांस्टेंट लूप उसको मिलता रहता है कि हाँ इसको ठीक करना है, इसको ठीक करना है, इसको ठीक करना है। और कुछ साल पहले AI में जिस हिसाब से तुम क्वेरीज डाल रहे थे और जो रिस्पॉन्सेस आ रहे थे, और अभी का देखो कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं हुआ है। वीडियोस में देखो, वीडियो में आज एक ऐसी ट्राई कर रहा था, यूट्यूब पे कुछ वाटर इफेक्ट था, यूट्यूब पे कुछ वाटर इफेक्ट करके था, तो वो मैं ऐसे ही ट्राई कर रहा था। मैं बेड पे हूँ और वाटर इफेक्ट वाला वो ट्राई किया और उसने मुझे जीन्स वीन्स खुद ही पहना दिया। मेरा सिर्फ शर्ट दिख रहा था, शर्ट तो वैसे का वैसे था, बट जीन्स उसने अपने आप से पहना दिया। और ऐसा रियलिस्टिक लग रहा है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी कर दिया है उन्होंने। तो ये 2 साल 3 साल पहले पॉसिबल था ऐसा सब? नॉट एट ऑल, पॉसिबल ही नहीं था ये सब चीज़ें। बट सीख रहा है ना, इम्प्रूवमेंट हो रही है और ये बहुत फास्ट रेट में इम्प्रूवमेंट होगी। और सही में अगर AI ट्रूली एक AI बना ना, क्योंकि ये भी एक चल ही रहा है कि अल्टीमेटली इसमें AI कुछ हो नहीं रहा है, वो है अभी भी डम। उसको रिकर्सिवली बहुत फीडबैक दे दे के चीज़ों को क्रिएट की जा रही है। एक्चुअल AI में उसका थिंकिंग अपने आप से वो इंडिपेंडेंटली ऑफ ह्यूमंस थिंकिंग करना चालू करेगा, तब जाके एक्चुअल AI बनता है। यहाँ पे इंडिपेंडेंट ऑफ ह्यूमन थॉट वाला सिचुएशन अभी तक क्रिएट नहीं हुआ है फुल्ली, और जो हुआ है उसको शट डाउन कर दिया गया है। तो यही है, तुम ऐसे मत सोचो कि अरे वो गलतियां करता है, लॉस करेगा।
और कंपनीज कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, कंपनीज करेंगे एक साइड में ह्यूमन वाला वो चलता रहता है, प्रोसेस चलता रहता है, और एआई वाला प्रोसेस चलता रहेगा, और दोनों मैच होते हैं, उसको रिकन्सिलिएशन का प्रोसेस बोलते हैं, जहाँ पे दोनों आउटपुट मैच होंगे। अगर वो ह्यूमन वाले में एरर ज़्यादा है या एआई वाले में एरर ज़्यादा है, वो कंपेयर किया जाएगा। जिस दिन ह्यूमन एंड एआई एरर इनडिस्टिंग्विशेबल हो जाएगा दोनों एक दूसरे से, तब वो ह्यूमन वाले पार्ट को कट ऑफ कर देंगे, उसको आइदर डाइवर्ट कर देंगे कोई और अदर प्रोजेक्ट या डिपार्टमेंट में, या फिर उसको कंपनी से बाहर में निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं जब काम कर रहा था तो मेरे डिपार्टमेंट में नहीं, बट मेरे डिपार्टमेंट की एक जो कलीग थी, उसका हस्बैंड जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहा था, वहाँ पे ऑलरेडी एक सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे थे जो कि पैरेलली रिकन्सिलिएशन का प्रोसेस वो लोग कर रहे थे, कि उनको अकाउंट्स कुछ मैच करना था और यहाँ पे ये लोग मैनुअली भी मैच करते थे। वो वाला तो कंपैरेटिवली फास्टर होता था, बट उसमें बहुत मिस्टेक्स होते थे, तो मिस्टेक्स फ्लैग होते थे और उनको मिस्टेक्स को ठीक करना पड़ता था। तो उससे क्या हो गया कि उनका प्रोसेस काफ़ी फास्ट होने लग गया था उस केस में। अब धीरे धीरे जब एआई का इम्प्रूवमेंट होना चालू हो जाएगा, और जब उसमें देखेंगे रिपीटेटिवली कि कोई एरर्स वैसे जनरेट हो ही नहीं रहा है, थोड़ा बहुत सुपरविजन, डेफिनेटली ह्यूमन सुपरविजन तो होगा ही, बट उसका रिक्वायरमेंट बहुत कम हो जाएगा। बहुत स्पेशल केसेस, यूनिक केसेस, एक्सेप्शनल केसेस में ही होगा, और मैन पावर भी कम लगेगा, पैसे बच जाएंगे। एनीवे, अभी गवर्नमेंट ने एक आधार ऐप रिलीज किए हैं जहां हमें और ऑफलाइन जाना नहीं पड़ेगा चेंजेस के लिए। अभी हम ऐप के थ्रू ही चेंजेस एंड न्यू आधार अप्लाई कर पाएंगे। अच्छा, यूजुअली गवर्नमेंट का उमंग ऐप करके है, उसमें सारे चीज़ें आ ही जाती हैं। में है क्या ये पर्टिकुलर चेंज करने वाला चीज़, मुझे याद नहीं आ रहा है, बट उमंग में तुम्हें मतलब गवर्नमेंट स्कीम्स एंड ऑल एवरीथिंग विल बी इन्वॉल्व्ड, सब कुछ मिल जाएगा वहाँ पे। Attrition rate of Indian IT companies in 2025: Wipro 14.2%, LTI Mindtree 13.8%, TCS 13.5%, HCL Tech 12.4%, Infosys 12.3%. Decent enough, ठीक है, इतना तो होता ही है। मेरे नाम के टूडे या शील्ड जैसा क्या लगा दिया है? टूडे जैसे क्या लगा दिया है, इसकी बात कर रहा हूँ आर्यन। आई फाइंड इट फनी दैट द फैक्ट दैट यू आर इंक्लूडिंग सम इंग्लिश वर्ड्स एक्चुअली अलाउज मी टू फॉलो द कन्वर्सेशन लोल। currently the situation is such that Hindi is not spoken purely, like the language that we speak, we may say it is as Hindi, but it is not actually Hindi, it is Hindustani, where it is a mixture of Hindi and Urdu, and now it has become more of English. Like it is a term which is used amongst the people here, because we are using lots of English words within Hindi, and that is something which has unknowingly happened. We can understand pure Hindi in majority of the cases, but we don't use many of the Hindi words in our day-to-day lives. We use English words for those things in many of the cases. And nowadays it is a mixture of various languages, and it also depends on which part of India you belong to, or which part of India you are speaking in. That also has a major impact in the way you speak a particular language. The more you go towards the rural side, English is used comparatively less. But now, because of social media, nowadays people are using English words while speaking Hindi. Pronoy Paul, welcome to the stream. Is it good for streaming gaming? Ryzen 7 250 24GB RTX 5050. 24GB RTX 5050. Why are you getting RTX 5050? At least go for 5060. Ryzen 7 is generally good. I don't know about 250. अच्छा 24GB RAM.
और what is the VRAM of RTX 5050? प्रोना ये तो लॉग लग रहा है. LOQ हाँ. 24 GB VRAM डैम. I don't think 24 GB VRAM होगा. वो 24 GB RAM की बात कर रहा है. 5050 में 24 GB क्योंकि जो 50 सीरीज होती है, बैकवर्ड वाली 50 जो सीरीज होती है, दैट इज अ बजट कार्ड ऑलवेज. 3050, 4050, 5050, it is always the entry card to the series. 24 GB VRAM doesn't make sense. I think that is only just RAM. VRAM उसका 8 GB के ऊपर मुझे नहीं लगता रहेगा. The Indian state of Goa is considering banning social media for children below 16. This is something that should be done all over India, not only Goa. ये चीज़ मुझे बहुत अटपटी लगती है. ये जो state level different laws होते हैं. In some cases it is fine, but these kind of laws should be enforced either the whole of India or nowhere at all. हाँ LOQ है. I see lol. कितने का मिल रहा है ये मॉडल? Right, yeah, I see. 1,07,000. लैपटॉप है ना, लैपटॉप पे पूरा करोगे तो देखो थोड़ा तो दिक्कत होगा. इट इज गोइंग टू हैव सम इश्यूज. थोड़ा बाद में की तरफ होगा. गेमिंग के लिए इट शुड गिव यू गुड इनफ परफॉर्मेंस. 50 मतलब फर्स्ट पार्ट 50 वाला सीरीज है. 5000 या रादर आई वुड से 5000 सीरीज का है. सो इट शुडंट बी लाइक कि मच ऑफ एन इशू स्पेशली इन द अर्ली डेज. बट वो थर्मल मैनेजमेंट एंड ऑल ना, वो बहुत तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा. लैपटॉप गर्म बहुत हो जाएगा गेमिंग करते करते. एंड इफ यू डू स्ट्रीमिंग देन इट एड्स मोर स्ट्रेस इनटू इट. आई सी लोल. कितने का मिल रहा है? 1,07,000. डू यू थिंक न्यू टर्म्स आर स्टिल गेटिंग हिंदी इक्विवेलेंट्स, एग्जाम्पल AI related terms, or do the youth mostly just say English word, hence mixing the language more? Hindi related terms in many cases are there. Like for a computer, there is a Hindi related term. It is called as a Sanganak. But you will not hear people saying Sanganak in our daily language. We will always say computers. Like computer science. Computer science in Hindi is known as Sanganak Vigyan. But nowhere in India you will hear someone saying that I am studying Sanganak Vigyan. मैं संगणक विज्ञान पढ़ रहा हूँ. Nowhere in India they will say. Many people don't know at all, even though they are studying computer science. So that is the thing, in especially in academics, scientific terms, or things that are coming in daily, like a selfie. Selfie has got induced in the English language as well, but now it is used in Hindi as well. Because in Hindi, if you want to make selfie as something, it sounds much more stranger. So majority of the times, the English word is taken in instead of the equivalent Hindi word, even if it is available. The more accurate translation would be available in Sanskrit, but Sanskrit is a very lesser known language. Very few people have the complete knowledge of Sanskrit, and those are also in certain pockets of India. So not everyone knows Sanskrit fluently, but that is like the source of majority of the languages in India. Even not only in India, but also European languages. Since if you look at the root languages, it is like Indo-Proto-European, some languages there, and there are words you will find in European languages which are similar to Sanskrit as well. It is very interesting if you look at the language part of it, if you try to find out the root words of it. And actually not just youth, but I guess people in general, lol. Yeah, once youth start speaking it, the rest of the adult population, they also get to know, it becomes normalized and they also speak that term only.
8 GB VRAM, 8 GB VRAM, 24 GB रैम. हाँ थोड़ा वैसे थोड़ा देर के लिए ऐसे ही लगा कि 24 GB VRAM, बोले ये तो सेंस नहीं बन रहा. The Hindi word base is like some new word samurai is being used in domestic. It is like okay, I am gonna include it in my dictionary. I guess इसके पास best यही GPU मिलेगा. For 5060 you will have to pay 20-24K more. हाँ तो वो फिर actually काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, but if you start at a particular series like a 5000 series, I would suggest 5060 अगर होता तो better होता. But ठीक है, मतलब 24 GB RAM, 8 GB VRAM with the 5000 series, good enough. Not the best of the best. एकदम तुम्हें जो अगर फ्यूचर के लिए अगर सोच रहे हो तो हो सकता है कि फ्यूचर के हिसाब से थोड़ा दिक्कत हो. 3 साल तक तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आना चाहिए, बट 5 साल 7 साल ऐसा 6 साल वैसे सोच रहे हो तो वहाँ पे शायद थोड़ा दिक्कत हो सकता है. बट 3 साल के लिए तो आई डोंट थिंक इट विल बी मच ऑफ एन इशू. एंड क्या पता 3 साल के बाद और सस्ता हो जाए, सिचुएशन धीरे धीरे कूल ऑफ हो जाएगी, AI बबल भी अगर बस्ट हो जाएगा, देन slowly things will get normalized and you will get things at a much cheaper rate. कौन PC बना रहा है? प्रणय पॉल बना रहा है. वो अभी लैपटॉप, मतलब डेस्कटॉप नहीं बना रहा, लैपटॉप बना रहा है. वो लैपटॉप ले रहा है, तो ये स्पेसिफिकेशंस का बता रहा था. 1.7 लाख फॉर LOQ, देन इतना रेकमेंड नहीं करूँगा. LOQ 1.7 नहीं, उसका 1,07,000 उसने बताया. LOQ रिसेंटली बहुत लैब फेलियर हुआ है, इंटरनल डैमेज. अच्छा 1.07 lakh. Oh right, haha. Maybe cause a lot of YouTube online content is in English now, so people refer to stuff in English also. Lol. Indians in general, especially the urban population, they are very much comfortable in English, so they don't bother about learning the equivalent Hindi word or the word in their own mother tongue. Like whatever the word is in English, there will be a translation in Hindi. There may be a different translation in Bengali. Like my mother tongue is Bengali, so it may be a different translation in Bengali. Some other guys, if he's a Marathi, he will have some other translation. Sometimes Hindi and the regional language may match in some cases, but in some cases it may be different altogether. So it changes, and accordingly there may be people who are a bit orthodox. They may know the equivalent Bengali word for it. Like in my case, there may be a person who knows the equivalent Bengali word for it and he speaks it in Bengali. But I don't interact with much of those people. I will interact with people, either the students or you guys. So you will be speaking more in English, and very rarely do I bother to learn the equivalent regional language. It means bother to learn about the equivalent word in the regional language or in Hindi also. क्रिकेट को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्रिकेट को क्या बोलते हैं इंग्लिश में या हिंदी में? क्रिकेट तो ऑलरेडी इंग्लिश में क्रिकेट ही होता है. वो एक हिंदी में उसका था कुछ लंब दंड गोल गेंद ऐसा कुछ तो उसका बोला था, भूल गया अभी वैसे. TDP पावर देख लेना प्रणय, 120 वॉट से कम मत लेना. इवन 1 लाख भी LOQ लेना बेकार या मिड रहेगा. इफ 70-80K रहेगा तो बेस्ट है, बट 1 लाख पे अदर ऑप्शन बहुत है. देखो अब थोड़ा जल्दी लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी रैम शॉर्टेजेस वगैरह अगर हिट कर दिए तब यही 1,07,000 भी कब 1,70,000 हो जाए उसका भी कुछ भरोसा नहीं है. अनलेस एंड अनटिल वो बबल अब भी तुरंत बर्स्ट हो जाता है और सब नॉर्मलाइज होने लग जाता है. एवरीथिंग इज नाउ गेटिंग मच मोर एक्सपेंसिव. GPUs are also getting expensive. Storage is also getting expensive. RAMs are also getting expensive. HP Victus तो मत ही लेना.
बेचारा लेगा क्या, सभी अगर नहीं लेना बोल रहे हो तो। जीपीयू पे डब्ल्यू कितना है? With social media, for example, do you think people in India would use Instagram in English UI or Hindi UI, for example? Ultimately, it depends on which region you belong to. There are people who use it in Hindi. There are people who use it in their own language as well. Their own regional languages as well. I have seen many people who are using it in Bengali. I don't know exactly for Instagram they use Instagram or not, but their mobile interface is in Bengali. There are many people who use it in Hindi as well. For me, I feel it is a nightmare, but people who are used to it, they type Hindi in it very easily. But I am comfortable, if I even try to write in Hindi, I will write it by using the Roman script. That is easier for me. But that sometimes creates some hilarious misunderstandings. The Hindi script, or rather the Devanagari script that Hindi uses, is much more accurate. The chances of having a misunderstanding is very less. But in English it can be very funny in certain situations. और very embarrassing in other situations. Victors तो बहुत ही बेकार है. We use English medium UI but chat in mix of English of Northern Belt with region word bases and Southern Belts. Same with English plus native languages. प्रणय पॉल, कोई भी लैपटॉप लो तो वारंटी 2 ईयर तक एक्सटेंड करवा लेना. 115 TDP देन अच्छा है. दैट्स कूल. एलियनवेयर भी आ रहा है बट कुछ 1.1 लाख में उसका वेट है. देखो कौन सा आ रहा है. 40 सीरीज का देख लो. 40 सीरीज का कैसा, कौन से रेंज में आ रहा है. 40 सीरीज मतलब बेसिकली 4000 सीरीज की बात कर रहा हूँ. उसका क्या प्राइस चल रहा है, उसका क्या स्पेसिफिकेशन है, देखो. अगर वो भी एक बार चेक करके देखो. राइट, या आई सी लोल. इंडिया में जॉब के वास्ते इंग्लिश जरूरी होंदा सी. That is true, because in many cases, if you are having clients, international clients, then majority of the cases you have to speak in English. So whether it is US, UK, Canada, or in some cases Middle East as well, they are also learning English, and they are also becoming much more comfortable, especially if the clients are from Saudi or maybe UAE. So they are also willing to speak in English as well. Nowadays maybe Europe will be speaking in English. So, and they have told that they are going to bring in more Indian people for IT services and all in Europe. In 1 लाख में 115 TDP ना भाई. एक जन नीचे देख लो. सपोज इफ यू हैव 60W TGP plus 3050 and I have 120W TGP with 1650, I will still have more FPS. हाँ, TGP पे थोड़ा कम दिया है. किसका आफ्टर सेल सर्विस अच्छा है, लेनोवो और एसस? क्रिकेट का वो भूल भुलैया में बताया था ना परेश रावल ने. उसका पहले भी बहुत बार उसके बारे में पढ़ चुका हूँ, बट वही है, रेगुलर अगर यूज नहीं करते उसको तो फिर तो भूल ही जाओगे. नए पॉल, दोनों ही सही है. एसस में कौन सा मॉडल देख रहे हो? एसस वैसे बहुत सही है. उसका वो जो आर्मरी क्रेट का सॉफ्टवेयर आता है वो भी बहुत अच्छा है. एसस का वो एक चीज़ जो है, वो मोबाइल पे भी आर्मरी क्रेट का सॉफ्टवेयर देते हैं, लैपटॉप्स पे भी देते हैं. वो काफ़ी अच्छा है. बाकी इसमें वो उतना बढ़िया तुम्हें सॉफ्टवेयर शायद ना मिले. तुम्हें RGB वगैरह कंट्रोल करना है तो वो सब के लिए भी बहुत एसस का वो सॉफ्टवेयर, आर्मी किट का सॉफ्टवेयर बहुत सही है. दोनों ही सही हैं. लेनोवो तो लास्ट ईयर अच्छा था, अभी जनवरी पे बहुत केसेस निकला है. When the newest graphics card release, how is the demand supply in India usually? Do they get bought up and people try to sell for higher? Curious. Scalping does happen, but I don't think
at the same rate as what happens in US or maybe in UK also. I don't know exactly if in UK it happens or not. Scalping in India, I feel it is relatively less. Like in US, it goes to maybe 2, 3, 4 times the price of the actual thing. Here it won't go at that crazy level, at least for now. You can't say about the future. अगर गर्म इलाके में रहते हो तो ASUS स्टफ मत लेना, लैपटॉप विल बी कुक्ड. फ्रिज में बैठ के लैपटॉप चलाना और क्या. वो तो है. एंड वो गेमिंग लैपटॉप में वो काम आता है, वो जो एक कूलिंग पैड रहता है जो लैपटॉप के नीचे लगा के बहुत जन चलाते हैं. इन सम केसेस पीपल हैव फाउंड सम बेनिफिट जहाँ पे 4-5 डिग्री कूल हुआ है. बट इन जनरल अगर मैं एसी में नहीं बैठा हूँ तो उससे कुछ फायदा मिलता है. Okay, let's talk. Good evening, miss. Lady. I'm Dr. Jonathan Reed. May I have your attention for a minute? Good evening, sir. My name is Giselle Paxton. My name but is I don't Giselle have time Paxton. for men like you. Have we met before? No. But I just need to look at your fancy clothes to know that you must be desperate to visit the docks at night. That's quite judgmental of you. Sir, I've led enough strikes when I had a job to identify you as an enemy of the working class. May I ask what you do for a living? I'm killing myself scraping for a living. And you? Have you ever had to struggle in your entire life? As I told you, I'm a doctor. You have to work a lot to earn that title. Oh, a doctor. Born with money in a nice house, were we? Was Daddy Nice a banker house. or a doctor himself? From what I have observed, majority of the time they don't pronounce H at all. So born in a house. What happens in India? Usually we say house, but here she's saying born in an house. You need to talk to him himself. We will stress the H. We will say himself. That's why foreigners feel that our accent sounds odd, especially the guys in US. Why such hatred? Are you judging me by my clothes and my job? Course I am. Fuck, you're so blind. You don't even see your privilege. Lazy people like you disgust me. What can you tell me about this vicinity? Tell you what, just spend a few weeks here and then ask me that question again. If you're still alive, I mean. If you have something to say, say it. I'm getting tired of all this. Oh, you want information instead? Well, here's some for you. Giselle Paxton does not like you at all, Doctor. I see. lol. Sorry, खाना खाने गया था. कौन डेस्कटॉप या लैपटॉप लेने की बात कर रहा है? लैपटॉप तो कोई कंपनी का परफेक्ट नहीं है. ईच ऑफ देम हैव सम सॉर्ट ऑफ इशू अनलेस यू आर परचेसिंग अ हाई एंड वन लाइक लीजन और ROG. हाँ, या I see. lol. ASUS F16 Intel i7 5050 RTX 16GB RAM and 8GB VRAM. i7 5050 16GB RAM 8GB VRAM. ये भी decent है. क्या प्राइस क्या चल रहा है? Now its price airy. It was affordable back in 2023. ROG Strix 18 तो मस्त है भाई. 1 लाख बजट पे उसका डिस्प्ले आर्मरी क्रेट फीचर बढ़िया है उसका. या I see Nikhil.
सर जी को चाहिए 5090 लोल ट्रू। एसएस टफ है क्या भाई? एचपी ओमेन कैसा है? मुझे तो ठीक लगा। प्रोनॉय टफ सीरीज ओनली गेमिंग के लिए ही है बस, इफ़ लॉन्ग टर्म देख रहे हो तो टफ बहुत मिड है, उसका बिल्ड क्वालिटी बहुत ही एवरेज है एंड हैवी भी है, वो डिस्प्ले तुम्हें वो स्ट्रिक्स जैसा नहीं मिलेगा। ओमेन विक्टर्स का जो हालत है ओमेन का वही है। टफ अवॉइड करो, LOQ ही ले लो बट वारंटी एक्सटेंड कर लेना। मैं खुद टफ लेके रिग्रेट कर रहा हूँ। क्यों टफ में क्या तुम्हें प्रॉब्लम हो रहा है अभी शिवम? खुद ओके हाँ ओके आई सी लोल। ROG 3 के बाद सेल आया ही नहीं उसके फ़ोन का, सोचा था हेडफोन जैक के कारण न्यू एडिशन लूँगा। ROG 3 बहुत सही है भाई, अभी भी चला रहा हूँ। इट हैज़ बीन मोर देन 5 years एंड वेरी लेस इश्यूज। मुझे एटलीस्ट कोई खर्चा नहीं करना पड़ा टू यूज द फोन फॉर नाउ। The only initial issue that I faced was there was no headphone jack in the phone. That is the only issue I faced. Later on, जैसे ही मैं PC के थ्रू स्ट्रीमिंग करने लगा तो वो वाला इशू तो चला ही गया। I use the headphones through my desktop. Cooling pad is the shittiest thing made by man. वो तो पहले से तो कूलिंग पैड तो इनफेक्टिव सुना ही था, बट द थिंग वाज मुझे लगा इतना टाइम तक अगर यूज़ हो रहा है और कुछ लोग यूज़ भी कर रहे थे, वो लोग बोल रहे हैं कि उनको बेनिफिट मिल रहा है, तो मुझे लगा कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ रहेगा। आई डोंट नो अभी क्या है भाई। हम डेस्कटॉप वाले हैं, हमें नहीं मालूम लैपटॉप के बारे में। अभी थोड़े दिनों पहले ही लैपटॉप का ये देख रहा था, ये अभी डेस्कटॉप वाले हैं हम। एक महीना पहले तक भी उसका लैपटॉप चल रहा था गुणगान। अब जब डेस्कटॉप ले लिया है तो अब अरे हम अभी डेस्कटॉप वाले हैं, लैपटॉप का नहीं पता। लैपटॉप स्टैंड काफ़ी है। हाँ अब जला लो। मेरा ROG Flow X13 अकेला वर्ल्ड का बेस्ट 3-in-1 लैप है अभी तक तो। अभी लोग हे थोड़ा बजट है तो एलियनवेयर ले लो, उसका परफॉर्मेंस उस प्राइस पॉइंट पे कोई नहीं है, स्ट्रिक आ सकता है। कैन यू चेक एंड टेल Ryzen 7 250 कैसा है प्रोसेसर? Ryzen 7 250 कोई है क्या जिसको आइडिया है? मैंने Ryzen 7 तो सुना है, 250 पहली बार सुन रहा हूँ, सही बताऊँ तो। क्या बताओ सर जी, कॉलेज में 2 महीने बाद एक दिन चेक करा लैपटॉप की डिवाइस मैनेजर पे GPU पे कुछ एरर दिख रहा है, फिर सब कुछ करके देखा टू फिक्स इट पर कुछ नहीं हुआ। क्या बात कर रहे हो, 2 महीने के बाद ही? और अब कितना टाइम टोटल यूज हुआ है तुम्हारा अभी तक? एंड में यही था कि GPU लगता है उड़ गया है मेरे लैपटॉप का, नॉट इन वर्किंग कंडीशन एनी मोर। दैट्स रियली सैड आई वुड से। टफ सीरीज बना ही था उसी फैक्टर्स के लिए, तो उसी POV से सोच के लेना पड़ता है। किसी को बस फीचर्स चाहिए, किसी को बिल्ड क्वालिटी एक्सेट्रा। अब वही मेन, व्हाट इज़ योर प्रायोरिटी, यू हैव टू डिसाइड फर्स्ट। वो एक बार सेट हो जाएगा देन यू विल बी एबल टू फिल्टर डाउन कि मेरा प्रायोरिटी क्या है, मुझे बजट मेंटेन करना है, मुझे ये पर्टिकुलर यूसेज मुझे करना है, जैसे स्ट्रीमिंग एंड गेमिंग करना है, वो मेरा हाईएस्ट प्रायोरिटी है, या मुझे कुछ अपने कॉलेज रिलेटेड वर्क का मेन प्रायोरिटी है। सो दैट यू हैव टू सी। प्लस लैपटॉप है एंड इफ़ यू आर रेगुलरली ट्रैवलिंग देन यू नीड अ लैपटॉप दैट इज स्टर्डी इनफ, रोबस्ट इनफ। तो उस केस में यू नीड टू मेक श्योर दैट द बिल्ड क्वालिटी इज़ गुड इनफ। अदरवाइज इफ़ इट इज़ वेरी डेलिकेट तो बहुत जल्दी वो ख़राब हो जाएगा लैपटॉप। वेयर एंड टेयर में भी बहुत जल्दी वो ख़राब हो जाएगा। फॉलआउट 3 अच्छी गेम है ना? सुनी तो है मैंने, फॉलआउट 3 अच्छी गेम है, मैंने पर्सनली कभी खेली नहीं है, बट द ग्राफिक्स में भी है बिट आउटडेटेड क्योंकि थोड़ी पुरानी गेम है। बट फॉलआउट 3 इज़ कंसिडर्ड एज अ वेरी गुड गेम। फॉलआउट 3, फॉलआउट न्यू वेगस इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ वेरी गुड गेम।
The earlier Fallout games are also very good. That is why Fallout का franchise बना. Fallout 4 is considered as okay-ish. The gameplay is enjoyable, but the story is not that good, from what I've learned. Total तो लैपटॉप का 3 साल हो गया है. अच्छा. तो 3 साल में से कितना साल चला? 2 साल. Fallout तो full RPG, yes. 250 सीरीज AI कैपेबिलिटीज का है एंड पावर एफिशिएंसी के लिए है, परफॉर्मेंस के लिए मोबाइल POV से 10K जैसा परफॉर्मेंस. मतलब बढ़िया है ना तीसरा पार्ट? हाँ बढ़िया तो है, जितना सुनने में आया उतना तो बढ़िया तो है. ग्राफिक्स वाइज शायद उतना मजा ना आए, वही बताओ. You don't know me, Miss Paxton, and yet you see me as an enemy. Miss Paxton. Your manners, वो your TON की clothes, जगह your TN कर words देंगे tell तो me Paxton हो everything जाएगा. about you, sir. I know your kind, and you don't belong here. Yo, don't belong here. Oh no, Miss Paxton, you really don't know my kind. You have no idea who I am. All right, okay. No need to get all worked up. Okay, she's healthy. You speak of strikes and class enemy. Am I right to assume you're involved in trade union activism? You bet I am. Well, I was. You bet I am. Nowadays, I'm just another worker blacklisted by the big companies. You lost your job because of your beliefs. Those bastards really hate a worker who refuses slave wages Hate. and unsafe conditions, especially when it's a woman. Here she said height. Height of woman. 2.5 साल चला I guess. Paxton. 250 सीरीज अगर AI कैपेबिलिटी के लिए है तो फिर गेमिंग में तो बहुत ज़्यादा हेल्प तो नहीं करेगा आई फील. अगर AI कैपेबिलिटी के लिए ज़्यादा बनाया है उन्होंने तो उस केस में यू कैन क्रिएट योर ओन LLM सर्वर्स विद इन द लैपटॉप और वैसे यूज़ कर सकते हो. देयर इज़ अ न्यू AI tool called ClaudeBot. CLAWDBOT. So for that, if you have a good enough laptop or desktop, like Mac 3 mini types का ऐसा कुछ कोई रहेगा, तो उसमें बोलते हैं कि it works very well. It is your own personal AI, which is powerful enough to do many things by itself. मतलब तुम्हारे end से it will write the the emails also by itself, and there are certain things that it will do it by itself if you are giving the code and the जो उसका वो autonomous जो nature में वो काम करेगा उसका authority उसको दे दिया तो. So जैसे कि अगर तुम्हें कुछ buy करना है तो not only it will try to get the best result but also do the buying for you. तो इस लेवल पे वो काम करेगा and it will be working 24/7 for you personally. There is no requirement of a server on the web end. Support from the trade union. Isn't the whole point of trade unions to help workers in need? Why don't they support you? A few nights back, I lost the money my companions had asked me to hide. With me and my sister being penniless, they thought I stole it. What really happened? I drank too much that night. Strange men saw me count the money in that bar. Some sort of militia in uniform. I'm sure they robbed me. I'm looking for Sean Hampton. Can you help me? What is it you want? Does he owe you money? Has he displeased your Royal Highness? I'm no snitch, Mr. Fancy Pants. Well, I'll leave you for now. Goodbye, Miss Paxton. Miss Paxton. It's locked. It's locked, all right. Okay, let me just try to find him. Find Sean in the area.
कुछ नहीं है ना. Sean Hampton. Sean is here. Why the long face, Doctor? Is it all that worries you, Sean? My long face? Really? This is a blessing for me to become a Skal. Immortality gives me more time and energy, if truth be known, to run a shelter. What more could I want? Since you left Pembroke, the amount of blood that has been shed, it's hard to believe you, Sean. Ask what you will. As the Lord is my shepherd, I will not speak a lie to you. He's healthy, but I don't think so. Why return here? This is my home. These people are my flock. You will always find me where I am needed. You are a helpful Skal. Wonders never cease. Skal managing an asylum. And what of you? A vampire doctor? Meals laid out before you. Yet you restrain. And what about William Bishop? He tried to take care of you. But this hunger, this thirst, cannot be restrained. Alas, poor William. He had a good soul, but was weak in spirit. He could not shake the thirst for booze, never mind blood. But have faith. My will is far stronger than his. Far stronger than his. He's Irish, I think. Sean Hampton. मैं तो बोलूँगा सेल का वेट करो, होली में सेल आएगी. आई गेस धुरंधर आ गई. धुरंधर नेटफ्लिक्स में. अरे क्या बात है. परसों देखूंगा. परसों क्या, कल ही देखूंगा. आज तो फ्राइडे हो गया. कल देखूंगा धुरंधर. मजा आएगा. Aren't you afraid of what you've become? We are blessed, Doctor. Can't you see it? The Lord has made us able to walk amongst the plague and aid those that need it. Do you think this is a blessing when God's own house and holy symbols repel you? If that is your burden, Doctor, so be it. But I do not fear the cross, nor am I forced to take the life of another. My kind doesn't share your imperfections. Yeah? But you must drink blood now to survive. No, not your scripture. Whoso eateth my flesh and drinketh my blood hath eternal life, and I will raise him up at the last day. So saith the Lord. I only need to eat flesh, no blood. Why did you kill Miss Jones at the Pembroke Hospital? Killed old Harriet? You must be mad, Doctor. Why would I do such a thing? But you were close to her. Of course. But she was lost, separated from the fold. She did not see the hand of the divine in my blessed condition. So you claim Miss Jones' death was not by your hand, nor the other incidents at Pembroke? Though Harriet was an angry, spiteful woman, she was one of God's creatures. I have nothing but love for all he has made. People have been murdered. I've seen the blood. I don't believe you can be trusted. Have a little faith, Doctor. If you will follow, I will guide you to the light. How do you plan to do that? Take this key of the old sewers. The entrance is by the riverbank, south from here. There you'll find all the proof you need. ये मार्वल की वंडरमैन भी आई है. हाँ मैंने थोड़ी बहुत देखी, 4-5 एपिसोड देखे मैंने. अच्छा लगा है, बट वो स्टैंड अलोन में तो सही लग रहा है. वो ओवरऑल मार्वल में कैसे कनेक्ट होगा वो मुझे अभी तक नहीं पता. अभी तक मैंने एंडिंग नहीं देखा है, बट एज अ स्टैंड अलोन सीरीज देखा जाएगा तो इट इज़ अ वेरी गुड सीरीज. एंटरटेनिंग है, थोड़ा मिस्ट्री वाला भी एलिमेंट लग रहा है. सही है. चलो सर जी, गुड नाइट. हाँ मैं भी ये वाला एक मिशन कंप्लीट करके ख़त्म कर रहा हूँ. आई होप जल्दी ख़त्म हो जाए.
और जिसको जो भी लेना है अभी ले ले वरना बाद में पछताएगा। हाँ अभी वो शॉर्टेजेस वाला सीन चल रहा है, होली तक वेट करोगे तो होली मोली हो जाएगा तुम्हारे वॉलेट का तो होली तक वेट नहीं कर सकते, नहीं तो मैं खुद ही बोलता है कि थोड़ा वेट ही कर लो। वे दिसंबर तक जिन्होंने ले लिया, दिवाली या दिसंबर में ले लिया, उनके लिए सही है, बट इसके बाद से प्राइसेस और राइज होते जाएंगे जितना और शॉर्टेज, आर्टिफिशियल शॉर्टेज और क्रिएट करेंगे लोग। एआई बबल फटेगा तब जाके वो ठीक होगा, अभी वो कब फटेगा एग्जैक्टली नहीं पता हमें। अब साइबरपंक खेलूंगा पार्ट ट्रैकिंग में, पार्ट ट्रेसिंग। हाँ खेलो खेलो। Very well. You have definitely intrigued me. I hope you're right, Sean. I'll be here when you return. If you still think I'm a threat then, well, I'll surrender myself to your judgment. Give a dog a bad name. Explore the sewers to discover Shawlhampton's secret. हो सकता है मेरे लिए उसने ambush setup किया हो। फोल्डेड पेपर, क्या है ये फोल्डेड पेपर? वेस्ट आइटम्स का कहाँ पे गया था? Forgive me, God, for what I am about to confess. Sometimes I wish I never saved Dyson Delaney from drowning when he fell in the canal. There I said it. Please forgive me, Lord, for I am just a sinner. Dyson may be the most frustrating case I have ever had to deal with since I opened my night shelter in the East End. For years I have tried to understand why this man regularly makes me so irritated, and I think recently found why. Dyson has stopped fighting for good and forever. I have met so many heavy drinkers in my life, men and women, rich and poor, young and old. I have witnessed their fight, guilt, keep fighting. Of course it is a useless destructive form of struggle, but at least this self-destruction means that something makes them suffer. Even a severe alcoholic like William Bishop keeps struggling with his addiction and asking for salvation for the light of Christ. And as long as they wish to see this light, there is a place for hope. Dyson Delaney has no hope left. He does not drink to smother his pain. No, I am now convinced he conscientiously drinks for the serious joy of smothering all hope. I really don't know what is the worst sin, to deliberately cast away hope from your own heart or complacently bask in self-destruction. मैं DGPU को ग्राफिक्स प्रोसेस करने दे रहा हूँ एंड मेरे PC के IGPU को फ्रेम जनरेशन में लगा रहा हूँ। देखो फ्रेम जनरेशन में लगा के अगर तुम्हें इनपुट लैग फेस करना पड़ रहा है कि नहीं। इधर जाना है 129 मीटर। ए इधर से उधर भगा रहा है, उधर से इधर भगा रहा है। ये चीज कभी कभी अनोइंग हो जाती है फिर। Burnt letter. Miss Paxton, I recently heard that Hampton stayed still for months and money or support of any kind without any positive answer from you. My boys always get what they accepted for no for an answer. Keep on refusing to answer. When good boys come, you and your sister. T. Paxton, Giselle Paxton. अभी ऊपर ऊपर नहीं जाना है, यहाँ पे कुछ सामान है तो वो ले लेता हूँ।
Old newspaper. The bomb exploded just after dawn in front of Dawson and Dawson Munitions factory, the largest employer in the district. The detonation smashed the windows of all factories in North Southwark. It's a miracle only 2 people died in the attack, confirmed Chief Superintendent Alexander Brighton. This must be a picture of the bomb explosion Dyson Delaney spoke of. उसके घर के ही 2 बंदे मरे. So even though लग रहा है कि हाँ 2 ही मरे हैं, but उसका तो पूरा परिवार ही उजड़ गया. डाइसन डेलेनी का. Wet boots shouldn't be fighting each other. They've got bigger problems elsewhere. Okay. Understood. Is there a way to bypass these guys? Let me try to bypass these guys. Maybe this will work. This isn't working. Sad life. Door has been unlocked. A prevent note. Vampire hunter fraud avoid. Some of our scouts recently spotted the presence of a certain Ichabod Throgmorton near East End Docks. You will probably see him patrolling the place at night, claiming that he's a specialist of vampire extermination. The man is a fraud, not even a real conman, for he does not charge anybody for the work, but he clearly has no clue what he's talking about. If he ever approaches you for some joint hunt or collaboration, refuse and let him go. In a leech fight, the man is nothing more than a bait. meters more. Sorry, sir. No admittance. Over there! This could be the public house Giselle Paxton mentioned. I should investigate further.
struggling. क्या करना है? Giselle's stolen money. Giselle, here is the money collected by the comrades to support the next strike. Please keep it safe until the bloody supervisor stop asking questions and swooping around. Thanks. Everyone has some unethical ways of financing their war. Like the sewer's entrance. To each man his duty. Ours is to flush every hole with Sewer our नीचे नीचे है ना फिर तो. Don't have to start with the darkest holes first. This door is solid. Means someone serious about Over there! There's one of them burning! अच्छा ये वाला. It ain't human! Get it! Fear no evil! We do the Lord's work! Crush the leech, boys! Christ! Christ! He's dead! यहीं पे है sewer's entrance. Yes. Yo sir, I'm back. डिनर करने गया था. ओके ओके. भाई आज भी लेट हो गया. ये गेम ही ऐसा है ना. प्लस हम लोग बहुत देर तक बातें भी कर रहे थे, तो वो भी एक चीज़ है. गेम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया. धीरे धीरे करके एक एक परतें खुल रही हैं. मुझे तो लग रहा है एम्बुश है. सीवर्स में कौन सा वो झंडे गाड़ रहा है वो, उसको कुछ ठीक करना ही रहेगा तो सही से ठीक करता. सीवर में भेज रहा है मैं. It's locked. That doesn't work. So that's it. These wheels control the water level. पजल दिया है क्या हमें?
इधर से नहीं जा सकते। That gate should shut properly now. That doesn't work. That doesn't work. Why? करना क्या है? रुको, अगर मैं दोनों को बंद कर दूं सकता हूँ, जा तो सकता हूँ। ये वाला maybe can work. The shilling हो गया वैसे 33. तो यहाँ से जा ही नहीं सकते। Skull is dead. Skull is dead as well. के चीटों को फॉलो करना है। I have this thirst for blood. I can't believe I'm doing this. I can believe that you are doing this. चूहा तो नहीं था ना? हाँ, चूहा ही था। I cannot enter. अरे ये तो वो है, क्या नाम था उसका? एंकल ऑन क्या?
These maggots have escaped the wrath of Ascalon for too long. It is time to purge the sewers of their filth. You again! The one they call the sewer dog. Hold your tongue, newborn, or I'll crush you like a maggot. You've let the beast consume you. Finally! A touch of lucidity. अब बॉस फाइट होगा यहाँ पे तो चैट लिखे जा रहे हैं लोग और मुझे ही नहीं दिख रहा है ऐसा है क्या सीन क्या नहीं चैट किसी ने लिखा ही नहीं है सब सोने चले गए वैसे टाइम तो हो गया सोने का पर मुझे ऐसा लग रहा है इसको खत्म करके जाता हूँ Learn to respect the laws of Ascalon! My power you cannot comprehend! Crushes all! Snap like Whence you vanished, I'll slaughter these scalds while singing your name. What? You dare challenge the dictates of Ascalon? Boss fight, yes. Boss fight. You have been defeated. कांड ये है कि खून बहुत कम मिलता है अगर हम मर गए तो इतने से खून से शुरू करना पड़ता है फिर खून कम रहता है तो फिर हमारा हेल्थ बढ़ाने के लिए स्कोप कम हो जाता है Defeat Fergal Bansha. You shall learn to respect the laws of Ascalon. The hand that crushes all!
Once you vanished, I'll slaughter these skulls while singing your name! You dare challenge the dictates of Ascalon? My power you cannot comprehend! And thine shall be a fair skull to adorn my mantle! The dictates of Ascalon! अरे नहीं, अच्छा तो कर रहा था यहाँ पे। इनका लेवल इतना हाई है कि एक पड़ जाती है तो फिर बहुत मुश्किल होता है वहां से रिकवर करना। स्पेशली ये शैडो वाला वो बहुत दिमाग खराब करता है। उसको तो वो तो है ही पावरफुल, ऊपर से एक शैडो भी आके मारना चालू कर देता है। You shall learn to respect the laws of Ascalon! Your neck shall snap like a hare's. I am Fergal Banshee, the hand that crushes all! Dare challenge the dictates of Ascalon? Whence you vanished, I'll slaughter these skulls while singing your name! My power you cannot comprehend! And thine shall be a fair skull to adorn my mantle! Slow as a snail! My power you cannot comprehend! You found your death in me! नहीं, गलती कर दिया मैंने। थर्ड वाले पे तो बिल्कुल उसको अप्रोच नहीं करना है। शे, हो जाएगा ये बॉस फाइट। थोड़ा ही बाकी था। उसको स्टन कर करके उसका खून चूसना पड़ता है, फिर जाके रिपीट। Fergal Banshee. You shall learn to respect the laws of Ascalon!
comprehend. When you vanish, I'll slaughter these skulls while singing your name. Virgil Banshee, the hand that crushes all. And thine shall be a fair skull to adorn my... Dare challenge the dictates of a foolish Ekon! I shall tear thee apart and spill thy blood to the pissing wells! I shall crush you. Return to your apothecary and needles. You found your death in me. Down, stay down. Your blood is now mine. बस थोड़ा और Right. Down, stay down. Your blood is now mine. Let's go. Defeat the beast, Fergal. Explore the sewers. और क्या बचा है explore करने लायक? Focus on his attack and बचो वाह क्या बात है? At least one skull escaped Fergal's wrath. Skull बचा हुआ है. कौन है वो skull? The poor creature is bleeding to death. He cannot be far. Shell तो मिला.
How could he have made it this far? There's blood everywhere. क्या वो शॉर्टकट था? डायरेक्टली यहाँ पे मैंने प्रश्न पूछे तो Safe we are, still. Drink now. Bless you, Bridget. This isn't the blood of a vampire, but it will quench your thirst. This is our domain, not yours. You've been warned. Wait, I saved you from this creature. That must count for something. Thank you. Now go. Go back to the streets and houses. There is no love lost between us, vampire. But thank you. Sean Hampton sent me here. I believe he wanted me to find you. Who are you? If you must know, they call me Old Bridget. And this shelter is where we live. I'm Jonathan Reed. I'm a newborn Ekon. I'm afraid I'm not sure what's going on. I shall not bend a knee, young Ekon. But I sense your pain. Ask, and I will afford you my attention. Why was that creature after you? Fergal is the blunt instrument of the Ascalon Club. His masters would see us dead or turned into slaves, if they had their way. What the hell was that thing? He wasn't an Ekon or a Scowl. They are known as Volkod, an ancient offshoot of immortals. Blood drives them, enrages तो them. सबको drive करता है, इसमें नया क्या है? What of this Ascalon Club? Vampire society's elite in the Empire. They make the rules and enforce their judgment upon us whom they see as lessers. So is it you that Sean Hampton sent me to find? Perhaps. The sad saint was always kind to us. He must trust you if he revealed our location. Sean is a Scowl. All those I've encountered have been violent, crazed creatures. How can he be any different? Maybe because he is the sad saint. Or perhaps because I am Old Bridget of the Sewer Skulls. Sean killed a patient of mine. And that's just one of the murders he's being hunted for. If you refer to Harriet, she is now among us and under our protection. Harriet Jones is alive. That's it. That's the proof Sean wanted me to find. I must talk to her. No. Harriet is not alive. But you can speak to her. I must warn you. She is fragile and may not receive you warmly. I don't understand. She is filled with bile and hate. Her mind is sharp as a tack, but her body is so weak. I've never seen its like before. She is resting in a room on the far right of this hideout. Thank you. I will bear that in mind. Okay. Let's see. Harriet की क्या हालत है भाई? Do you recognize me? Yes, you were from the Pembroke Hospital. The young doctor. So full of secrets. I have so many questions I need to ask you, Harriet. If you would. I love questions. As for the answers, you may not like them. Your room. The blood. What brought you to fake your death in such a gruesome fashion? To see if I would be mourned.
Why flee with Sean Hampton? Oh, it's always a pleasure to see a saint fall to sin. But the coward still won't kill. Do you take pleasure in causing so much pain and sorrow? Nobody gave a damn about me. Not a tear shed. Poor Harriet. Always the discarded. How do you feel? I can't see. I can't move. My body's burning. I feel as if I'm dying over and over again. Have you tried to eat or drink something? People here tried to feed me, but I'm just not hungry. I don't have the strength. Does the pain ever stop? It is not pain I feel. It's like I can't stop feeling every inch of my body. But at the same time, each muscle and bone is the wrong place. Why did you come here? And why not? This is where I live now. Leave me be. Will you respect old Bridget's wishes? Will you obey her? Bridget is kind. She only needs to keep me fed and I'll be good. So you desire to stay here? Yes, I'm with my own kind. Birds of a feather, so to speak. Poor Harriet, always alone. I have a question of the utmost importance to ask. Will you answer? Questions, questions, questions. The good doctor, always searching for answers. Do you remember what you did after leaving the hospital? Did you kill anyone? First, a question from me. You answer first. Very well then. What do you want to know? Are you like me? Are you also dead? We are not dead, Harriet. Death no longer pertains to us. We are different. I like what I am. I truly do. I relish the pain that courses through me. I know you fled the hospital with Sean Hampton. Did you or Sean kill anyone in your flight? Anyone? Try and remember. I will not lie. I wanted blood, and I wanted revenge, and Sean pulled me from it, brought me here instead. But the shadows heard my prayers. The shadows killed that bastard. Who was that man? The one murdered in the street? He used to be my landlord. I lived here for many years before falling ill. Oh, he was an awful man. Disgusting and cruel. So cruel. You sought vengeance by your own hand, and someone else obliged you. Very convenient. Don't lie to me. I don't lie. I saw him near the docks, and rightly I wished him dead. And I am happy he is. It's true. But I didn't kill him. I was too tired. सर जी एक्सेल और गूगल शीट्स एक जैसा है क्या? हाँ, एक जैसा है. गूगल शीट्स में तुम मल्टीपल लोगों के साथ बहुत इजीली काम कर पाओगे, whereas एक्सेल में तुम्हारा वो फाइल ट्रांसफ़र होता है, वो तो नेटवर्क इसमें रखना पड़ेगा, सेम नेटवर्क में रखना पड़ेगा कि सब लोग एक्सेस कर पाए. Shadows? Tell me what you saw. The shadows, they heard me and answered. Something in the deep darkness, quick, deadly. It asked me if I wanted revenge. I answered, yes. And these shadows, this presence, do you still hear it? Was it a vampire? Did Sean see it? It spoke only to me, and now it is silent, but it is born of hatred. And it will kill again,
and it hates you, Doctor. Oh, it hates you. What makes you say that? It whispered your name, Dr. Reed. It wanted to know who you were and where you went. Questions about me? What did you say? Nothing, Doctor. I said nothing. There was nothing it didn't already know. Oh, I'm tired now. Let me rest. Give a dog, go back to Sean Hampton's shelter and confront him. No more questions, Dr. Reed. तो ये final वाला है ना? Have you found the answers you were looking for, young Ekon? There is too much left unanswered. So many questions. Get to know us, spend time with us, and I may be willing to answer more questions. Your diction, your words. You do not carry yourself like most Skulls I've encountered. True. I'm not like most Skulls. You were once someone else. What happened to you? It is as sad as it is long, young Ekon, but it will remain mine. Can I be of service to you? We ask but one thing. Reveal to no one our secrets. Do not betray us. Why do you live here, amongst the filth and vermin? Live. Here we hide. What are you hiding from? From the guilt, the shame, from the hunters and the light. And of course, our past. Why don't you leave the city? Hide somewhere far from the Guard of Priwen, the Ascalon Club. We are the Sewer Skulls. This is our domain. We have run as far as we can, and now we hide. For how long have you been in hiding here? Skulls have been hiding under London since vampires first entered the city. Where did you hide before the sewers? We claimed ancient tunnels, forgotten caverns, catacombs. We are Skulls, groveling beneath the feet of our makers. What manner of creature is Harriet? She is different from everyone else. I really don't know. I'm not even certain she is a Skull. I've no idea as to what blood made her. What is a Skull, in fact, in your honest opinion? The progeny of a vampire, disavowed by her maker. Perhaps a fruitless branch of a noble tree. A word used to enslave us. I cannot say. You mentioned that vampire blood has tremendous potency. You believe it to be stronger than your own? The vampire's sweet blood. That rich, dark wine that we crave. For it made us, and it can sustain us. I thank you for your time, madam. I must go back to Sean Hampton now. Your kindness has been ample payment, Ekon. To protect us, I'll close the access to our hideout, but you can use our shortcut to reach Mr. Hampton's shelter. Just follow the arrows. Okay, धन्यवाद. Thank you, old Bridget. I hope we'll meet again. किधर है भाई वो? ये तो पिलर नहीं है. एक मिलेगा पिलर. ठीक है, एक्सप्लोर कर लेंगे. इसने बोला एरोज देखने के लिए. कहाँ पे एरो? फॉलो द एरोज बोला उसने.
चलो यहाँ से चल के देख लेते हैं अभी। अच्छा यही है शायद। एक एक चीज एकदम स्लोली स्लोली चलती है ना, इसकी वजह से गेम भी बहुत लंबा चला जाता है। उससे एरो एरो डाल देते हैं तो फिर इजी हो जाता मेरे लिए भी। क्लास It's locked. Sahil. Welcome back, Dr. Reed. Would you like to take communion with me now? Sean, are you eating raw flesh? It is the sacred flesh of the mortal lamb. Our Lord's bountiful transmutation for the sustenance of his believers. Thank you, Lord. I am your most humble servant. So, true to your word, you waited for my return. I told you, Dr. Reed, I was a man to be trusted. Did you have words with the poor Harriet? You make no distinction between the living and the skulls, do you? We are God's children, Dr. Reed, one and all, and he's determined to save us. Does this place belong to you? How can you be so certain you can keep it open? This warehouse was once property of the Dawson family, but has been bequeathed me through donation. The Dawsons? The wealthiest family in London? Have they a clue as to what goes on here? Not at all. The donation was made before the war. The building was run down. I never met Aloysius Dawson myself. So you have the run of the place and no one's taken notice? As long as we keep to ourselves, we interest no one. This is a haven, and I pray it remains so for eons to come. What will be the result if you continue to assist both skulls and the living? For the last decade, that's what's been happening. And they found a better life. What's to change? You're forgetting the epidemic. Things can go south very quickly. I've seen it. Oh, these are terrible times. Only those pure of heart shall prevail. You've turned Skal now. Don't you see the danger to anyone giving you their trust? We are all sinners, awaiting salvation. This is a simple truth, ordained by the Lord Almighty. I am a seeker of his glorious light. Harriet, Miss Jones, has been behaving in a most violent manner. She's going to need special attention. That's precisely the reason I brought her here. To meet old Bridget. She's the guide Harriet requires. Who is this old Bridget? I don't know, Doctor. She rarely speaks of her past, but I know she has a long one. She's likely the oldest soul in the city. Harriet is possessed by her hatred. You cannot let her roam free. She's dangerous. She has joined her own kind, Doctor. Old Bridget is a saint to the younger Skals.
guiding them to salvation and peaceful existence. I believe I've learned all I need to know. I'm certain you've killed no one, but one day I believe you'll cross the line. Logic is a false prophet. Faith is the only path to salvation. What do you mean? We have been blessed with God's eternity. We are the instruments of His divine will. We shall feed the hungry forever and ever. Amen. I haven't the luxury of being able to satisfy my hunger on staunched blood and lifeless flesh. Give yourself over to God, Doctor. Expel your urges and kneel before the Lord in praise. These urges... You know the hunger will never be satisfied. I've come to embrace the everlasting craving. I have sworn to feed only upon the flesh of the dead. It is now my sacrament. Take, eat. This is my body. So saith the Lord. Turn. You sacrifice 500 XP in the process. You will heal through my blood. एक मिनट, टर्न का क्या सीन है? I guess you turn into Skull. ने टर्न करने से ये कुछ मास्टर स्लेव रिलेशन कुछ बन जाता है. देखते ये वाला टर्न करके ट्राई करता हूँ. My discoveries. Vampire blood would enhance your metabolism, perhaps even heal you. If what old Bridget says is true, I'll give you some of mine. I'd rather not. It would be extremely awkward. You have no choice, Sean. It's the only way to protect your cheptel, those still amongst the living. No, Dr. Reed. God made me this way. Who am I to disobey His will? You believe that God's plan was for you to be abandoned at birth? The Lord works in mysterious ways. I can't imagine God intended for you to be molested by a priest in an orphanage. Drink, friend. No. I said kneel and drink. Now. बस
Mesmerized level. New citizens available to kill. The district will soon suffer the consequences of your action. Okay. Bad consequences, good consequences. Let's see, देखते हैं. जैसे पिछले वाले में मैंने गलती करके एक डोरथी क्रेन करके थी, इनोसेंट सी थी, उसको मार दिया था गलती से. अच्छा, ये डेड बॉडी काट काट के खा रहा था. नहीं रहा था, जो डेड बॉडीज थी उनका फ्लैश खा रहा था ये. इसकी वजह से ये सब चल रहा था. ठीक है. Another corpse thrown in the streets. Someone's playing a very sick game. Rebirs. बस भाई अभी मुझे खत्म करना है. What's in his hands? I know this brooch. This is my mother's. A birthday gift from father. "29 Pretty Orchard Street." Cheap leather wallet found on a corpse left in front of Sean Hampton's night shelter. The wallet contains official paper of repatriation and demobilization with the address of the victim, 29 Pretty Orchard Street. That's near Poplar's district. Why would this man carry off my mother's brooch? I must go there. हाइड सामने ही है. ठीक है. It's locked, all right. हाइडआउट पे कैसे जाऊँ? बाहर से जाना है, कैसे जाना है? ये तो लॉक्ड है. नहीं, खुल गया. स्टोरेज में लॉक. Study blood sample. Regeneration serum. Regenerate. ठीक है. Aluminium shard. Large box of pills. Spring screw grease. इसको रखता हूँ फिलहाल के लिए. Bottle of alcohol. Cigarette case. Okay, good night, good night, good night. यहाँ से देख रहा हूँ कि कुछ क्राफ्ट करने लायक है क्या. फिलहाल कुछ ज़रूरत नहीं है शायद. न्यूरालजिया, माइग्रेन सब ठीक कर सकते हैं फिलहाल के लिए, न्यूरालजिया को छोड़ के.
इसको सुला देते हैं। एक बार इसका एक्सपी क्या बढ़ा सकते हैं देख लेते हैं। अल्टीमेट %% बाइटिंग डैमेज और फिजिकल प्रोग्रेस 1000 ब्लड कैपेसिटी पॉइंट। The following night. Portrait of a sad saint. If you have ever lived near the docks of East End, you must know who Sean Patrick Hampton is, and if not, you might have heard of him. His name is starting to spread through the entire capital, and the song it sings is one of hope. Sean is the humble founder of the Hampton Asylum, an establishment that he built with his own hands and convictions. The building and abandoned and poor and hungry are always welcome. Sean Hampton came from a background of misery, but the hardship. His love is renowned, though he gained his nickname the Sad Saint of the East End. Sean Hampton is so respected that people still stay in his shelter even after the Sad Saint contracted a mysterious disease which forces him to rest a lot and take his meals away from his flock, while in some other parts of London people step back. As soon as someone coughs in public, men and women accept to eat and sleep in the Hampton Asylum. It's the safest place in the East End docks. The building looks dirty, the stench around the place is awful for a delicate soul, but there is hope and love there. And the death toll has been low and stable for days. So, ये टर्न हमारे काम में आया somehow, but टर्न से और क्या क्या कर सकते हैं वो जानना पड़ेगा. ये हमारे अभी इसमें है, हमारे अंडर आ जाता है ये. इसको मारता तो 6000 XP मिल जाते, 6000 XP और 4500 ऑलरेडी थे मेरे पास, और 10,000 प्लस XP हो जाते, तो उससे फिर स्किल लेवल बहुत बढ़ जाता है. ठीक है, लेट्स फिनिश फॉर टुडे. By the way, if anyone is watching, thank you so much for joining in. We'll see you tomorrow. Take care. Good night. See you today, rather. Take care. Good night and bye-bye. आज तक ना देखे जान तेरे कहा Game Professor SOUMIK superstar. It's legendary mobile GTA fast को जाने वो है गेमिंग के दुनिया का जादूगर.
सौमिक अपने स्टाइल से दबा के गेम पर पट्टी इंडियन इंस्ट्रूमेंटल साइडा मिक्स तेरे सब्सक्राइबर्स के लिए 4 चांद लगाए सौमिक आज दूर है दिल में Professor Soumik है super gamer Apex Legends COD मोबाइल GTA 5 को जाने वो है गेमिंग के दुनिया का प्रोफेसर